ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಚಪ್ಪಲೆ ಬರಲಿ. ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಯಕ್ಕೂರು ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ 2022 ಈ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಶ್ರೀಯುತ ಕಿಶೋರ್ ಕುಮಾರ್ ಪುತ್ತೂರು, one more popular figure as far as our traditional Tulu language is concerned. ಉತ್ತಮ ವಾಗ್ಮಿಗಳು ಕೂಡ ಅವರೊಂದಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಣ್ಯರಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿದ ರವಿ ಉಪ್ಪಳ, ಹರೀಶ್ ಪಡೀಲ್, ಹಾಗೆ ಉನ್ನಿಕೃಷ್ಣನ್, ಪೃಥ್ವಿರಾಜ್ ಇವರೆಲ್ಲರ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದ್ದೇವೆ. ಚಪ್ಪಲೆ ಬರಲಿ. Thank you very much each and everyone for your cooperation. ಉದ್ಘಾಟನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನಂತರ ನಮ್ಮನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಕಿಶೋರ್ ಕುಮಾರ್ ಇವರು ಒಂದೆರಡು ಮಾತುಗಳನ್ನು ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಯಕ್ಕೂರ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಈ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭ ಮಾಡುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ವೇದಿಕೆನ ಪೂರ ಗಣ್ಯರೇ, ಈ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿ ಮಾಡಿ ಪಕ್ಕದ ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ ಬೈದಿನ ಪಂಡಿರ ಪ್ರತಿಯೊನ್ನೆ ಕ್ರೀಡೆದ ಮುಖಾಂತರ ಸುದೃಢ ಸಮಾಜ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡು. ಆ ಮುಖಾಂತರ ಇಡೀ ಭಾರತದ ಯುವಜನತೆ ದೇಶಾಭಿಮಾನ, ದೇಶಭಕ್ತಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಮುಲ್ಪತ್ತ ದೀನ ದಲಿತರ ಸೇವನ ಶಕ್ತಿ ದಿಕ್ಕಡು ನಾ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸಮಾನ ಮನಸ್ಕರಾದ ಕ್ರೀಡೆದ ಮುಖಾಂತರ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾದ ಬದುಕ ಪಾತ್ರ ಪಣಂದು ಬತ್ತನ ಪೂರ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಶುಭವಾಡು. ಪ್ರತಿ ಟೀಮ್ ದಾಖಲೆ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಪಣಂದಿನ ಪಾತ್ರ ಮುಗಿತೊಂದಲೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ. ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಚೊಕ್ಕದಾಗಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಹುರಿದುಂಬಿಸಿದಂತ ಕಿಶೋರ್ ಕುಮಾರ್ ಇವರಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸಂಘಟಕರ ಪರವಾಗಿ, ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳ ಪರವಾಗಿ ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು, ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸುತ್ತಾ ಇದೀಗ ತುಳು ವಾಗ್ಮಿಯಾದಂತಹ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಹಿರಿಯರು ಕೆ ಪೇಜಾವರ್ ಇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ, ತುಳು ಅಂದ ಕೂಡಲೇ ಪೇಜಾವರ್ ಅಂದ್ರೆ ತುಳು, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ತುಳುವಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೊಂದು ಸ್ಪಷ್ಟತೆಯಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಪೇಜಾವರ್ ಇವರಿಗೆ ಮತ್ತರಿಗ್ಲ ಸುಲ್ಮೇಲು ಈ ಲೇಸದ ಕಲಾಟಿತ್ತಿನ ಚಿತ್ರನ ಬಾರಿ ಮೋಕೆದ ಲಟ್ಟೆಗಟ್ಟಿದ ಜವನಿ ಕಿಶೋರ್ರೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಕಾಲೋಡು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಸಂಘಟನೆ ಮಲ್ತದ್ದು ಊರೊರ್ಮೆ ತಿರ್ಗದು ಒಂಜಿ ಸಂಘಟನಾತ್ಮಕ ಬುಳಿನ ಚಿತ್ರ ಎಂಗಳ ಆತ್ಮೀಯ ಮಿತ್ರೆ, ವಿಶೇಷವಾದ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಯುವಕ ಮಂಡಲದ ಗೌರವ ಸಲಹೆಗಾರೆ, ವಿಶೇಷವಾದ ಪನ್ಪುಂದಂಡ ಅಂಚಿತನ ಪ್ರತ್ಯರೆ ಅಂಚನೆ ತೀರ್ಮಾನ ಕುರ್ಪೆ ಚಿತ್ತಿನ ತೀರ್ಪುಗಾರರೇ, ನಾನೊಂಜಿ ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸಿಗೆ ಮೂಲ ಕಾರಣಕರ್ತರ ಏನಂಚಿತ್ತಿನ ಉನ್ನಿಕೃಷ್ಣನ್ ಸರ್ ಇರಿಗೆ ಸೊಲ್ಮೀನ್ ಸಂದಾಯ್ತ ಮತ್ತೊಂದು ಬಂದಲ ತುಳುವಪ್ಪೆನ ಮಟ್ಟೆಲ್ದ ಬೆಚ್ಚ ಬೆಗರದ ಪಚ್ಚ ಸಿಕ್ಕೆತಾವು ಒರುಟು ನಮ್ಮ ಬದುಕೊಂದಿಲ್ಲ. ಇನಿ ತುಳು ಭಾಷೆ, ತುಳು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಬದುಕದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇನಿ ತುಳುನಾಡದ ಗೊಬ್ಬುಲು ಏತು ಒಂಜಿ ಕಡಿಟ್ಟು ಮದ್ಯಾ ಒಂದು ಪೋಡಂದಾಂಡ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಮರ್ಗಿಲ್ಡ್ ಇನಿ ಕಬಡ್ಡಿ ಆವಡು, ಅತ್ತಂದಂಡ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆವಡು, ಅತ್ತಂದಂಡ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಆವಡು, ಅತ್ತಂದಂಡ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಆವಡು ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಗೊಬ್ಬುಲು ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಪುಗರ್ತೆಯನ್ನು ಪಡೆಯೊಂದು ಇನಿ ಲೋಕೋರ್ಮೆ ಪುಗರ್ತೆ ಪಡೆಯುತ್ತನು. ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಗೊಬ್ಬುತ್ತ ನಡುಟು ಇನಿ ವಿಶೇಷದಾದ ಒಂದು ಕೇಂಡ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಬಲಕ್ಕೆ ಬತ್ತಿನ ಜೋಕುಲು ಕಾಲೇಜಿದ ಒಂಜಿ ಆ ಪ್ರಾಯನ ಮುಗಿತೇನೆ ಆಯ್ಸಾತಿಗೆನೆ ಮಾತೆರಗಿಲ್ಲ. ಈ ಕ್ರಿಕೆಟ್ದ ಪೊಲ ಬಿಜ್ಜಂದಿನ ಜೋಕುಲು ಇದ್ದೇನೆ ಎಲ್ಲ ಬಾಲ್ಯದ ಕೈಟ್ಲ ಒಂಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ದ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲ ಬ್ಯಾಟ್ ಕೊರ್ರುಂದಂಡ ಅತನ ಕೊತ್ತಲಿಂಗದ ಬ್ಯಾಟ್ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ರುಂದಂಡ ಬೀಜಾರ ಕಲ್ತಿದ್ರು ಅವೇನು ಗೊಬ್ಬರ ಹಂಚಿದ್ರ ತಾಕತ್ತುಪ್ಪನಕುಲು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಪುಡ್ಕನೆ ಜೋಕುಲು ಅಂಚಿತ್ರ ಪೊರ್ತುಡು ಇನಿ ಯಾನ್ ಎಕಡೆ ಪಣಿನ ಕಡೆ ಲಟ್ಟೆ ಗಟ್ಟಿದ ಸಂಕದರ್ಪದ ಬೆಚ್ಚನೆತ್ತಿರ್ದ ಜಕ್ಕಡಿ ಜವನೇರಿ ಇನಿ ಬ್ಯಾಟ್ ಬಂದೊಂದು ಉಂತುದೇರಿ ಇನ್ನು ಸಾಧಾರಣ 10-18 ಟೀಮ್ ಮುಂದೊಂದು ತೋಜೋಡು ಆ ಟೀಮದ ನಡುಟು ಏರು ಬಿರ್ಸೇರೆಂದು ತೂಪಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಆ ದೇಕಿನ ನಮ್ಮ ತುಯರಲ್ಲ ಆ ದೇಕಿಡ್ ಆಕಲಿಗೆ ಪೊರ್ಲ ಕಂಟದ ಆಕಲೆ ಬದುಕು ಸುಂದರ ಪೊರ್ಲ ಆವಡ ಪನೊಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಈ ಒಂಜಿ ಈ ಕೂಟಾಡು ಹಿಂದೂ ಆವಡು, ಮುಸ್ಲಿಂ ಆವಡು, ಕ್ರೈಸ್ತತೆ ಆವಡು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾತಿದ ಪ್ರಮಾದನ ಇಜ್ಜಿ ದಾದೊಂದು ಬಂಡ ಮುಲ್ಪ ಜಾತಿದ ವಿಷಯನೇ ಇಜ್ಜಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೌಹಾರ್ದತೆ ಬದುಕೋಡು ಅವು ಒವ್ವೇ ಜಾತಿ ಆವಡು, ಒವ್ವೇ ಜಿಲ್ಲೆ ಆವಡು, ಒವ್ವೇ ತಾಲೂಕು ಆವಡು ಸೌಹಾರ್ದತೆ ಬದುಕಡು ಇಡೀ ಕೂಟ ಪೊರ್ಲಕಂಟದ ಆವಡು. ಇನ್ನು ಯಕ್ಕೂರು ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ YPL ಪನ್ಪಿಸಿದ ಪೊರ್ಲಕಂಟದ ಲೇಸಿಗೆ ಮೂಲ ಕಾರಣಕರ್ತರ ಅಂಚಿತನ ಪ್ರತಿ ಸರ್ ಬಕ್ಕ ಉನ್ನಿಕೃಷ್ಣನ್ ಮುಕ್ಲೆಗೆ ಎನ್ನ ಉಡಲ್ದಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮಿನ ಸಂದೇಶ ಮಲ್ತದ್ದು ಮಾತೆರಿಗಿಲ್ಲ ಶುಭ ಹಾರೈಕೆ ಮಲ್ತದಿಲ್ಲ. ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಪೊರ್ಲಕಂಠದ ಪಂದ್ಯಾಟಗೂ ಪೊರ್ಲಕಂಠದ ಪಾತ್ರ ಕೊನ್ನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಪೇಜಾವರ್ ಸರ್ ಕುಡರ ಪೂರೆರ್ಲ ಚಪ್ಪಲೆ ಬರಡು ದಯಪಂಡ ಅರ್ನ ಒಂಜಿ ಆರೈಕೆ ಹತ್ರ ಪಂದ್ಯಾಟ ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ನಡಪಡು ಬಂದ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಂದಿರು ಇತ್ತ ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಅತಿಥಿ ಗಣ್ಯರಿಗೆ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಲ್ನ ಒಂದ ಇತ್ತ ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ನಾನು
ಬಂಗೇರ ಇವರಲ್ಲಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇನೆ, ಕಿಶೋರ್ ಕುಮಾರ್ ಇವರಿಗೆ ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಅವರನ್ನು ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೆ ನಾವು ಆಹ್ವಾನಿಸ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಹಾಗೆ ಮತ್ತೋರ್ವ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿ ಕೆ ಪೇಜಾವರ್ ಇವರಿಗೆ ಉನ್ನಿಕೃಷ್ಣನ್ ಇವರ ನೆನಪು ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಅವರನ್ನು ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಗೌರವಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಈಗ ಪಂದ್ಯದ ಮುಂದಿನ ಹಂತವಾಗಿ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ. ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಒಡೆಯುವ ಮೂಲಕ ಯಾವುದೇ ಪಂದ್ಯಾಟ ನಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಗುರು ಹಿರಿಯರ ಹಾಗೂ ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಬೇಕು. ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಅಂದರೆ ಗಣಪತಿ. ಹಾಗೆ ನಾವು ಆ ವಿಘ್ನ ವಿನಾಶಕ ವಿನಾಯಕರನ್ನು ನೆನೆಸುತ್ತಾ ಈ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಅತಿಥಿ ಗಣ್ಯರು ಪಿಚ್ ಕಡೆ ತೆರಳಬೇಕು, ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಅಂಚನೆ ಪೂರ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ನಕುಲ ಅಲ್ಪ ಲೈನ್ ಉಂಟೋಡು ಅಲ್ಪ ಪಿಚ್ದ ರಡ್ ಮೇಟ್ಲ. I request all the players please join for this inaugural ceremony. ಈಗಾಗಲೇ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿ ಗಣ್ಯರಾದಂತಹ ಕಿಶೋರ್ ಕುಮಾರ್, ಕೆ ಪೇಜಾವರ್, ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟದ ಆಧಾರ ಸ್ತಂಭ ಎನಿಸಿದಂತ ಉನ್ನಿಕೃಷ್ಣನ್, ಪೃಥ್ವಿರಾಜ್ ಬಂಗೇರ, ಹಾಗೆ ಈ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಮುಖ್ಯ ತೀರ್ಪುಗಾರರಾದಂತಹ ರವಿ ಉಪ್ಪಳ, ಹರೀಶ್ ಪಟೇಲ್, ದೀಕ್ಷಿತ್ ಇವರು ಈ ಒಂದು ಉದ್ಘಾಟನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಚಪ್ಪಲೆ ಬರಲಿ. ಈಗಾಗಲೇ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಒಡೆಯುವ ಮೂಲಕ ಕೆ ಪೇಜಾವರ್ ಹಾಗೆ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿ ಗಣ್ಯರ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇದೀಗ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ದೊರಕಿದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಎರಡು ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು, ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯಾಟ ಆಡುವಂತಹ ಎರಡು ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ಸಾಲಾಗಿ ನಿಲ್ಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಆಟಗಾರರ ಪರಿಚಯ ನಡೆಯಲಿಕ್ಕಿದೆ, ನಾಣ್ಯ ಚಿಮ್ಮಿಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೂಡ ನಡೆಯಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಹಾಗೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಬೇಕು, ಪ್ಲೀಸ್ ಫಾಲೋ ದ ರೂಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಆಫ್ Yekkur Premier League 2022. The matches will be of 6 overs. Matches will be of 6 overs. Toss. Six overs match, and there will be a hello. 6 overs match. Hello.
Tekala, Ala, Ala, Chekala, 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 Ala, Chekala, Ala, Chekala, Ala, Chekala, Ala, Ala, Chek, Ala, Ala, Chekala, Ala, Chekala, Ala, 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 Chekala, Ala, Chek. Ala, Chekala, Ala, Chekala, Ala, Ala, Chekala, Ala, Chekala, Ala, Ala, Chekala, Ala. Hello. Hello, mixing. Hello. So news from the center here is that captain of Prajwal Panthers won the toss and elected to ball pass. So thank you very much. Thank each and everyone. Thanks to Kishore Kumar Puttur, director of MESCOM, DK. Thanks to KK Pejawar and for your important time spending here in this most prestigious Yekkur Premier League 2022. Once again, on behalf of organizers, on behalf of all cricket lovers, we would like to give special thanks for your cooperation. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟದ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಗಮಿಸಿದಂತಹ ಕಿಶೋರ್ ಕುಮಾರ್ ಪುತ್ತೂರು ಹಾಗೂ ಕೆಕೆ ಪೇಜ್ ಅವರಿವರಿಗೆ ಸಂಘಟಕರ ಪರವಾಗಿ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳ ಪರವಾಗಿ ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸುತ್ತಾ ಇದೀಗ ನಾವು ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ದ ಫಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ದ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಪ್ಯಾಂಥರ್ಸ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಆನ್ ಲಯನ್ಸ್ ಕಿಂಗ್ಸ್. ಪ್ಲೀಸ್ ನೋಟ್ ಬೋತ್ ದ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ there will be a 6 overs match. That means the 4 minutes for each over. That means you have to complete your 6 hours allotted time, which are 24 minutes plus 6 minutes. Definitely it's going to be a grace time. That means within 30 minutes you have to complete your 6 hours quota, and if you have fails to complete 5 hours within 29 minutes, then the Duckworth Lewis will go into follow. That means for the last over, 6th over, you should keep one extra fielder inside the ring, not more than 4 not more than 4 outside the circle. That is the punishment. Please note, please take care of this time sense, which is very important. Punctuality, as far as cricket is concerned, the discipline is more important for the success of any cricket tournament. So please follow the rules and regulation. I request Prajwal and Lions, please report here immediately to sign the official chart. ದಯಮಾಡಿ ಸಮಯದ ಅಭಾವವಿದೆ, ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಇಲ್ಲಿವೆ ನಮ್ಮ ಕಮೆಂಟ್ರಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಕಡೆ ಬಂದು ತಮ್ಮ ಆಟಗಾರರ ಹೆಸರನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೋಂದಾಯಿಸಬೇಕು. ದಯಮಾಡಿ ತಮ್ಮ ಹೆಸರಿನ ಮುಂದೆ ತಮ್ಮ ಜರ್ಸಿ ನಂಬರ್ ಅನ್ನು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿ, ಜರ್ಸಿ ನಂಬರ್ ಅನ್ನು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ದಯಮಾಡಿ. ಎಸ್, ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ಡಗ್ಔಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಬೇಕು, ಅದು ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ಡಗ್ಔಟ್, ಅಲ್ಲಿ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅವಕಾಶ. ದಯವಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕು. ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ಡಗ್ಔಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಲಯನ್ಸ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ತಮ್ಮ ಆಟಗಾರರ ಲಯನ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯಾಟ ಆಡುವಂತಹ ಲಯನ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಮತ್ತು ಆಟಗಾರರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ತಮ್ಮ ಆಟಗಾರರ ಹೆಸರು, ಜರ್ಸಿ ನಂಬರ್ ಮತ್ತು ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ನಮೂದಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ.
ಪೇಪರ್ ಕೊರ್ಲಿ ಹಾಕಲ್ಲ ಪ್ಲೇಯರ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಕೊಡ್ತು ಬಿಡ್ಲಿ ಪೇಪರ್ ಸೈನಿಂಗ್ ಬಂದಾಗ ಟೈಮ್ ಹೋಗ್ನ ತುಂಬಾ ಸೈನ್ ಮಾಡಿ ಪ್ಲೇಯರ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಕೊರ್ಲಿ ದಯಮಾಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ಡಾಗ್ಔಟ್ ಡೇರ್ಲ ಕುಲ್ಲರ ಬಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ನಕಲೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಪ ಅವಕಾಶ ದಯಮಾಡಿ ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ಡಾಗ್ಔಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಲು ಅವಕಾಶ. ಎರಡು ಪ್ರಸ್ತುತ ಆಟ ಆಡುವ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಲು ಅವಕಾಶ. ಈಗ ಲಯನ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಪ್ಯಾಂಥರ್ಸ್ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ಮಾತ್ರ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ಡಾಗ್ಔಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ.
അത് ആളുണ്ട് അവിടെ. Welcome back. Good morning, cricket lovers, and back to this match and match between Pajwal Panthers versus Lion Kings. And after winning the toss, captain of Pajwal Panthers selected to field first, so that the opening batter of Lion Kings are walking towards the middle. Madhu, along with him, Nawaz, two opening batters are walking towards the middle. So everything is ready here, and ದಯಮಾಡಿ ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಈಗಾಗಲೇ ನಾನು ಪಂದ್ಯಾಟದ ನಿಯಮವನ್ನು ತಿಳಿಸಿದ್ದೇನೆ. 30 ನಿಮಿಷದ ಒಳಗೆ ತಮ್ಮ 6 ಓವರನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸಬೇಕು. ಒಂದು ವೇಳೆ 6ನೇ ಓವರ್ 29ನೇ ನಿಮಿಷದ ಮುಂಚೆ ಆರಂಭಗೊಳ್ಳದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಟಗಾರ ಒಂದು ಫೀಲ್ಡರ್ ಅನ್ನು 20 ಯಾರ್ಡ್ ಸರ್ಕಲ್ನ ಒಳಗೆ ನಿಲ್ಲಿಸಲಾಗುವುದು. ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಓನ್ಲಿ the 4 fielders allowed to stand outside the circle for the final over. So please note the time. Time is exactly 10:44. Four minutes for each over. That means 24 minutes for 6 overs. 6 minutes definitely is going to be a grace time. Grace time in the sense in the time of wicket falling and other interruption in the middle. So please cooperate organizers, please cooperate with the umpires. Here is the first ball of the tournament. Right arm over the wicket, first ball right behind the line of the ball, pushing the ball just into the power point region, pushing the single, and a good start here from Madhu. The first ball itself is off the mark with the single. Almost the batsman going back, just using the deftness of the crease and pushing the ball down to a short cow point region for a single. With the single, the first person of Yekkur Premier League 2022. Umpire, please little bit stop the match. The truck is passing there, please. So Ranju is bowling from the highway end to Nawaz, left-hand batsman. The first power of the power play. There is a fielder in the deep long on, and one at deep square leg. Again the batsman pushing the single here, and both the batsmen off the mark. Nawaz is also implementing the same technique, same strategy, just pushing the ball. The soft end comes into play to pick the single. So with that single, scoreboard now moves on to 2 on the board. Both the opening batters off the mark with the single. It's a 2 without loss of any wicket. Ranjit again seaming from the far end. There is a square leg, the deep backward square leg, short mid wicket, deep long on, short mid off, short extra cover, short cover point, short backward point. Again the batsman has just shouldering his arm. That's the reason why, because the ball is going further away outside the line of off stump. Extra bounce here for Ranjit, but couldn't manage to control the line what he was looking for. Tried to defeat the bat by bowling outside the line of off stump, but ball went too far outside the line of off stump. First extra of the innings is coming up here with the wide. 3 without loss of any wicket here in over number first in progress. Ranjit again from the highway end, right arm over the wicket, looking for the blind stroke in the negation, not quite able to meet the bat
misses it completely. Almost ball is on the, around the legs of Madhu. Madhu tried to hit the ball towards a mid-wicket region. The intention is very clear that there is a fielder in the deep long on. There is a vacant mid-wicket, so he wanted to target that place, but couldn't manage to make any contact with the bat. And a much required dotted delivery from Ranjit. So again, he bowling from the far end, right arm over the wicket, coming down track, using his feet, not quite getting that right from the middle of the bat. Of course, he lost. He got a little bit back into negation, so that he managed to complete the single. So Madhu wanted to take the advantage of that power play, where you can keep only two fielders outside the circle. But this time also he couldn't manage to reach the pitch of the delivery, as he picked up a single. Then with that single, scored numbers on to 4 on the board without loss of any wicket here in over number first in progress. Left-hand batsman Nawaz is on strike. The left and right combination, every time when strikes are rotating, they need to change the fielding set. This time full toss delivery, looking for the reverse stroke. Appeal for LBW. Umpire says no, leg by call by umpire. And half-hearted shout, not that much of confident enough shout even from behind the stumps. That shows the ball might be missing the stumps. We are not having a straight angle, so very difficult for us to explain the what kind of delivery. We are in a square angle, so that's why I couldn't manage to see where the ball is going to land, where the ball is going to hit. That's a problem here in commentary box. It's a square angle commentary box here in Yekkur. So last time in this over, right arm over the wicket, full toss, going for the big drive, but this time chance of run out. Both the batsmen is in the same hand, and but the first wicket is back into pavilion. It's a 5 for the loss of 1 wicket. Total misunderstanding between the wicket. Looking for the single, no response coming from his partner Madhu. Nawaz is not interested with his partner. The first wicket is back into pavilion. It's a 5 for the loss of 1 wicket. ದಯಮಾಡಿ ಮೈದಾನ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ನಮ್ಮ ಸಂಘಟಕರನ್ನು ಕಾಣಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ವಿ. ಐ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಆಫ್ ಮೈದಾನ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಪ್ಲೀಸ್ ಮೀಟ್ ಅವರ್ ಆರ್ಗನೈಸರ್. ಫಿರೋಜ್ ಇಲ್ಲದ್ರೆ ರಮೇಶ್ ಯಾರಾದರೂ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಂಘಟಕರನ್ನು ಕಾಣಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದೆ ಮೈದಾನ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು. So first wicket is back into pavilion. Total misunderstanding between the wicket, as Nawaz is not happy with his partner. He is charging for the run. Madhu is not moving at all from his place. That's all happening when you are not having a good communication, as not the loud calling is so important in cricket, but judgment of the run is also very important. So first over completed. It's a shackling start after completion of first over. Lion Kings managed to score 5 on the board for the loss of 1 wicket. So new batsman in Rakshit. Abhishek is the bowler, is bowling second and last over of the power play. Rakshit bowling with a shot on a pass umpire Ravi Uppala. Right arm round the wicket. What a delivery! What a delivery! Look at the carry. Look at the bounce. Absolutely perfect start here from Abhishek. Abhishek is a very well built personality. He's got a very good height. Just using the height very well to get some extra bounce, because the ball which is used for this tournament is a wicky hard. Definitely the bowler can get some advantage from that ball. Again, this time lofted that one just over the infield, trying hands of that mid fielder, but ball running down to deep long of region, and just 3-4 yards before the boundary line, the fielder managed to field the ball. But here is a batsman got ample time to complete that couple of runs. Useful cricketing stroke actually is coming to that the stroke when you're playing in the power play overs. I think going over that of that mid fielder. And Rakshit has got a start here from that couple of runs and scored Namoza onto 7 for the loss of 1 wicket. Again went for the switch hit, appeal for caught behind. Umpire unmoored. Umpire Ravi Uppala is not convinced with that appeal, as Abhishek is so confident. Wicketkeeper is also very confident, but umpire is not confident enough that to give that caught behind the wicket.
Might be ball is deflected or deflected, whether the ball is deflected from the finger or it was the arm. If it's over the arm, definitely it's going to be a not out. But we are not having, already I mentioned, we are not having the great view of this the pitch. We are having a square angle, so very difficult to say anything about that. Again, this is a wide call by umpire, rightly so, and it is the second of the over. And it is going over the shoulder and head level, so that umpire Ravi Uppala has got no hesitation to call that wide. So with that extra scoreboard now moves on to 8 on the board for the loss of 1 wicket. Abhishek round the wicket, balls beautifully bowled. Little bit ball is going down the legs and chance of run out. Oh, that is out. This is absolutely a disaster. Absolutely a disaster. Boundary signal by umpire. That means 5 leg byes. The ball is hitting the leg. Appeal for leg before wicket, but there is opportunity of run out. The fielder trying for the run out, try to hit the stumps. Little correction. 4 byes, not 5. It's a 4 byes. It's a 5. 5 byes, thank you. 13 on the board. Abhishek, lucky run here for the Lion Kings. Around the wicket balls, beautifully bowled. Yekkur line delivery, good piece of fielding there by the fielder at short mid-on region, charging to his right to stop that certain single there. Good comeback here by Abhishek. Unlucky runs which is considered in that previous delivery. The 5 leg byes, always a disappointment for any teams. Again Abhishek, round the wicket balls, lofted that one, but fielder in the deep long, and he will going to collect that one. Absolutely perfect. Nothing wrong with the stroke, but something wrong with the placement. When you are having 1 or 2 fielders outside the circle, you are choosing one of the fielder out of that, means it's been a definitely disappointment for any batter, as Rakshit tried to hit the ball over the deep long on region, not quite able to get the distance what he's looking for, but deep long on fielder making no mistake at all. The second wicket which is back into pavilion of Lion Kings lost their second wicket at the score of exactly 13 on the board. Jersey number 18 is walking towards the middle. Shishant. The 2 wickets are back into pavilion, but nothing much worried about that 2 wickets. Just seeing the score here, it's a very good score on the board after completion of over number 2. It's a 13. That means run rate is exactly 6.5 runs per over. And please don't waste the time. We are already starts too late. Please cooperate with the umpires, because you are the one getting the punishment. Already I mentioned about the rules and regulation of this cricket tournament. The time I already mentioned, you need to complete your 6 overs. Fielding team need to complete their 6 overs quota within 30 minutes. Ranjit to continue from the highway end. Bowling is second and last over of his quota. Right arm over the wicket past the umpire. Went for the reverse sweep. Appeal for leg before wicket. Half-hearted shout. We can see the body language of the wicketkeeper behind the stump is not appealing. That shows that ball is might be missing the stumps there. And good start there from Ranjit. Bowled well the first over. Picked up 1 wicket. Little correction is bowled good over that 5 runs in that over, economical over. As again Ranjit pass umpire, right arm over the wicket, full toss there, going for the big swing of the bat, but not really getting that much of timing behind the stroke. Low full toss around his legs, but he couldn't manage to take the advantage of that one. And the batsman Shishant is not happy with himself, as he did just a little correction. Batsman Rakshit is not Shishant is not happy with the Madhu is not happy with his that stroke what he is looking for. He's got just a single for that. With that single, scoreboard numbers on to 14 on the board. Now Shishant back on strike, facing Ranjit.
This time, oh, ball is in there, but safely landed. That was a half-hearted push, not a stroke, not a push. It was a half-hearted stroke there from the batsman Sushant. Actually, wanted to drive the ball. All in sudden, we can understand that ball has got a little bit extra bounce, but he just went with the stroke, so ball didn't carry to that the bowler on his follow-through, ball going away from him. And meanwhile, batsman got a single between that. With that single, scoreboard moves on to 15 for the loss of 2 wickets. Ranjit again. Seaming in balls. This is going for the cut shot. Lovely shot. Beautifully driven. Down to third man region. It's going to be a declared area. Single run. Unfortunately, because we are not having that much of distance as far as the third man, the behind the wicket is concerned. Just seeing the dimension of this cricket ground. It's not a huge ground behind the wicket, the shortest part, so that the rightly so the declared area, just a single considered. With that single, scoreboard numbers on to 16 on the board for the loss of 2 wickets. Has got a very good run up. Right arm over the wicket balls. Again, just forcing the batsman onto the back foot. Madhu tried to pull the ball, but not that much of shot enough to go for the pull shot. Of course, he's just going back, rocks back, but not really able to read the length of the delivery, and that's why he couldn't manage to make any score in that excellent delivery there from Ranjit. So far, he's looking pretty good in this over. In the first over, also, he's bowled well, and he's looking much better in the second over. Right arm over the wicket, delivers. Using his feet, again, not quite able to reach the pitch of the delivery. Shortening the length quite deliberately. Seeing the batsman, Madhu is just coming down the track, shortening the length. It's a good piece of bowling there from Ranjit after completion of over number 3, searching for the right track, still struggling in the middle. Lion Kings are able to score 17 for the loss of 2 wickets. So 3 overs completed. This scoreboard is exactly 17 on the board, just under 6 runs per over as far as the exact run rate is concerned. It's a 5.33 runs per over after completion of over number 3. It's 17 on the board. Kashyap brought into attack. It's a very bright sunny morning out here in the most beautiful venue. It's really after 2 days. Before 2 days, I think it's a overcast condition in Mangalore, but today it is a perfect weather condition for cricket. Meanwhile, batsman looking for the second. In comes the throw, and excellent running between the wickets, so that they managed to complete that a couple of runs quite easily in that. Good placement by playing the switch it down to the backward point region, and with that couple of runs, scoreboard moves on to 19 on the board. Kashyap, being the captain of the side, has got a responsibility. Beautiful delivery. Look at the extra pace in this delivery. Extra pace, the quicker delivery in the irrigation there from Kashyap. Just using his shoulder in irrigation and getting some extra pace. And he bowls again. This time, lovely shot. Switch it comes into play, but quite unfortunately, he will go and get a couple of runs for that. That ball went like a rocket, isn't it? Ball just going a little bit outside the line of off stump, and Madhu just taking his position, changing his position very quickly. Played that switch it quite beautifully and got a couple of runs for that. With that couple of runs, scoreboard numbers on to 21 on the board for the loss of 2 wickets. Kashyap is a very good spin bowler. Not like a spin bowler. It's a fast medium face bowler who can bowl both in and outgoing delivery in one action. And but this time the batsman reading that line, reading that turn very well, and exquisite footwork in the irrigation there from Madhu to get that couple of runs. Kashyap balls, quicker one, much quicker one. This time just tried to yoke the batsman, but line is little bit outside the line of off stump. Because of that quickness of the delivery, as Madhu as little bit late to react to that stroke. Ball just missing his bat, but wicketkeeper behind the stump not missing the opportunity to gather the ball. So much required dotted delivery. Scoreboard is stationed at 21. This time is gone. This is the one wicket they desperately wanted. The batsmen of Lion Kings. The Madhu is departs as he couldn't manage to keep it down. Ball went straight to the hands of a shot
mid wicket, not a orthodox short mid wicket. Almost it was a silly mid on, and that was really working out here for Kashyap. He's got a really very important breakthrough. The wicket number 3 is back into pavilion at the score of 21. The mother's innings is comes to an end. ಅವರದ್ದು ಪೊಸಿಷನ್ ಯಾರು ಕೂಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಚ್ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಉಂಟು ಅದೇ ಸೂಪರ್ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದ ಲೀಗ್ ಕೊಡುದು ಅದೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ಹಿಂಗೆ ಕಾಲಿ ಕ್ಯಾಚ್ 8 runs he scored individually. ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಇಚ್ಚಿ ಕ್ಯಾಚ್ ಮಾತ್ರ ಕ್ಯಾಚ್ಗೆ ಮಧುದು ಕ್ಯಾಚ್ ರನ್ ಔಟ್ ಎಡ್ಡೆ ಕ್ಯಾಚ್ಗೆ ಅದೊಂದು ಮತ್ತೆ ಸೂಪರ್ ಲೀಗ್ಗೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಓಕೆ Madhu is back into pavilion. One of the cool customer as far as the cricket is concerned is back into pavilion. The new batsman in is Rupesh. Will going to take the strike. Kashyap. Successful ball, lovely delivery, beautiful delivery, right on the money, right on the target, right on the block hold. Good way to finish the over number 4 here after completion of over number 4. Still Lion Kings are searching for the right track, struggling in the middle. It's 21 for the loss of 3 wickets. Prajwal Panthers, they came into this tournament as one of the favorite because they are the champions in the last year. So that lot of expectation from the Panthers. You won a lot of pressure as well because whenever you are the champion, defending champion, a lot of pressure for the teams because they need to justify why you are the champion in the last year. And so far I think it's a very good toss to win here from the captain of the Panthers, and so far they're doing very well in first 4 overs. Looks like which is belongs to the Panthers, Prajwal Panthers 4 overs, but here is a Lion Kings. They're looking for some good score here, and last 2 are remaining. ಸಚಿನ್ Time is exactly 11 past 3. I already mentioned 10:44, which is the starting time. Please keep it in mind that you have to complete your 6 overs within 30 minutes. Sachin brought into attack. Beautifully ball, absolutely perfect one. It was a leaving delivery, just got a deviation, pitching from the right spot, moving delivery. Batsman looking for the drive without coming into the line of the delivery, and ball is got outside edge of the bat. Very good carry to the wicketkeeper behind the stump. It's a 4th wicket is back into pavilion. The batsman Shushant little bit disappointed, and he's got out of the bowling of Sachin. He's got a very good start. So new batsman in is Venkatesh. What a start there from Sachin. Absolutely perfect leg cutter in the negation there from Sachin. Just moving from the good line spot. Batsman tried to reach that pitch of the delivery and held the nick. And no hesitation from umpire Harish Padil to raise his finger. And wicket number 4, which is back into pavilion. Little bit under pressure situation here for Lion Kings. They are little bit looks like they are feeling more pressure here. Again, lovely shot, beautifully driven down to deep whitish long off region. They're running hard between the wicket. They're coming back for the second before the throw coming from the deep. If it is a direct hit, I think it's going to be very close for the umpire. But here is over throw comes up. They're going for the 4th as well. This is outstanding run between the wicket. Chance of run out, and umpire says not out. 4 runs which is scored. Really good understanding between the wicket. Excellent running between the wicket as well. What could be a certain couple of runs because of little bit absence of mind here from some fielders. There is no backup at all from the throw which is came from the deep whitish long on region, and just grabbing the opportunity by the 2 batters running hard between the wicket because desperately wanted some runs here, and it doesn't see how the runs are coming. It's at 25 now. Ball is in there. Opportunity for that fielder in the closing, and he got the catch here. And wickets are tumbling here of Lion Kings. Again, the Sachin is balls at the short pitch delivery, but short pitch means it's not that much of easy short pitch delivery. Batsman going for the slash, got outside edge of the bat, but short extra cover fielder making no mistake, short mid off fielder making no mistake at all. Silly mid off, in fact, is picking up catch here. The wicket number 6, which is back into pavilion.
So Vijay is a new batsman in. Ashwath, little bit correction, is the new batsman. And this time he went for a big shot. Opportunity for the field at mid-on. He's just going back, but not really judging well. The ball just landed safely between the deep mid-on and deep long on. And it's not a good athletic work, I want to say, from that fielder from mid-on. He can run back quickly, but it's just a lazy movement towards his back. And pays the penalty for that. Ball is landed safely. Not only they've got a chance, but they got a couple of runs here. With that couple of runs, score but moves on to 27 on the board for the loss of 5 wicket. Sachin. Right arm over wicket bounce. This time upishly played, but quite safely down to deep long after running hard. Again, they're looking for the second. In comes the throw from the deep. The batsmen are very quick between the wicket. Couple of runs safely to the hands of deep backward square leg region, just behind the square leg umpire. The wicket number 8 is back into pavilion. The wickets are tumbling like a house of cards of Lion Kings. No other option at all for Rupesh, because they're dealing with a final over. They need to look for some acceleration of run rate. By doing that, IT couldn't manage to control that pull shot. He pays the penalty for that. But he played a small innings of just 4 runs, as he picked up 4 valuable runs for his team. But still, I don't think it's going to be a big score here. Just a 34 on the board. They're dealing with the final over. Harris. Will go into ball that next delivery of the final over. There is a backward point, short cow point, short correction, backward point and short cow point. There is a deep long off. This time again, a lovely delivery indeed, beautifully bowled. That is a perfect delivery to ball. There's a 4 man in the offside, 5 man in the on. In the deep, there is a deep extra cover, deep long off, deep long on, deep mid wicket and deep backward square leg. The 5 fielders outside the circle. There is a short gully, short cover point, short mid on and short fine leg. This time again, swinging that one. Again, timing is not proper, but there is a couple of chance of single there, no couple, because the ball went straight to the hands of fielder. Fielder is so quick in that occasion, down at deep backward square leg, charging into the ball and denying the second from these 2 batsmen. Score 35 on the board for the loss of 8 wickets. Is back into pavilion. Harris, right arm over the wicket bounce. This time pulls that one. Again, the ball is not carried to the field after one bounce collected by the fielder. They're coming back for the second. It's a suicider. Absolutely suicider, isn't it? There is no question of second run at all, but they need to run for that because they're playing with the final delivery of their innings. They have to take each and every chance of running between the wicket. But this time, I think just a single for Lion Kings. Run out taken place. That's it. After completion of over number 6, it's a 36 on the board. They scored runs exactly at the run rate of 6 runs per hour. They set a target of 37 to win the match for Prajwal Panthers. Wait and see how Prajwal Panthers will going to get this 37 stipulated 6 overs, and wait and see how Lion King will going to justify that 36. We'll take a short break here. After a short break, and my co-commentator, my friend Mr. Zakir will going to take over the microphone in our national language, Hindi. It's over to Zakir. Welcome, Zakir, and good morning to you. हेलो चिक धन्यवाद सतीश जी। बहरहाल बेहतरीन तरीके से अंतर्राष्ट्रीय भाषा में मैच को आकर देखा हाल सुनाने के लिए, और इसी के साथ यहाँ पर जो कि यक्कुर प्रीमियर लीग दूसरा सीजन का पहला दिन का पहला मैच प्रगति पर चलता हुआ प्रज्वल पैंथर्स बनाम लायन किंग के बीच दरमियान जो कि मैच जो कि यहाँ पर प्रगति पर चलता हुआ, इस समय पहले बल्लेबाजी कर यहाँ पर कुल मिलाकर
35 रन जोड़े हैं और 36 रनों का लक्ष्य यहां पर रखा गया है प्रज्वल पैंथर्स के लिए। यहां पर जो कि अलायंस किंग के लिए एक सूचना देते हुए, क्योंकि प्रज्वल पैंथर्स ने कुल मिलाकर 26 मिनट लिए हैं 6 ओवर फेंकने के लिए, इसी तरीके से बरकरार रखेंगे ये उम्मीद है यहां के लायन किंग के गेंदबाजों से, क्योंकि आपके ही लिए नुकसान होगा अगर कम से कम 30 मिनट के अंदर पूरे 6 ओवर आप के जाने चाहिए, वरना आपको एक क्षेत्र रक्षण को 30-10 के दायरे के अंदर बुलाना पड़ेगा और इस वजह से यह नियम यहां पर रखा गया है। बहरहाल मैच के शुरू होते हुए लायंस किंग के क्षेत्र रक्षक मैदान पर उतर चुके हैं और दूसरे छोर पर प्रज्वल पैंथर्स की दोनों आरंभिक जोड़ी मैदान पर भी उतर चुके हैं, जो कि 18 नंबर के जैसे पहने हुए बल्लेबाज पुनीत और उनके साथ देते हुए जो कि 05 नंबर पहने हुए जर्सी सचिन नॉन स्ट्राइकन की ओर जाते हुए और पुनीत स्ट्राइकन की ओर जाते हुए 6 ओवर की मैच सिर्फ 2 ओवर पावर प्ले का नियम रखा गया है। 30-10 के दायरे के बाहर सिर्फ 2 ही क्षेत्र रक्षकों को तैनात किया जा सकता है और इस वजह से दोनों बल्लेबाजों को भरपूर मौका है इस पावर प्ले का फायदा उठाने के लिए। और इस मैच के निर्णायक के रूप में मैच शुरू होने की इशारा देते हुए हरीश पटेल 11:18 पर मैच जो कि शुरू हो जा रहा है। दूसरी पारी का पहले गेंद नवाज के हाथों में, पहले गेंद टुक्का बनने के बाद सिर्फ बाहर रन आउट होने का खतरा हो सकता था, वहां पर गेंद जो कि विकेटों पर पड़ी है और यहां पर बहुत बड़ा झटका, यहां पर जो कि बिना कोई रन्स यहां पर खाते खुले हुए ही पहले गेंद में ही मायूसी के साथ पुनीत अपने पेविलियन वापस लौटते हुए 0 की कुलियों पर यहां पर हल्का सा गेंद थी, धीमी गति की गेंद की नवाज की टिप्पा पड़ने के बाद सही तरीके पे बल्ले पे नहीं आई थी, गेंद सीधे मिड ऑफ की दिशा पर, शॉर्ट मिड ऑफ की दिशा पर गेंद गई। इस वजह से रन आउट होकर पहला विकेट का पतन यहां पर हो चुका है और उनके आउट होने के उपरांत नए बल्लेबाज अब पहुंच चुके हैं क्रीज पर। हैरिस जॉन्टी नॉन स्ट्राइक पर आए हैं नए बल्लेबाज और इस समय स्ट्राइक लेन पर है सचिन। पहली गेंद दूसरी गेंद इस पहली ओवर की दूसरी पारी की नवाज कट करना चाहते थे, टिप्पा भरने के बाद बल्ले पे बल्लेबाज पूरी तरीके से चुके इस गेंद को कट करना चाहते थे, लेकिन सीधे विकेट कीपर सुशांत के हाथों में गेंद, रन्स की कोई गुंजाइश नहीं थी। जिससे वहां पर हल्का सा स्क्वायर की दिशा पर अपने कलियों के सहारे मोड़ दिया है 1 रनों के लिए और यहां पर रनों की सिलसिला शुरू हो चुका है इस 1 रनों के से और इस एक के साथ रन्स पर बन चुका है सिर्फ 1 रन, जबकि पहली ओवर की चालती पर नवाज के हाथ में गेंद हाईवे एंड से गेंदबाजी करते हुए निर्णायक हरीश पटेल को पार करते हुए इस समय स्पॉट कट करना चाहते थे, छोटी गेंद थी, भरपूर तरीके से फायदा नहीं उठा पाए, लेकिन पहले गेंद पे अपने खाते जो की करते हुए
हैरिस जोटे इस समय नॉन स्ट्राइक पर तैनात और फिर से स्ट्राइक पर आ चुके हैं सचिन। एक बेहतरीन बल्लेबाज है, खासकर जिसके बेहतरीन तरीके से गेंद को एक्स्ट्रा कवर के सर के ऊपर से ढकेल दिया है। गेंद दो टिप्पा पड़ने के बाद सीमा रेखा पार हो चुकी है और पहला चौका यहां पर गिरता हुआ और सचिन के बल्ले से काफी बेहतरीन शॉट और इस 4 रन की मदद से स्कोर कार्ड पर बन चुका है 6 रन, जबकि पहले ओवर के छाते पर मैं इससे पहले जिक्र कर चुका हूं सचिन के बारे में। एक बेहतरीन बल्लेबाज है। जब तक सचिन क्रीज पर मौजूद है फजल पैंथर्स के कप्तान को एक दिलासा जरूर रहेगा। स्पाट कट करना चाहते थे, टिप्पा पड़ने के बाद बल्ले से चूका सीधे विकेट कीपर सुशांत के दस्तानों में गेंद। जोरदार अपील थी, पूरी तरीके से नकार दिया है और इसी के साथ पहली ओवर की समाप्ति भी हो चुकी है। यानी पहली ओवर की समाप्ति के बाद रन संख्या यहां पर बन चुका है 7 रन, जबकि एक विकेट गिरने के बाद जो विकेट गिरी है क्षमा चाहूंगा 6 रन, 6 रन यहां पर स्कोर बोर्ड पर बन चुका है 1 विकेट के नुकसान पर, जबकि एक विकेट जो कि पुनित के रूप पर जो 1 विकेट गिर चुकी है प्रज्वल पैंथर्स की, वो पवेलियन वापस लौट चुके हैं और दूसरी ओवर लेकर इस पारी की रूपेश के हाथों में गेंद समा दिया है। टीम के कप्तान ने पूरी जिम्मेदारी इस समय जो कि रूपेश पर, जो पहला ब्रेक थ्रू यहां पर रनआउट के ऊपर हो चुका है। क्या इस मैच के बाद दूसरा मैच जो कि खेला जाएगा यक्कुर ब्लास्टर्स बनाम टीम यक्कुर बाबा के बीच, इन दोनों कप्तानों से गुजारिश है कि कृपया कमेंट्री बॉक्स पर संपर्क करें टॉस के लिए। बहरहाल मैच की ओर चलते हैं। रूपेश हाईवे से गेंदबाजी करने के लिए तैयार, हैरिस के लिए टिप्पा करने के बाद उठा दिया है, गेंद हवा में है, क्षेत्र उसके पीछे है, लेकिन नो मैन लैंड जिसे कहते हैं अंग्रेजी में, वहां पर जा पर गेंद टिप्पा गया है और इसी के साथ 2 रन भी दौड़कर पूरे कर चुके हैं इन दोनों बल्लेबाज यानी सचिन और हारिस। काफी बेहतरीन रनिंग बिटवीन द विकेट है इन दोनों बल्लेबाजों के बीच, इस वजह से आसानी के साथ 2 रन मुकम्मल कर चुके हैं दौड़कर। छोटी गेंद थी, भरपूर तरीके से फायदा उठा नहीं पाए थे क्या इस समय सचिन। स्पार अच्छी गेंद, ब्लॉक हॉप थी गेंद, आसानी के साथ फॉलो थ्रू की दिशा पर लॉन्ग ऑन की दिशा पर ड्राइव किया है। एक ही रन से संतोष होना पड़ेगा इन दोनों बल्लेबाजों को। धीरे धीरे स्कोर बढ़कर बन चुका है 9 रन, जबकि 1 विकेट के नुकसान के बाद सचिन फिर से स्ट्राइक पर आ चुके हैं। अच्छे बल्लेबाज प्रज्वल पैंथर्स की ओर से लक्ष्य पर गेंद टप्पा पड़ने के बाद लक्ष्य पर गेंद और हरीश पटेल ने अपने रवि उपला ने अपने हाथों को फैलाकर वाइड का इशारा देते हुए एक और अतिरिक्त रन खाते में जुड़ता हुआ। रूपेश एक बार फिर से तैयार और अच्छी गेंद आखिरी मौके पर अपने गति को परिवर्तन किया है। यहां पर रूपेश ने धीमी गति की गेंद की, आखिरी मौके पर सचिन ने धकेल दिया है शॉट थर्ड मैन की दिशा पर 1 रनों के लिए, जबकि क्षेत्र से गेंद को गैदर कर पाते उससे पहले दोनों बल्लेबाज 1 रन दौड़कर पूरे कर चुके थे। और इस समय एक बार फिर से आए हैं हैरिस जोंटी, उठाना चाहते थे लेकिन सही तरीके पे बल्ले पे नहीं आई थी गेंद। वहां पर 1 रन दौड़कर पूरे कर चुके हैं, 2 रन मारना चाहते थे, 2 रन भी दौड़कर पूरे होते हुए। मैं इससे पहले कह चुका हूं रनिंग बिटवीन द विकेट इन दोनों बल्लेबाजों की काफी बेहतरीन है और इन 2 रन के साथ रन संख्या बढ़कर बन चुका है 13 रन 1 विकेट के नुकसान के बाद। सर उन्नीकृष्णन एलिದ್ರು ವೇದಿಕೆ ಬರಬೇಕು। उन्नीकृष्णन तो वहां पर शॉट लॉन्ग ऑफ दिशा पर ड्राइव करना चाहते थे, दिशा नहीं ढूंढ पाए। हारिस पावर प्ले चलता हुआ सीधे शॉट
लॉन्ग ऑफ के जो शॉट एक्स्ट्रा कवर की दिशा पर जो क्षेत्र रक्षक तैनात है उनके हाथों में गेंद। रूपेश एक बार फिर से तैयार हारिश के लिए, फिर से कट करना चाहते थे, रन थोड़ा खतरा बन सकता था, डायरेक्ट ही लगती तो खतरा जरूर बन सकता था, लेकिन भाग्य ने भरपूर साथ देते हुए सचिन का अगर डायरेक्ट हिट होती तो जरूर खतरा बन सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। भाग्य ने भरपूर साथ दिया सतीश का, और इसी के साथ ओवर की भी लगातार दूसरा ओवर की में मुकम्मल हो चुका है। लगातार दूसरे ओवर के मुकम्मल के बाद रन संख्या बढ़कर बन चुका है 14 रन, जबकि 1 विकेट के नुकसान पर रहा, यानी 36 रनों का लक्ष्य का पीछा करते हुए अगर इसी तरीके के वे दो बल्लेबाज बल्लेबाजी करते आएंगे तो जरूर कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा अपने विजय को प्राप्त करने में, क्योंकि काफी हद तक 1 विकेट गिरने के बाद काफी हद तक इस पारी को संभालते हुए 14 ऑन द बोर्ड 14 रन, काफी हद तक इस पारी को संभालते हुए साझेदारी बनते हुए इन दोनों बल्लेबाजों के बीच, और पावर प्ले का मुकम्मल हो चुका है। कोटा समाप्त करने के लिए नवाज को गेंदबाजी पे वापस बुलाया गया है। तीसरी ओवर की पहली गेंद लेकर हारिश के लिए उठा लिया है, गेंद हवा में है, क्षेत्र मधु उसके पीछे, क्या कैच ले पाएंगे, लेकिन कैच को गैदर करने में पूरी तरीके से चूकते हुए मधु, खराब क्षेत्र रक्षक मैं कहूंगा, लेकिन आसान नहीं होता है हवा में जब तक गेंद रहती है, लेकिन फिर भी कैच को लपकना चाहिए था, क्योंकि सख्त जरूरत थी लायंस किंग को विकेटों की जो दरकार है, इनको कट कर दिया है। वहां पर फिर से एक्स्ट्रा कवर की दिशा पर 1 रन दौड़ कर पूरे कर चुके हैं, 2 रन भागना चाहते थे, लेकिन आखिरी मौके पर सतीश ने मना कर दिया। 1 ही रन से संतुष्ट होते हुए सचिन और हारिस, मायूसी जरूर होगी नवाज को, क्योंकि विकेट जरूर मिलता था। इस बार हल्के तरीके से गेंद को धकेल दिया है शॉर्ट टर्मिंग दिशा के साथ, काफी समझ बूझ के साथ बल्लेबाजी करते हुए सचिन, वे जानते हैं बड़े शॉट की दरकार नहीं है, अगर 1 का 2 रन हम बना पाते हैं तो जरूर लक्ष्य की ओर जाने में कोई दिक्कत का सामना नहीं होगा। इस समझ के साथ बल्लेबाजी करते हुए इन दोनों बल्लेबाज सचिन और हारिस दोनों अनुभवी बल्लेबाज है, काफी अनुभवी है, मैच खेलते हुए आ रहे हैं। फिर से उठा दिया है हारिस, वहां पर क्षेत्र रक्षक खलील मौजूद, वहां पर काफी बेहतरीन क्षेत्र रक्षण का नजारा देते हुए खलील जो डीप स्क्वायर की दिशा पर जो क्षेत्र रक्षक तैनात है खलील, और इसी के साथ 1 रन दौड़कर पूरे कर चुके हैं। सेकिंग के साथ रन संख्या बढ़कर बन चुका है 19 रन। उल्टे बल्ले से खेलने की कोशिश की थी, काफी बेहतरीन शॉट यहां पर, लेकिन आखिरी मौके पर उसी तरीके के साथ बेहतरीन क्षेत्र रक्षक का नजारा देते हुए जो क्षेत्र रक्षक तैनात है वहां पर अपने टीम के लिए कम से कम 2 रन जरूर बचाया है, और काफी महत्वपूर्ण 2 रन है अपने टीम के लिए बचाया है। फिर से एक बार तैयार नवाज, और अच्छी गेंद लेफ्ट आर्म से काफी दूर अपने हाथों को फैलाकर वाइड का इशारा देते हुए हरीश पटेल एक और अतिरिक्त रन खाते में जुड़ता हुआ। इस समय अतिरिक्त रन देना काफी बुरी बात होती है, क्योंकि मैच एक महत्वपूर्ण दिशा की ओर जा रही है, और इस समय ऑप्शन से काफी दूर लगातार दूसरा वाइड फेंकते हुए नवाज 2 और अतिरिक्त रन खाते में जुड़ता हुआ। इस अतिरिक्त रन के साथ रन संख्या बढ़कर बन चुका है 23 रन, सिर्फ 1 विकेट गिरने के बाद। इस पर हल्के तरीके से धकेल दिया है शॉर्ट मिड विकेट की दिशा पर, रन की कोई गुंजाइश नहीं। ओवर की मुकम्मल, लगातार तीसरी ओवर के मुकम्मल के बाद रन संख्या यहां पर बन चुका है स्कोर पर 23 रन, जबकि 1 विकेट गिरने के बाद कुल मिलाकर 36 रन बना है, यानी
37 रनों का लक्ष्य रखा है लायंस किंग ने. 23 ऑन द बोर्ड. द कंप्लीशन ऑफ थर्ड ओवर, द स्कोर मूव्स ऑन टू 23, लॉस ऑफ 1 विकेट. इस समय बॉलिंग पर आए हैं टीम के कप्तान मधु, सारी जिम्मेदारी अपने कंधों पर लेकर गेंदबाजी करते हुए. इस समय बार ऑन साइड की दिशा पर यानी डीप स्क्वायर की दिशा पर गेंद को ड्राइव कर दिया है. लो पुल टॉस गेंद थी, पूरी तरीके से बल्ले पे नहीं आई थी गेंद, लेकिन एक रन तो जरूर मिला है हैरिस के खाते में जुड़ता हुआ. मधु तैयार. ओवर फिर से एक मौका. अगर इसी तरीके के आप मौका देते जाएंगे बल्लेबाजों को तो आपको मैच जीतने के लिए बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि इस समय साझेदारी के तोड़ना सख्त जरूरत है. जो काम मधु ने पिछले ओवर पे किया था, इस समय जो स्क्वाड जो शॉर्ट मिड विकेट जो पॉइंट की दिशा पर जो क्षेत्र थे उन्होंने कैच को छोड़ दिया है. इस समय बल्ले का बाहरी किनारा लगाता थर्ड मैन की दिशा पर जाते हुए 1 रन का इजाफा और इस 1 रन के साथ रन संख्या बढ़कर बन चुका है 25 रन. काफी बेहतरीन साझेदारी चलते हुए सचिन और आरिस के दरमियान. मधु एक बार फिर से तैयार. अच्छी गेंद, धीमी गति की गेंद को हल्के तरीके से ऑफ साइड की दिशा पर हल्के से ढकेल दिया है 1 रनों के लिए. एक और रन खाते में जुड़ता हुआ. फिर से ड्राइव करना चाहते थे, लंबा शॉट मारने की प्रयास किया था हारिस ने, लेकिन टाइम से ही कर पाए और इस वजह से 1 रन तो जरूर खाते में जुड़ता हुआ. 1-1 रन जुड़कर यहां पर बन चुका है 27 रन, सिर्फ 10 रन दूर अपनी जीत से. उतार लिया है सचिन ने, पहला छक्का, बेहतरीन लंबा और खूबसूरत शॉट और पहला छक्का यहां पर इस यक्कुर प्रीमियर लीग का पहले गिरता हुआ सचिन के बल्ले से. काफी बेहतरीन अंदाज के साथ स्कोर को खेला है सचिन ने और इस 6 रन के साथ रन संख्या बढ़कर बन चुका है 33 रन और इसका मतलब है सिर्फ 4 रन दूर है अपनी जीत से. क्या साझेदारी चलते हुए इन दोनों बल्लेबाजों के बीच. जो कैचेस छूटे गए थे खामियां तो भुगतना जरूर पड़ेगा, क्योंकि जिस वक्त पर कैच छूटा है मधु ने वो सख्त जरूरत थी टीम को विकेटों की, उस वजह से मैच अपने हाथों से पूरी तरीके से निकलता हुआ. रक्षित समय खलील थे वहां पर, आरिस ने ड्राइव करना चाहते थे लेकिन टुप्पा बनने के बाद खलील के सर के ऊपर से गेंद जा चुकी है और सीमा रेखा पार हो चुके हैं और 4 रन की मदद से इस मैच को प्रज्वल पैंथर्स ने जीतकर 2 अंक प्राप्त किया है. मैं बधाई देता हूं, कंग्रेचुलेशंस. और काफी बेहतरीन तरीके से बल्लेबाजी की है इन दोनों बल्लेबाजों ने. जिस तरीके की बल्लेबाजी सचिन और हारिस ने किया है, हर बल्लेबाजों को करना चाहिए अगर विजय लक्ष्य प्राप्त करना है, तो खासकर चेस करते वक्त. और मैं धन्यवाद देता हूं और इसी के साथ पहला मैच का मुकम्मल हो चुका है और इसके बाद मैच जो खेला जाएगा यक्कुर ब्लास्टर्स बनाम टीम यक्कुर बाबा के दरमियान. यक्कुर ब्लास्टर्स ने टॉस को जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया है और जब तक उनका मैच शुरू हो मैं यहां पर ले लेना चाहूंगा एक छोटा सा ब्रेक.
रोचक। और इस मैच की आंखों देखा हाथ सुनाने के लिए मैं मेरे साथी कमेंटेटर मिस्टर सतीश को आमंत्रित करना चाहूंगा अंतर्राष्ट्रीय जबान पर। धन्यवाद। So thank you very much, Zakir. So back to the match number 2 of this prestigious Yekkur Premier League, day number 1, running very successfully after the completion of first match. Pajwal Panthers they started their journey with the victory, and just like we're mentioning about the defending champion, they really started well. Time is exactly 11:38. Please note 11:38. The first over is going to start. And after winning the toss, Yekkur Blasters selected to field first. And here is the team Yekkur Baba. They're going to bat first here. First ball, lovely shot, just up and over, down to extra cover region, but not more than a single. Looks like that stroke which is played against the direction of the wind, and that's why the ball is not really traveling. And unfortunately, batsman will going to get just a single for that good-looking stroke. Actually, the much required stroke which is required in the power play overs, just going over the top of the infield. But the batsman managed to complete the single. Sachin is off the mark with the single, one without loss of any wicket. So Fayaz just examining the field set, and just I want to see the field set in the power play. Now the long on is coming inside the ring, and the extra cover fielder is going back to deep extra cover. And the field set, short mid off, short cover point, short backward point, short fine leg, square leg,
There is a shot mid-wicket, mid-on, and one at deep mid-wicket. Is going for the cut shot, but not quite getting hold of that one properly. Of course, the width is offered there by the bowler outside the line of off-time. Batsman just climbing onto that, tried to slash that one, and unfortunately couldn't get that much of enough bat onto that. So both the batsmen are off the mark with that singles, 2 without loss of any wicket. Right arm over the wicket again, lovely direction, just steering the ball down to deep third man boundary. Wait for the umpire signal, single signal by umpire. That was delicately played there by the batter, just seeing the ball is going away from him outside the line of off stump, and just steering the ball down to third man region for a single. So with that single, scoreboard numbers on to 3 on the board without loss of any wicket here in over number first in progress. Imran. Suchin will go into face outside the line of off stump. Nothing much to do with the delivery because that ball is going further away outside the line of off stump and left the ball into the hands of wicketkeeper. But umpire just not missing the opportunity to signal the wide. 4 on the board. This time going for the big shot. Ball is in there. Chance for the square leg fielder. Not really having. Looks like it was a straightforward chance. The midfielder at square leg is just complaining about the sun raises. The raises of sun is hitting his eyes. But you need to deal with all these things because sun will going to do his job. He's not going to miss the job, but you have to tackle with all these things, isn't it? But sometimes it's happening in cricket, the cricket field. It's very difficult to tackle with the sun rays hitting his eyes, and that's why you are wearing a cap. But still, that fielder couldn't manage to judge the catch well. And the score is a 5 on the board. Oh, one more chance. The fielding is not really up to the mark here from Yekkur Blasters. Powerfully driven. This is a much tougher than the previous one because the batsman slashes that one very hard as a short cow point fielder just missing the opportunity. So with that single, scoreboard numbers on to 6 on the board for the loss without loss of any wicket. Imran bowls this time. Yekkur length very appeal for leg before wicket. Half-hearted shot. You can see the body language of the bowler. He started to appeal too late, isn't it? And might be the ball is just going down the leg stump. We are not having that much of good view of here from the commentary box. But umpire not satisfied to raise his finger. But it's a 6th delivery which is completed. That's why it's called over which is completed. After completion of first over, searching for the right track, Team Yekkur Baba, the managed to score 6. It's a steady start from the opening batters. 6 without loss of any wicket after completion of over number first. For the latecomers, you are watching the match number 2 of day number 1 of this prestigious Yekkur Premier League 2022. We have a fantastic live telecast of this cricket tournament from Namana TV, the one more popular YouTube channel as well. And so far we are having a very good quality coverage of this cricket tournament. Jamal brought into attack from the highway end. Fantastic cricket ground. It's a most beautiful cricket ground with some greeneries which is covered around this cricket ground. The youth stage which is definitely giving a lot of shelter for some spectators to watch this cricket tournament. And just behind this cricket ground we are having a national highway, and really it's one of the most the beautiful view of this cricket ground. Again nicely places that down to short extra coverage. Cow point fielder have to run towards his right to field the ball, and ample time for the batters. Scoreboard moves on to 7 on the board without loss of any wicket. Jamal round the wicket, left arm over the wicket correction, going for the big swing of the bat. Ball misses the bat, just an inches. I think that ball missed the bat of the batsman. Going for the big swing of the bat, try to full that one, but the ball has got a little bit quicker than what the batter is expecting from Jamal, missing the ball completely. Luckily that is safe in the middle. Again a beautiful, oh, what a catch! Oh my goodness, he drops the catch. This is a third chances in a little time. The fielders of Team Yekkur Yekkur Blasters are missing the golden opportunities. The 3 opportunity, 2 which is a tough one, the one which is an easy chance was missed out. The catches win the matches, which is the greatest slogan ever in cricket.
If you miss the catches, you need to miss the matches. Again, beautifully bowled and equally well played there by the batsman. Just coming to the line of the delivery, soft and comes into play. Perfect technique as far as the batsman picking up the single is concerned. I think Fayaz technically very sound in the negation, just well behind the line of the delivery, played that soft and quite nicely down to short cow point region to pick the single. Left arm over the wicket, full toss, plays it down to deep long on, down the ground. Just a single here. Protection has been given in the deep, in the long on. So the batsmen are satisfied with the singles. With the singles, scoreboard moves on to double figure 10 without loss of any wicket in the over number second in progress. Jamal bowling from the edge of the 20-yard circle. Left arm over the wicket, he bowls. Pull that one straight to the hands of square leg. This time they are not missing the opportunity, isn't it? This time batsman tried to pull that one, but not really able to keep it down or keep it over the fielder. But ball is came in a right height where the fielder can take the catch quite easily at square leg region. The first wicket is back into pavilion of Timo Yekkur Baba in the name of Fayaz, as he tried for the pull shot but not really able to keep it down. Went straight to the hands of square leg. That was a quick reflected catch, isn't it? If you see it in the replay, I'm sure that the Namana TV, the cameraman will going to give the replay of this the catch where the batsman tried to pull that one but not really able to keep it down at the square leg fielder. The Imran making no mistake at all at square leg, and only good fielder can take that kind of catches, because the closing fielder always the key, as the quick fielder which is required. The quick reaction is so important for the closing fielder, and that catch which is taken quite nicely by that square leg fielder. So first wicket is back into pavilion. Ritu is a new batsman and is replacing. That was a wicket which came in the last delivery of the over number second. So that over completed. So Imran will going to continue. He's bowling his second over of his quota. He bowled his first over, which is a good one. Just a 6 runs is conceded because he's bowling in the power play overs. The power play overs always going to be key for any team, because only 2 restriction outside the circle, and keeping the batsman quiet is so important. First ball, lovely shot, beautifully driven off the back foot, crashes that one down to deep extra cover region for a single. Then it's a very confident looking stroke there from the batsman Suchit in derogation. Is Suchin, little bit correction, is a man is settled down in the middle, came as an opener for the side, and that was a really good looking stroke there from Suchin to pick the singles. 11 on the board. This time he plays it down to deep backward square leg region. Protection has given in the deep, and neat collection there from the fielder. When there is a neat collection, there is a possibility of just a single for the batters. So with that single, score numbers on to 12 on the board for the loss of 1 wicket. Searching for the right track here, team Yekkur Baba against Yekkur Blasters. Again, there's a wide call by umpire. 1+1. It's a 2 gifted runs, 2 wides. Always runs which is gifted by the opposition. That batting team will going to enjoy these all gifted runs. With that gifted runs, score numbers on to 14 on the board for the loss of 1 wicket. For the latecomers, you are watching the match number 2 of day number 1 of this prestigious cricket tournament, Yekkur Premier League 2022. This is beautifully bowled. Perfect comeback here from the bowler. After that wide ball, then Imran have to back strongly, and he came very strongly with that delivery, with a flighted one and extra bounce and extra pace. This time he's going for the big shot, not quite getting hold of that properly. The mid-on fielder is going back. Absolutely good judgment there from the mid-on fielder. When there is a high catch, it's not so easy, but the fielder making that so simple by taking a position very quickly, by going back, running back, and kept the eye on the ball. That's so important when you're taking a catch. He just kept the eye on the ball till the last moment, and wicket number 2, which is back into pavilion of team Yekkur Baba.
It's 14 for the loss of 2 wickets. It's 14 for the loss of 2 wickets. So opening batsman Sachin is back into pavilion. He scored 6 runs. He just wanted to break the shackle as he wanted to hit the ball towards the mid wicket. I request the batsman, please, the discipline which is a part of cricket, the without shoe which is not allowed. You cannot play with the chappals. If you are injured, if you are not allowed to in the playing 11, please note. So man of the match of the first match, which is goes to Sachin of Prajwal Panthers for his all-round performance, and I request Prithviraj Bangera to present this man of the match award for Sachin for his all-round performance of Prajwal Panthers against Lion Kings. Kirti is in strikers and full toss delivery, and he just clearing that one, but unfortunately we're going to get a couple of runs or single. We have to see. Wait on for a single. Is a couple of runs. No, single. It's a couple of runs which is declared, and as for the rules and regulation of this cricket ground is concerned, the behind the wicket there's opportunity of the maximum of 2 runs and minimum of 1 run just behind the wicket. 16 on the board. Beautifully balled, fantastic delivery. ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟದ ಮೊದಲನೇ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯ ವಿತರಣೆಯನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸುಹಾಸ್ ಇವರು ಸಚಿನ್ ಇವರಿಗೆ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ ಸಚಿನ್ for your wonderful performance. All the best for the next match, and thank you very much Suhas being here for the presentation of man of the match. So 3 overs completed. It's a 3 over and 16 for the loss of 2 wicket. Team Yekkur Baba searching for the right track, but still they're struggling in the middle. Sachin brought into attack from the highway end. The bright sunny afternoon out here. Time is exactly 11 past 55 in the morning. Absolutely perfect one to start with. The half-hearted shout here from the bowler. More than the confidence, it's just an the appeal which is just need to make the confusion for the umpire. Dikshit unmoored, rightly so. Full toss, again the opportunity for the mid-off fielder to take the... Oh my goodness, can you believe this? It's absolutely a lollipop for that mid-off fielder. This is the 4th drop catch, can you believe this? This is a fielding which is really not up to the mark of Yekkur Blaster. They won the toss, selected to field first, bowler doing the job, but there's not a good anticipation here from the fielders. Nicely turns, but straight to the hands of Scarlag. Again the misfield there by the fielder. The batsman, this time Kirti got a single for that. With that single score, Namozan to 18 on the board for the loss of 2 wickets here in over number 4 in progress. The first over there is a 2 drop catches. Second is a 1 drop catches. Now it is in the 4th over, 1 more drop catches. Right, I'm over the wicket. This time he went for the big shot. Ball high up in there. Will it go into the first 6 of this tournament? Well, it does. It's a maximum. This is the second sixer, but the first sixer of this match. I want to make a little bit correction. This is the second sixer of the tournament, but first sixer of their innings. And what a fantastic hit there from the batsman Ritu there. Just picking off the line and length so quickly. Just missing that advertisement banner. Juice.
training center. I think if he hits that banner, he will going to get this. Some lovely shot, beautifully played that out of deep cow point region, and they're looking for the second as well, and they make it quite easily in the end. Now the Situ is looking so confident, just opening up in the right time after hitting one magnificent six down to deep mid wicket region. And after that, one more quality looking cricketing stroke, just lofted that one over the backward point region fielder. He got a couple of runs for that. Outstanding batting display here from Ritu. Score jumped into 26 on the board. This time, it's high up in there. Will it going to be a chance here for the Virat fielder? Mr. Singh, that one going and going and going over the head of the deep long on fielder for a second six of the over. He's on fire. Ritu is on fire. Over number 4 completed. After completion of 4 over, this is the first productive over coming in favor of Team Yekkur Baba, and that's only because of the Ritu is just taking a charge. He's just taking the charge and targeting Sachin for the acceleration of run rate. 2 sixes which is came from the bat of Ritu. One down to deep backward square leg, between deep backward square leg and deep mid wicket, and second one which is just over the deep long on fielder. Once the deep long on fielder looks like he will going to take the catch, but ball is just with the direction of the wind, going and going and going over the head of that mid on deep long on fielder, and he got the distance for that, and he got a maximum. So expensive over, the over of 16 runs which is came from that over. 32 on the board. Hamza Ujire is came into ball. This time went for the big shot. Square leg fielder. Square leg fielder this time not complaining about the rays of sun, but because ball is just landed safely to that fielder at square leg. The wicket number 3 which is back into pavilion. The same fielder, the Imran, who's picked up a catch in the first second over. That was a sharp catch. This time is a high catch. The second catch here for Imran. It's a 32 on the board for the loss of 3 wickets back into pavilion. Kirti is back into pavilion. Replacing him is just number 24. Is walking towards the middle. Kirtan replacing Kirti. Not much difference in the letters of Kirti and Kirtan. Here is the next one off the back foot. Quite nicely plays it down to backward point region for a single. And a good piece of fielding there by the fielder. The lot of support coming from the audience, because Unni Krishnan is one of our popular name, as he get a lot of supports from the supporters for that good piece of fielding. And the scoreboard is 33 on the board. 33 for the loss of 3 wickets. Hamza, successful bowler, going for the full shot. Ball is in there. Chance for the long off fielder to take the catch, and he takes the catch quite comfortable in the end. One more wicket is back into pavilion of Team Yekkur Baba, as a batsman trying for the big shot, but quite unfortunately the man who's made a lot of damages, Ritu, is back into pavilion. I said this time he's not quite getting hold of that properly, as you are looking for some big shot down the deep long off region. Might be that height of that delivery, which is not really coming from the middle of the bat. It is not the sweetest spot of the bat which is involved. That strokes. That's why he couldn't manage to get the elevation right. He couldn't manage to get the distance right, as he got an elevation, but he didn't got the distance what he's looking for. And the deep long off fielder is back into deep long off fielder takes a catch and is back into pavilion. Mayur is a new batsman in. So 2 wickets in that over from Hamza out of 3 deliveries. He's looking pretty good in this over. Hamza bounce this time down the leg stump, going to be punishable from the umpire, not from the batter. And 1 + 1, 2 more to the total in the form of extra. With that extra, scoreboard now moves on to
35 on the board. This is just over number 5 in progress. So good score on the board. After that, a slow start, after the shackling start, they came very strongly in 1 over, which has changed the complexion of this match. Again, nicely driven down to deep mid wicket region. Protection has been given in the deep, so batsmen have to settle for the single for that. With the single, Mayur is off the mark. Total score now moves on to 36 on the board for the loss of 4 wickets. In fact, is back into pavilion. So far is a good over there from Hamza, excluding that wide ball. Umpires will go in to count the ball, and 2 more left in this over. Right arm over the wicket. This time fulls that one quite nicely down to mid wicket. On bounce collected by the deep fielder. They're looking for the second, but very difficult to get that. Good return coming from the fielder in the deep mid wicket region. So one more addition to total addition of that single score, but moves on to 37 on the board for the loss of 4 wicket. The bowler will go into back to his bowling mark. Final time in this over. Alright, I'm over the wicket. This time I will pull that one. Handsome looking pull, and that will go into a huge one. This is the third sixer of their innings, and Mayur, little correction, Kirtan, I think so. No, Mayur, yes, Mayur hits the 6 down to deep backward square leg division. So with that 6, scoreboard jumps into 43 now. Now it's a very good score for team Yekkur Baba. Short pitch delivery attempted there by the bowler. All the efforts are efforts which is gone in vain of Hamza. He bowled a very good over. Last delivery, which is bowled a short pitch delivery. Enough time for the batsman Mayur to rock back and full set one handsomely down to deep backward square leg for a maximum. For the next match, I request Oz Warriors as well as Juice Titans, please report here immediately for the toss and complete your signatures before that. Please complete your formalities of signatures. Oz Warriors takes on Juice Titans, going to play the third match. Don't waste the time, please keep it in our mind. The time sense, which is already I mentioned about, the 30 minutes which is given to you to complete your 6 overs. G1 to bowl that final over. Right arm over the wicket. Excellent delivery right on the block hold in the negation. The batsman managed to complete the single in the negation. With that single score, moves on to 44 on the board for the loss of the 4 wickets, which is back into pavilion of team Yekkur Baba. 2 teams which has got a name of Yekkur. One is a Blaster, one is a team Yekkur Baba. G1 again. Excellent run up he has got. Bowling action as well. Beautifully bowled. Perfect one. But wicketkeeper not anticipating very well. Chance of run out. Extra run they will going to get in the form of overthrow. It's a definitely disaster for the bowler, isn't it? He just beats the batsman. Wicketkeeper fails to collect the ball neatly. Trying for the run out in a non-striker's end. Overthrow comes into play. By call by umpire. And 2 byes which is added total with that by scoreboard numbers on to 46 on the board. G1 seaming in from the far. Lovely delivery, beautifully bowled. Extra quicker. That's why I already mentioned about that. The bowling action of G1 looking so good. It's a smooth bowling action, and when he was delivering the ball, the last moment he getting extra pace because of his just generating extra speed in his bowling. Just he's starting slowly with the one jump, and look at the way he's delivering the ball. Right arm again, lovely delivery indeed. Right on the block hold. Batsman managed to got a bat onto that. Negotiated very well in the last moment because it was a Yorker line delivery there from G1. The batsman negotiated very well in the last moment. He's got a bat onto that. So with that single score, was on to 47 on the board for the loss of 4 wicket. So far it's a good last over from G1, but the job is which is not yet over. Alright, I'm over the wicket bounce. This time went for the big shot, but again the ball missing the bat. They're going for the run. We wait for the umpire signal. It's no signal, means it's the inside edge of the bat. One more addition to total addition of that single score numbers on to 48 on the board. This is the over number 47 or 48? 48 on the board. This is the final over is in progress. And it looks like the final delivery of their innings as well. Right arm over the wicket. Going for the big drive, but not more than a single chance of run out as well. Going for the run out chance, but this time opportunity of run out in the non-strikers and is gone.
Just a single run in the last over and a wicket in the form of run out as well. Fantastic last over there from G1. Bowled with good line and length, not really giving any opportunity for the batters to freeze the arm. The over number 6 which is completed. So but still it's Yekkur Baba must be pleased with this total score of 49. It's a good score, and just 50 which is a target for team Yekkur Blasters to win this match, and wait and see how well Yekkur Blasters will going to get this 50 in the stipulated 6 overs. That means 36 ball 50 runs which is required, and run rate is almost 8.17 runs per over the required run rate in the beginning itself, and wait and see how the Yekkur Blasters will going to get this 50 runs to win this match, and wait and see how team Yekkur Baba will going to justify this total. So far I think that the 3 sixes which is the big factor in this match, and wait and see how well the Yekkur Blasters will going to get this run. So before the innings will going to start off team Yekkur Blasters, I would like to take a short break here, but I would like to invite again Zakir for the further explanation of the match in our national language, Hindi. It's over to Zakir. Thank you. हेलो, धन्यवाद सतीश जी, बेहतरीन तरीके से मैच का आंखों देखा हाथ सुनाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय जुबान पर। इस प्रकार देखिए, बहरहाल मैच की ओर चलते हैं। पहले बल्लेबाजी कर यक्कुर ब्लास्टर्स ने यक्कुर बाबा टीम ने 39 रन जोड़े हैं और 50 रनों का लक्ष्य रखा है टीम यक्कुर ब्लास्टर्स के आगे। क्या यक्कुर ब्लास्टर्स इस लक्ष्य को पाने में कामयाब हो पाएगा, ये तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल दूसरे छोर पर टीम यक्कुर बाबा के खिलाड़ी मैदान पर उतर चुके हैं क्षेत्र रोशन करने के लिए, और इस मैच की इस निर्णय के रूप में हरीश बजाल और उनके साथ देते हुए दीक्षित बंदेल काफी बेहतरीन तरीके से अपने कार्य को निभाते हुए इन दोनों निर्णायक और इनके साथी भी डगआउट पर बैठे हुए रवि उपला। अच्छा खासा लक्ष्य, 50 रनों का लक्ष्य अच्छा खासा लक्ष्य माना जाएगा कुल मिलाकर 6 ओवर के मैच पर। यक्कुर फिल्म से आयोजित किया हुआ सन 2022 का लगातार दूसरा सीजन प्रगति पर चलता हुआ यक्कुर प्रीमियर लीग दूसरा मैच यक्कुर ब्लास्टर्स बनाम टीम यक्कुर बाबा की दरमियान। खिलाड़ियों से गुजारिश करते हैं कृपया जल्दी से जल्दी इस मैच को खेला जाए, क्योंकि बहुत से मैच खेलना अभी भी बाकी है। इस वजह से समय के अभाव के कारण कृपया करके जल्दी से जल्दी मैच को खेला जाए। यक्कुर ब्लास्टर्स की सलामी जोड़ी मैदान पर उतर चुके हैं बल्लेबाजी करने के लिए। स्ट्राइक रन पर जमाल और नॉन स्ट्राइक रन पर सचिन, दोनों सलामी बल्लेबाज।
ऋतु वैकम्बारी को पहले और सौंपा गया है। टीम मैच शुरू होने के इशारा देते हुए कृपया मैच जरूर जमाल स्ट्राइकिंग पर, नॉन स्ट्राइकिंग पर सचिन और गेंदबाज ऋतु तैयार। पहली गेंद पुल कर दिया, काफी बेहतरीन शॉट, वहां पर पीछे काफी बेहतरीन शॉट। क्या बेहतरीन तरीके से इस पारी का आगाज किया है जमाल ने। तारीफ है काबिल। जिस काम के लिए भेजा गया है टीम की कप्तान ने जमाल को, उसका आगाज उन्होंने कर दिया है छक्के जड़कर। इस 6 रन के साथ रनों का सिलसिला यहां पर शुरू हो चुका है। स्कोर बोर्ड पर 6 रन बन चुका है, जबकि बिना कोई नुकसान पर पहले गेंद पे ही और ऋतु दूसरी गेंद लेकर और समझबूझ के साथ गेंदबाजी, अपने गति का पूरी तरीके से परिवर्तन किया है। आखिरी मौके पर गेंद की रफ्तार को कम कर गेंदबाजी की है। समझबूझ के साथ गेंदबाजी इस समय करते हुए ऋतु। समझदारी दिखाना खासकर क्रिकेट जैसी खेल में अच्छी बात होती है और इस समय जमाल एक अच्छी अनुभवी युवा बल्लेबाज है। मैं पहले भी देख चुका हूं जमात की बल्लेबाजी को, काफी बेहतरीन तरीके से बल्लेबाजी करते हैं अपने टीम के लिए। जिस टीम के भी खेलते हैं पूरी तरीके से जान झोंक लेते हैं अपने टीम के लिए। ऋतु पहली और दूसरी बार जमाल के लिए। इस समय अच्छी गेंद, अच्छी वापसी, काफी बेहतरीन लाइन और लेन से गेंदबाजी करते हुए, काफी बेहतरीन वापसी मैं कहूंगा। पहली गेंद छोटी गेंद फेंकने के बाद दूसरी 2 लगातार गेंद थी, समझबूझ के साथ गेंदबाजी कर रहे हैं यहां पर। तो आखिरी मौके पर अपनी गति को बदल दिया है गेंदबाज ने और आसानी के साथ ढकल दिया है पॉइंट की दिशा पर जमाल ने, सिर्फ 1 रनों के लिए। और इस 1 रन के साथ रन संख्या बढ़कर बन चुका है 7 रन पहली ओवर की चालती पर। इस समय पहली बार सामना करने के लिए तैयार है। बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं इस समय। पावर प्ले प्रगति पर चलता हुआ सिर्फ 2 ही क्षेत्र रक्षकों को 30 गज के दायरे के बाहर तैनात किया जा सकता है और क्रिकेट बल्लेबाजों का फायदा उठाने के लिए इस समय समझबूझ के साथ गेंदबाजी, अच्छी वापसी, रन आउट होने का खतरा था लेकिन बाल बच गया वहां पर। फिर से 1 रन जुड़ता हुआ 8 रन बन चुका है पहले की छाती पर। सचिन ने, मैं पहले भी जिक्र कर चुका हूं कि अच्छी गेंदबाज है ऋतु। छक्का भले ही पड़े पहले गेंद पे, बेहतरीन तरीके से वापसी की है अपने टीम के लिए। जमाल एक बार फिर से तैयार। फिर से धीमी गति की गेंद हल्के तरीके से ढकल दिया है शॉर्ट थर्ड मैन की दिशा पर। गली कहना ठीक रहेगा और इसी के साथ ओवर की मुकम्मल हो चुका है। पहली ओवर के मुकम्मल के बाद रन संख्या बढ़कर बन चुका है 9 रन है, जबकि बिना कोई नुकसान पर। अच्छी शुरुआत यहां पर देते हुए दोनों सलामी बल्लेबाज। और इस मैच के तीसरा मैच जो कि खेला जाएगा इस दिन का, होज वॉरियर्स बनाम जीएस टाइटंस की बीच है। इन दोनों कप्तानों से गुजारिश है, दरख्वास्त है, रिक्वेस्ट है, आप कहां जाएंगे, क्योंकि टॉस के लिए अपने कप्तान कृपया कमेटी बॉस पर संपर्क करें। और बहरहाल मैच की ओर चलते हैं। कीर्तन गेंदबाजी की कार्य सौंपा गया है टीम के कप्तान ने और उठा दिया है। काफी बेहतरीन, लाजवाब, खूबसूरत शॉट। काफी बेहतरीन तरीके से जमाल बल्लेबाजी करते हुए अपने टीम के लिए। कीर्तन जैसे गेंदबाजी को इस तरीके से छक्के मारना काफी आसान नहीं होता है, क्योंकि कीर्तन एक बेहतरीन गेंदबाज है। क्रिकेट जैसे फॉर्मेट पर काफी अनुभवी गेंदबाज है। कहीं मैच हर जगह जाकर खेलते हुए
राज्य लेवल के मैच पर खेलते हुए कीर्तन और उसी तरीके के बल्लेबाज जवाब दिया है जमाल ने। उभरता हुआ सितारा कहना ठीक रहूंगा जमाल के बारे में, जो वो खिलाड़ी बल्लेबाजी करते हुए आ रहे हैं अब तक अपने टीम के लिए तारीफ है काबिल। उसे उठाना चाहते थे, आखिरकार बेहतरीन तरीके से अपना बदला जो के निकाला है कीर्तन ने। मैंने पहले भी कहा था कीर्तन जैसे गेंदबाजों को आसान नहीं होता है छक्का जड़ाना, और उसका भरपूर जो जवाब दूसरी गेंद पर कीर्तन ने दिया है जमाल को, और काफिले तारीफ काबिल यहां पर मैं कीर्तन का भी करूंगा। अच्छी वापसी कीर्तन द्वारा, और पहला झटका यहां पर गिरता हुआ, बहुत बड़ा झटका कहना ठीक रहेगा। 15 रन की कुल पर जो शुरुआत की दरकार थी टीम के लिए, अपना काम भरपूर तरीके से निभाकर अपने पैदल वापस लौट चुके हैं जमाल। जो जिम्मेदारी सौंपी गई थी टीम के कप्तान ने जमाल को, उनके उम्मीदों पर जरूर उतर पाए हैं। कीर्तन फिर से तैयार, और फुलटॉस गेंद यहां पर हल्के तरीके से ढकेल दिया है शॉर्ट लॉन्ग ऑन की दिशा पर, रन की कोई गुंजाइश नहीं। रजत का आगमन हुआ है नए बल्लेबाज, और यहां पर उठाना चाहते थे लेकिन सही तरीके पे बल्ले पे नहीं आई थी। एक रन दौड़कर पूरे कर चुके, 2 रन भागना चाहते थे, वहां पर रन ढूंढने खतरा हो सकता था होना, और इस समय बिना वजह रन्स दौड़ने की दरकार में सचिन अपने विकेट के खोते हुए रन आउट के रूप पर सचिन की बारी समाप्त होती हुई नजर आ रही है। हालांकि एक रन दौड़कर पूरे कर चुके थे, दूसरे रन भागने की दरकार में हां या हां ना के बीच पर आखिरी मौके पर सचिन अपने विकेट खोकर पवेलियन वापस लौटते हुए, लगातार दूसरा झटका यहां पर, अच्छी वापसी वहां पर यक्कुर टीम यक्कुर बाबा की खिलाड़ियों ने मिलकर, और उनको उठाने के बाद इमरान कोडी आए हैं नॉन स्ट्राइक पर अपने कदमों को बढ़ाते हुए क्रिस की ओर। रजत और इमरान दोनों बल्लेबाजी करते हुए इस समय कीर्तन अच्छी गेंदबाजी करते हुए कट कर दिया है। 1 रन दौड़ना चाहते थे, वहां पर फिर से दौड़कर 1 रन पूरे कर चुके हैं, और इस 1 रन के साथ रन संख्या बढ़कर बच चुका है 18 रन। पावर प्ले चलता हुआ, आखिरी गेंद 18 रन, 18 ऑन द बोर्ड। ओके 17 या क्षमा चाहेंगे, सरकार से जरा सा चूक हुई, और इस ओवर की आखिरी गेंद फेंकने के लिए तैयार, पावर प्ले का आखिरी गेंद सामना करने के लिए तैयार बल्लेबाज इमरान। आगे कर उठाना चाहते थे लेकिन सही तरीके से बल्ले पे नहीं आई गेंद। 1 रन जरूर खाते में जुड़ता हुआ, इसी के साथ लगातार दूसरा ओवर की समाप्ति होते हुए, दूसरे ओवर की समाप्ति के बाद रन संख्या बढ़कर 18 रन यहां पर बच चुका है, जबकि 2 विकेट गिरने के बाद यानी 9.00 के औसत से रन रेट बरकरार है इस समय,
बहरहाल इस समय 24 गेंदों पर 32 रनों की दरकार है इस मैच को जीतने के लिए यक्कुर ब्लास्टर्स को। और गेंदबाजी की जिम्मेदारी सौंपा गया है गेंदबाज ऋतु। अपना कोटा समाप्त करने के लिए वापसी बुलाया गया है ऋतु को। सामना करने के लिए तैयार इमरान कोरी कट करना चाहते थे, समझ बूझ के साथ इस समय गेंदबाजी करते हुए डॉट गेंद अच्छी साबित होते हुए टीम यक्कुर बाबा के लिए, क्योंकि मैच जो कि संघर्षपूर्ण होने का संभव है। कट कर दिया है यहां पर पॉइंट की दिशा पर। 1 रन खाते में जुड़ता हुआ इस 1 रन के साथ रन संख्या बढ़कर बन चुका है 19 रन में 2 विकेट गिरने के बाद। तीसरी ओवर की छाती पर होज वॉइस की कप्तान और जिया स्टेशन कप्तान से गुजारिश है कृपया कमेटी बॉक्स में संपर्क करें टॉस के लिए। यहां पर लो पुल टॉस गेंद थी, पूरी तरीके से यहां पर फायदा नहीं उठा पाए बल्लेबाज रजत। धीमी गति की गेंद थी, समझबूझ के साथ डॉट गेंद अच्छी साबित होते हुए टीम यक्कुर बाबा के लिए, क्योंकि हर एक गेंद दबाव जो कि बढ़ा सकता है बल्लेबाजों के ऊपर है। क्योंकि इस समय मैच जो कि मेरे नजरिए में फिलहाल 50-50 पर है। इस समय कवर के दिशा पर ड्राइव कर दिया है, वहां पर कवर के दिशा 1 रन दौड़कर पूरे कर चुके हैं। 2 रन भागना चाहते थे लेकिन काफी बेहतरीन तरीके के साथ ड्राइव किया था और फयाज के जो शॉट 100 कवर की दिशा पर तैनात थे उनके सर के ऊपर गेंद जाकर सीमा रखी की और जाकर आखिरकार दम तोड़ दिया है। 4 रन इस समय काफी महत्वपूर्ण रन यहां पर खाते में जुड़ता हुआ। ಅಂಪೈರ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನಿಯಮದ ಪ್ರಕಾರ ಗೂಢರಕ್ಷಕ ಸುಚಿನ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಪಾದರಕ್ಷೆಯನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಹೊರಗೆ ಇಟ್ಟು ಈ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆಡಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. धीमी गति गेंद पकड़ने के बाद वहां पर सचिन ने पूरी तरीके से गैदर करने में चूके वाइड का इशारा देते हुए हरीश पटेल अपने हाथों को फैला कर 2 और रन खाते में जुड़ता हुआ इन 2 रन साथ रन संख्या बढ़कर बन चुका है 25 रन 25 ऑन द बोर्ड। और वहां पर स्वीप करना चाहते थे लेकिन शायद पैरों पर लगी गेंद। अंपायर ने लेग बाइस का इशारा देते हुए फिर से एक और अतिरिक्त रन खाते में जुड़ता हुआ 26 रन स्कोर बोर्ड पर। रजत इस समय सामना करने के लिए तैयार और वहां पर गेंदबाजी की कार्य यहां पर निभाते हुए ऋतु कवर की दिशा पर ड्राइव कर दिया है काफी बेहतरीन तरीके से। 1 रन दौड़कर पूरे कर चुके हैं और इसी के साथ ओवर की मुकम्मल हो चुकी है। लगातार तीसरी ओवर के मुकम्मल के बाद रन संख्या बढ़कर बन चुका है 27 रन, जबकि 2 विकेट के नुकसान के बाद। यानी इसका मतलब है बचे हुए 18 गेंदों पर 23 रन की दरकार है इस मैच को जीतने के लिए। यक्कुर ब्लास्टर्स को काफी संघर्षपूर्ण मैच होने का संभव है। इस समय कुछ भी कहना ठीक नहीं रहेगा क्योंकि जब तक क्रिकेट की इस पारी की आखिरी गेंद फेंके नहीं जाएंगे इस मैच के बारे में कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि क्रिकेट एक अनिश्चितताओं का खेल है। इसे अब तक कोई नहीं समझ पाया है। कुछ ही क्षणों पर कहीं ना कहीं इस मैच का जो निर्णय है ये तो वक्त ही बताएगा।
फिलहाल गेंदबाजी की कार्य सौंपा गया है टीम की कप्तान ने संजय, जो कि बाएं हाथ के संजय जो कि बाएं हाथ के गेंदबाज है, काफी बेहतरीन गेंदबाज है, इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि मैं पहले देख चुका हूं इस गेंदबाज को। क्या जिम्मेदारी लेकर इस समय गेंदबाजी करने के लिए आए हैं संजय, क्या अपने कप्तान के उंगली पर खड़े उतर पाएंगे, ये तो वक्त ही बताएगा। जो जिम्मेदारी जिस विकेट की दरकार है गेंदबाजों को, वो तराशने के लिए आए हैं इस समय संजय। कट कर दिया है वहां पर लॉन्ग ऑफ की दिशा पर, क्षेत्र सीमा पर तैनात, आसानी के साथ 1 रन दौड़कर पूरे कर चुके। इस रैंकिंग के साथ रन संख्या बढ़कर बन चुका है 28 रन। इमरान तैयार, अच्छी गेंद कट कर दिया है, काफी समझबूझ के साथ इमरान ने 1 रन दौड़कर पूरे कर चुके हैं। देखना पड़ेगा अंपायर का इशारा क्या हो सकता है। 2 रन का इजाफा यहां पर मिलता हुआ, काफी समझबूझ के साथ काफी हद तक इस पारी को संभालते हुए इन दोनों बल्लेबाज मिलकर अपने टीम के लिए। अगला मैच जो कि खेला जाएगा होस्ट वॉरियर्स बनाम जीएस टाइटंस के बीच। जीएस टाइटंस की कप्तान ने टॉस को जीतकर पहले गेंदबाजी की फैसला यहां पर किया है और इस समय संजय तैयार, हाईवे एंड से शॉट गेंद भूल कर दिया है, गेंद सीमा रेखा पार हो चुकी है। देखना पड़ेगा, झाड़ लगकर गेंद वापस आई है। 1 रन दौड़कर पूरे कर चुके हैं, 2 रन दौड़कर भी पूरे करते हुए इन दोनों बल्लेबाज मिलकर काफी महत्वपूर्ण 2 रन खाते में जुड़ता हुआ। इस 2 रन 7 रन संख्या बढ़कर बन चुका है 32 रन, 32 ऑन द बोर्ड। चौथी ओवर की छाती पर संजय तैयार, उठाना चाहते थे लेकिन ब्लॉक हॉल पर थी गेंद, पूरी तरीके से छुके बल्लेबाज इमरान, सीधे विकेट कीपर सचिन के दस्ताने में गेंद, रन की कोई गुंजाइश नहीं वहां पर। इस समय डॉट गेंदें काफी अच्छी साबित होते हुए टीम यक्कुर बाबा के लिए, क्योंकि हर एक डॉट गेंद दबाव जो कि बढ़ाता हुआ ब्लास्टर्स को, बल्लेबाजों को उठाना चाहते थे वहां पर, लेकिन जोरदार अपील थी, लेकिन निर्णायकों के ऊपर कोई दबाव नहीं वहां पर। पूरी तरीके से नकारते हुए दीक्षित बोंदेल इस आउट को लगातार दूसरी गेंद में डॉट होते हुए अच्छी साबित होते हुए टीम यक्कुर बाबा के लिए हर एक डॉट गेंद मैं पहले भी यहां पर कह चुका हूं, दबाव जो के बढ़ाते हुए इमरान और टीम ब्लास्टर्स को फुटबॉल गेंद वहां पर डीप स्क्वायर की दिशा पर तैनात है क्षेत्र रक्षक, लेकिन 2 रन लेने से नहीं रोक पाएंगे। काफी महत्वपूर्ण 2 रन खाते में जुड़ता हुआ। इसी के साथ ओवर की मुकम्मल, लगातार चौथी ओवर के मुकम्मल के बाद रन संख्या बढ़कर बन चुका है 34 रन, यानी 34 ऑन द बोर्ड, द कंप्लीशन ऑफ 4th ओवर। यानी मैच इस समय बराबरी की स्तर पर हो चुका है। 12 गेंदों पर 16 रन की दरकार है इस मैच को जीतने के लिए टीम यक्कुर ब्लास्टर्स को। विकेटों की कोई कमी नहीं है क्योंकि सिर्फ 2 ही विकेटें गिर चुकी है। आक्रमण रूप अपनाना होगा इन दोनों बल्लेबाजों को, क्योंकि अगर मैच विजय की ओर जाना है तो, क्योंकि मुश्किल है जरूर लेकिन नामुमकिन नहीं, कुछ भी हो सकता है। जो मुश्किल स्थिति पर खड़ा होता है वही जो कि इस समय हर खिलाड़ी का ना कद बड़ा होता है ना पद बड़ा,
जो मुश्किल में करा वही सबसे बड़ा। क्या रजत वो काम अपने टीम के लिए कर पाएंगे, ये तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल संघर्षपूर्ण मैच होने का संभव है, इसमें कोई दो राय नहीं है। सचिन को गेंदबाजी की जिम्मेदारी सौंपा गया है टीम के कप्तान ने। क्या सचिन विकेट लेने में कामयाब हो पाएंगे, यह तो वक्त बताएगा। फिलहाल वहां पर अच्छी गेंदबाज है सचिन। इस समय हर एक डॉट गेंद दबाव जो कि प्रेशर बढ़ाता हुआ रजत को, क्योंकि 11 गेंदें बाकी है, सिर्फ 16 रनों की दरकार है इस मैच को जीतने के लिए यक्कुर ब्लास्टर्स का गो। दर्शक जो के भरपूर आनंद लेते हुए इस मैच का। कांटे की टक्कर यहां पर चलता हुआ इन दोनों टीमों के बीच। फयाज जो के एमएफसी विकेट कीपर पर क्षेत्र रक्षण जो के सजाते हुए, और अच्छी गेंद वहां पर ऑन डीप स्क्वायर की दिशा पर फ्लिक कर दिया है। 1 रन दौड़कर पूरे कर चुके हैं और इस 1 रन के साथ रन संख्या बढ़कर बन चुका है 35 रन। 15 रन की दरकार है इस मैच को जीतने के लिए। समय ऑप्शन से काफी दूर वाइड का इशारा देते, इस समय वाइड गेंदे अतिरिक्त रन देते हुए काफी बुरी बात है, क्योंकि मैच के संघर्षपूर्ण होने का संभव है, इसलिए अच्छी गेंदबाजी करना जरूरी है। वहां पर पैरों पर लगी गेंद और अंपायर की उंगली उठी, और इस बीच जिसकी दरकार थी, जिसकी विकेट तलाश रहे थे, जिसका जिक्र मैं पहले भी कह चुका हूं, जो जिम्मेदारी सौंपा गया था टीम कप्तान ने सचिन को, और भरपूर तरीके से यहां पर निभाते हुए आखिरकार विकेट लेने में कामयाबी मिलती हुई सचिन को, और तीसरा झटका यहां पर गिरता हुआ इमरान के रूप में। इमरान के आउट होने के बाद नए बल्लेबाज हमजा उजरे का आगमन हुआ। इस समय अपने धीरे धीरे कदमों को बढ़ाते हुए क्रीज की ओर। सचिन विकेट लपक लिया है इमरान के रूप पर, और इस समय बल्लेबाजी करने के लिए आए हैं हमजा उजरे। इमरान का स्थान भरने के लिए और रजत का जो के साथ निभाने के लिए इस समय सचिन एक बार फिर से तैयार। हाईवे एंड से उठाना चाहते थे, काफी समझबूझ के साथ गेंदबाजी करते हुए सचिन, जिसकी दरकार थी, जिसकी जिम्मेदारी सौंपी गई थी टीम के कप्तान ने, भरपूर तरीके से उस काम को, उस कार्य को यहां पर निभाते हुए ड्राइव कर दिया है लॉन्ग ऑन की दिशा पर। 1 रन दौड़कर पूरे कर चुके हैं, 2 रन भागना चाहते थे, लेकिन गेंद सीमारे के पार हो चुके हैं 4 रनों के लिए। काफी महत्वपूर्ण 4 रन इस समय मैं कहूंगा पूरी के तरीके से, चूंकि वहां पर क्षेत्र रक्षण लॉन्ग ऑन की दिशा पर जहां पर 2 रन मिलने चाहिए थे, वहां पर चौका दे बैठे, और इस 4 रन की मदद से स्कोर कार्ड पर बन चुका है 40 रन, 40 ऑन द बोर्ड। चालीस रन यहां पर बन चुका है, 10 रनों की दरकार है बचे हुए 7 गेंदों पर। उठा दिया है गेंद सीमारे के पार, बेहतरीन छक्का, लाजवाब बेहतरीन तरीके से हमजा ने छक्का जड़ा है अपने टीम के लिए, और इस 6 रन के साथ रन संख्या बढ़कर बन चुका है 46 रन, 46 ऑन द बोर्ड।
सचिन ने काफी हद तक बेहतरीन तरीके से गेंदबाजी की थी, लेकिन आखिरी 2 गेंद पर 10 रन दिए। उस वजह से इस मैच अब पूरी तरीके से ब्लास्टर की तरफ झुक चुका है। सिर्फ 6 गेंदें बाकी है और 4 रनों की दरकार है इस मैच को जीतने के लिए। क्या ऐसा गेंदबाज मौजूद है टीम यक्कुर बाबा की तरफ से जो इस 4 रन को रोक पाएंगे? फयाज उल्लाल को गेंदबाजी की कार्य सौंपा है। टीम के कप्तान ने इस आखिरी ओवर फेंकने के लिए 4 रन, सिर्फ 4 रन बचाना है टीम फयाज को। कुछ नहीं कह सकते क्योंकि जब तक इस ओवर की आखिरी गेंद फेंके नहीं जाएंगे इस मैच के बारे में हम कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि क्रिकेट एक अनिश्चितताओं का खेल है। इसे अब तक कोई नहीं समझ पाया है। क्या रजत हमजा ने इस मैच को पूरी तरीके से तख्ता जगह पलट चुके हैं। इस समय फयाज को गेंदबाजी की कार्य सौंपा है टीम के कप्तान ने। वहां पर कैच हो सकता था, गेंद इसी मारे कि ये जाती हुई 4 रन, और इस 4 रन की मदद से इस मैच को यक्कुर ब्लास्टर्स ने जीतकर 2 अंक प्राप्त किया है। मैं धन्यवाद देता हूं और काफी संघर्षपूर्ण मैच था। सचिन की पहले 4 गेंद काफी बेहतरीन तरीके से फेंकी गई थी, लेकिन अंतिम 2 गेंदों में 10 रन दिए, चौके और चौके देकर इस मैच का रुख जो के पूरी तरीके से पलट चुके थे। और क्या लाजवाब मैच था। मैच हो तो ऐसा हो, संघर्ष हो, हर एक मैच में संघर्ष हो, क्योंकि क्रिकेट इसे ही कहते हैं। अगर एक तरफा मैच हो तो दर्शकों को भी मायूसी होती है, क्योंकि इस वजह से हर मैच संघर्षपूर्ण होना सख्त जरूरत है। और बहरहाल यहां पर मैच खत्म हो चुका है और तीसरा मैच यहां पर शुरू होने जा रहा है कुछ ही क्षणों पर। होज वॉरियर्स बनाम जीएस स्टेशन के बीच और पिछला मैच का यानी इस मैच का मैन ऑफ द मैच पुरस्कार जाता है हमजा उजरे को, जो क्या लाजवाब पारी खेली थी अपने टीम के लिए। और उन्हें देने के लिए मैं यहां पर बुलाना चाहूंगा मेरा टाइगर अल्ताफ। टाइगर अल्ताफ सभी हमारे गेस्ट हैं आज के, वो कृपया करके हमजा उजरे जी को ये मैन ऑफ द मैच पुरस्कार भेंट करें। आज के हमारे जो कि मेहमान हैं, आज के मेहमान अल्ताफ टाइगर ने हमजा उजरे को मैन ऑफ द मैच पुरस्कार से भेंट किया है। और जब तक अगला मैच शुरू हो मैं यहां पर आमंत्रित करना चाहूंगा मेरे साथी कमेंटेटर जो कि अंतरराष्ट्रीय जबान पर मिस्टर सतीश जी को। धन्यवाद। ಜಂಡು ವಿಕೆಟ್ ಇಡ್ತಾರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ವಿನ್ ಹಾಕಿತ್ತು ಸಿಚುವೇಶನ್ ಪತ್ರ ನೈಲೆ ಇರ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ
ಅದಲೇಂದ್ರೆ ಬಂತ ಅವನೇ ಬಂದ Welcome back. Thank you very much, Zakir. So back to this match number 3 of this day number 1 of this prestigious cricket tournament. And meantime, the Oz Warriors, after winning the toss, elected to ball first against Juice Titans. They will go into bat first here and wait and see how Juice Titans will going to get a score here. Juice Titans field actually. Oz Warriors. So Juice Titans, after winning the toss, selected to field first, so that Oz Warriors are going to the bat first. So opening batters are walking towards the middle. What a fantastic second match, and it's a very good match, very close finish, and at last team Yekkur Blasters, they're able to handle the pressure in the last 2 overs, and especially the Jamal and then Hamza in the end. They managed to perform very well for the team and responsible for the victory. Ramiz and Naeem are the 2 opening batters are in the middle. Ramiz will go into face his first delivery and is in Saiga's end. Yash Bengre will go into ball the opening over, the power play over. Is a very, very important for any team. Yash Bengre, umpire signaling towards our scorer. Please note the time. It's 12:42, and it's 12:42 exactly in the afternoon, and it's a very sunny and very hot afternoon out here in this prestigious cricket tournament. And the match number 3 is in progress now, and Yash will going to start a fresh over with a short runner from the highway end. And the batsman Ramiz will go into take the strike with a jersey number 10. There is short fine leg, short square leg, deep mid wicket, short mid on, deep long on, short mid off, short extra cover, short cover point. There is a backward point, and that's a field set for the right-hander batsman Ramiz. First ball, Yashu starts with the delivery, lovely lifting of delivery there from Yashu, just using his height very well, and Rami is looking for the blind stroke in the occasion without coming into the line of delivery, misses the line completely. Then wicketkeeper behind the stump did the rest, and there is no chance of any run. Yashu, right arm over wicket bounce. Oh, this time magnificently bowled. Again, this time that ball just moving from the good length spot. He's just reading the mind of the batsman very well, Yashu, seeing that Rami is looking for some aggressive cricketing stroke, but the bowler is so good in that occasion, just shortening the length. They were just moving the ball from the good length spot away from the right-hander batsman. 2 very good deliveries to start with. Yashu, third time in this over. This time, chance and opportunity for the square leg fielder, and he takes the catch. Rami is back into pavilion. This is the result of frustration, isn't it? And the pressure. After that, 2 very good deliveries, as Ramesh wanted to break the shackle in the occasion, tried to pull that one, but not quite getting that one from the middle of the bat. Got a top edge, and the square leg fielder making no mistake at all. It's a good start there from Yashu. A positive start after bowling 2 very good deliveries, just putting the batsman under pressure. And he bowled 1 good delivery after that, followed by that 2 dotted deliveries. And you know exactly, if he bowled 1 good delivery in that situation, the condition, got opportunity to take the wicket. And is the new the batter walking towards the middle with the jersey number 5. Not a good condition to walk.
for any batters, because number 3 position is always a key. It's a very difficult position because once they're falling quickly the first wicket, the number 3 batter have to handle the pressure. And here is Yashu. The straight away the first ball he was looking for the reverse stroke, but he managed to complete the single indication. Not quick work there from that fielder at short cow point, because it's a very interesting that the batter Anish in his first ball itself he just trying for the unorthodox cricketing stroke, that is a reverse stroke, but luckily he's just safe in the negation. So first run comes up for team O's Warriors. Right arm down the wicket. This time swinging that one, but ball is just missing the bat. Wide call by umpire, rightly so. Going down the leg stump further away with that extra scoreboard. Namozan to 2 on the board for the loss of 1 wicket. Yashu once again back to his bowling mark. The first time Hani is facing the bowling of Yashu. Round the wicket, right arm. Ball this time full set one, not quite getting hold of that one properly, but ball definitely going to land safely between the mid wicket and short mid wicket. Before the fielder from short mid wicket to run back to field that one, ample time for the batter to complete the single. So with that single score, Namuzan to 4 on the board for the loss of 1 wicket here in over number first in progress. So far it's a good over, quite over there from Yashu, and just implementing his all experience what he has got behind him. Such a fantastic performer. Especially it's a very difficult to handle the pressure when you're bowling the power play over. This time again the slower one, change of pace, but not really able to control the line. Wide call by umpire, rightly so. Yashu just having a confusion. He just thought that ball is got a part of the body of maybe he's thinking about that handle, and a little bit correction. It's a handle of the bat, but ball missing the bat completely, and rightly so umpire Ravi Uppada called that wide. Again much quicker delivery to finish the over number first. After completion of over number first, excellent start there from Yashu. It's just 5 on the board by losing 1 wicket, and House Warriors searching for the right track, but they lost the first wicket cheaply for 0, and after that they scored 4 valuable runs. So 4 without loss of any wicket for the latecomers. You're watching match number 3 of the day number 1 of this prestigious Yekkur Premier League 2022 in this most beautiful Fisheries cricket ground here in Yekkur. The ground which is covered with the greeneries, the trees around the ground, and one fantastic view of this ground is just behind the highway. This time again nicely driven and right in the gap towards the deep mid wicket region, almost down towards a cow corner, and between the deep mid wicket and the long on, between that field, between that region, they got runs there. The good placement as well there from the batsman Anis, and he picked up a couple of runs for that. With that couple of runs scored, Namuzan to 7 on the board. Just picking that line and length so quickly by Anis, placing the ball down to mid wicket. Chetan. They tried to swing that one, but the ball is not really coming to the bat. Hardly into the slower one there from Chetan. Good change of pace in the negation there from Chetan, and there is no possibility of any run. Chetan's intention is, exactly what batsman will going to do here. The batsmen know exactly this is the second and last over of this power play. They wanted to take advantage of that fielding restriction. This time again, not quite getting a hold of that one properly. Scarlet fielder will going to take. Drops a catch. He's taken that quite lightly, isn't it? He's taken that catch quite lightly, so that he couldn't manage to take the catch. Look at the way that the fielder is dropping the catch. I want to see it in the replay. The batsman tried to pull that one, got that top edge, and Squall fielder almost is in a short fine region. Almost tried to finish the catch left off Squall umpire, but ball is just missing his hands and hitting the palm of his hands. Ball is just slipping out of his hand. The life straight away for the batter. 8 on the board. This time just using his feet, but not really able to defeat that infield. And a shot of mid-off fielder collects the ball, and there's no possibility of any run. Naeem will go into face. Chetan
It's back to his bowling mark. Short run up. Bowling right arm over the wicket. This time again. Oh my goodness. Can you believe this? The fielding is not up to the mark there from the fielder at short fine leg. Again, what could be a certain dotted delivery because of that misfield. The batter has got opportunity to toss off for a single. With that single score, numbers on to 9 on the board for the loss of 1 wicket. Frustration for the bowler, isn't it? They drops the catch, wherein not only they drops the catch, but they conceded runs. And again, there's one misfield there by the short fine leg fielder, and 1 run taken. This time, this is a healthy edge. Absolutely, you can hear the sound quite clearly towards the commentary box as well. That means it was a healthy edge from the bat of the batter Akeem Anish. In fact, is back into pavilion looking for the big drive on the offside region, but this time excellent delivery there from the bowler Chetan, just pitching the ball outside the line of off time, not let the batsman to reach the pitch of the delivery, just going away from the right-handed batsman, slashing try to hit that one, and face the penalty for that. Wicketkeeper completes the formalities of taking the catch. The wicket number 2, which is back into pavilion of Oz Warriors. The worries which is continues here for the Warriors, as they lost 2 Warriors out of 11, and that's only because of Geo's Titans. The bowlers, opening bowlers, are looking towards some damage in the early stage of their innings. So both the bowlers are sharing the wickets here. 1 wicket each for both the opening bowlers. The 2 overs which is completed, it's 9 on the board for the loss of 2 wicket. The 2 over which is completed now. 4 overs remaining. 24 deliveries remaining, excluding wides and no balls. And wait and see how many runs the Oz Warriors will going to score here. And so far it was a sunny afternoon, the bright and it's a very hot afternoon. Time is exactly 12 past 55, inching towards 1 o'clock in the afternoon. But the condition of this match looks to be very hotter than the weather condition. Both the teams just definitely wanted to win the match of their opening league matches, because winning start from the winning start always gives a lot of confidence for every teams. So 3 brothers are playing in this particular team. It's very interesting. It's one is Anis, who is back into pavilion, his elder brother. Then Naeem, and then the new batsman just came into middle is Shimak. This time ball is in there. The fielder there, the squall aggression, little bit misjudgment. He was not trying for the catch. He can charge to the ball, but he's realizing that if he's trying for the catch, the ball will going to defeat him. So he's just trying for the fielding after 1 bounce, but luckily he just tackled with that bounce, because the wicky ball which is used in this particular tournament is a difficult job for the fielder in the deep. If they're waiting for the 1 bounce, but the chances of ball just defeating the fielder. This time again looking for the mighty drive, but he got a connection down connection, looking for the second. Mid-wicket fielder, so quick in interrogation, denying the second from this to batter. So with that single scoreboard now slowly moves on to 11 for the loss of 2 wicket. Partnership which is much required here for Oz Warriors. They not only look for the partnership, but need to look for the partnership, which is so important to get some good score. Right arm over the wicket. This time going for the drive. Cotton ball chance here for the field. Bowler looks like the once the ball is just slipping out of his hand. But the second attempt, he was not too far away from that ball, and holding the catch in the second attempt. The wicket number 3, which is back into pavilion. So Naeem to depart. Out of 3 brothers, 2 brothers already walks towards walking little bit correction. They're coming towards the pavilion already. The Naeem is back into pavilion now. Anish joining him. So wicket number 3 is back into pavilion at the score of 11. Praneeth is the bowler. Nawaz is the new batsman in, who is walking towards the middle in the non-Sager's end.
opportunity. Correction for Praneeth actually picked up a wickets in the third delivery of his over. Simak will go into face. Nawaz going to face. Oh, this is deliberately just putting his body behind the ball. He's not really understand what kind of delivery. It was a well-directed bouncer from Praneeth. The slower one, the batsman expecting the quicker delivery there from the bowler, but it's excellent bowling there from Praneeth. And batsman not really understand the kind of delivery, and ball just hitting his chest, and there is no chance at all for any run. One fielder now going back towards a deep mid wicket. Almost there is a 3 protection is in the deep. There is a 4 protection in fact in the onside edge and square leg, and mid wicket in the mid wicket and the cow corner. The deep long on, which is deeply square down towards whitish long on. In the offside there is a backward point short, extra cover, short mid off. This time pulls that one towards the deep square leg region, straight to the hands of fielder. This is a well directed bounce. This is really the planning here from Praneeth to ball the short pitch delivery, inviting the batsman to go for the pull shot. The batsman just taking the invitation, pulling that one, but not really getting the distance what he's looking for, as a square leg fielder making no mistake at all. The wicket number 4 is back into pavilion. Nawaz little bit disappointed as he didn't got the distance he's looking for. Hello, just this time ball is in there, no ball called by umpire, and the batsman picked up a single. Jersey number 3, Vinod is came into middle, no ball called by umpire, so that free hit delivery for the batter. So free hit opportunity for Simak to take the advantage of the delivery. Wait and see how Simak will go into take the advantage, and wait and see how Praneeth will go into survive from that free hit delivery. Change in field for that free hit delivery. That deep long deep extra fielder coming inside the ring. The protection, extra protection is given in the onside region towards the mid wicket. Praneeth to Simak. Full toss, but it's a slow full toss. Chance of run out, but the throw is not up to the mark. It's a high throw, wide throw, and batsman completed a single. So with that single, scoreboard numbers on to 14 on the board. 14 for the loss of 4 wicket. In fact, is back into pavilion. So over number 3 completed. It's 14. The run rate is not really that much of healthy enough for Oz Warriors. They are really going very slowly, because the fact behind is that they lost 4 front order batter the back into pavilion. That's why they are really struggling in the middle, and against disciplined bowling from Juice Titans. Juice Titans has got a banner in our left of in front of our commentary box towards a mid wicket and square leg. If any batter are able to hit the 6 in that banner, they will going to get a free training of 1 month, and that's a golden opportunity for the batters to grab the opportunity to hit the banner. The first ball, a lovely delivery to start with, as Yeshu is always so good in his bowling, and he's just hitting hard that good line spot and getting some extra bounce and extra face as well from his bowling. Yeshu. Pulls that one handsomely, and that ball went towards a deep fine leg division court. Unfortunately, we'll go and get a single for that, and not fully controlled stroke. That was a perfect limited over pull, as sometimes we can see in international cricket as well. The batsman trying to hit the ball when the bowler trying to get the bouncer, but this time it's a one more single is added total. With that single, scoreboard numbers on to 15 on the board for the loss of 4 wicket.
15. The ball is gone out of the park. Thanks to the volunteer able to find the ball. It's not so easy when ball travels out of the park, especially behind the wicket. So Vinod is batting on 1 and Simak is batting on 3. Now right arm round the wicket. What a delivery! What a delivery that from Yashu. Absolutely fantastic, isn't it? That shows the experience. Being the experience is not important, but converting that experience into performance, it's so important. And Yashu so far is just outstanding. This time, batsman coming down the track, and he just got that one right from the middle of the bat. Ball just missing the banner. I think ball hits the banner or not. I think ball just missed the banner, and he's just missing the opportunity to getting that free training of 1 month. I don't know what to do to get the training the way that he is hitting the ball. He's already trained here to hitting the ball. Again, outside line of off stump, beautifully ball. Good comeback there from Yashu. This is a very good contest, isn't it? After hitting the ball towards the mid-wicket region for a 6, then Yashu is need to come back, and he came back very strongly with a one perfect good line delivery from Yashu. And Simak once again facing. Again, he's just coming down the track, not quite getting that one from middle of the bat. The way that he is just trying to use his feet, but Yashu shortening the line quite cleverly. And Yashu, after being that punishment which is came from the bat of Simak, and it looks like it's the first expensive over which is bowled by Juice Titans bowler. And I just want to see the bowling figure of Yashu. He bowled 2 overs, no maiden, conceded 13 runs, and he picked up 1 wicket. Economy is exactly 6.5 runs per over, 6.5 runs over. Even I think it's not a bad one for any bowler. When you are considering the fact that you are playing a 6 overs game, 6.5 runs per over is not a bad one for any bowler. It's not a bad figure. So 4 overs completed. It's a 22 on the board. Still the run rate we can see that is a less than 6 runs per over. The exact calculation is concerned is exactly 5.5 runs per over. Arif is a bowler. Has been introduced to bowl the 5th over of the innings of Oz Warriors. Starts with the warm-up delivery of the afternoon as he bowls far away outside the line of off stump. Little bit of warm-up for umpire Ravi Uppala as well. And the white signal, so with that white scoreboard moves on to 23 on the board for the loss of 4 wicket. So bowler back to his bowling mark. Arif is a bowl. The batsman Simak is ready. Is a settled batsman in the middle. This time full toss again, and nicely driven down to Deepak Sekawar. Good piece of fielding there by the fielder, because that ball went very quickly to that Deepak Sekawar region. Just a single for the batter. With that single scoreboard numbers on to 24 on the board. 24 for the loss of a 4 wicket. Arif, the recognized bowler for Juice Titans. This time a lovely delivery, beautifully bowled, well pitched up delivery, just ball going away from the right-handed batsman. After that ball hits a good line spot. The Arif is master of doing that one. You know exactly the kind of line and length to be bowled in this 5th over, the slog overs. Score remains on 24. This time he lofted. He lofted that one right in the vacant area. Will it go into a maximum or not? We have to wait for the umpire signal. And here we go. The signal from Ravi Uppala. That is 6 runs which is came from the bat of the batsman Vinod. Lovely looking drive there from Vinod. It's not an easy stroke to play in the book. On the board. This time lovely delivery, beautifully bowled and excellent delivery indeed. Umpire Ravi Uppala, please note that the tracks of the batter,
They need to be corrected. Thank you. So 30 on the board, 30 for the loss of 4 wickets. Good comeback here by Arif. This time pulls that one beautifully right in the gap, and fielder misjudging that one. It's going to be a boundary. The firework begins here in the slog overs. The much required firework here coming from the batter of Oz Warriors in the name of Vinod. What outstanding hitting there from Vinod. This time is just the placement is exquisite. You know exactly there is a deep backward square, like there is a deep mid wicket, but you need to send between that two fielder. But the total misjudgment there by the mid wicket fielder, just misjudging the movement of the ball, and got the boundary for that for the opposition. 34 on the board for the loss of 4 wicket. This time Vinod looking for one more big shot, but this time bowler Arif is bowled a good line in the negation, little bit bowled away from the bat of Vinod. One more good over going in favor of Oz Warriors. Completion of over number 5. It's 34 on the board. Now run rate is almost just catching that 7 runs, just under 7 runs per hour, and they need to deal with the final over of their innings. Oz Warriors started very slowly. The wickets are tumbling in the middle, but in the last 2 overs they came back very strongly. The match number 4, the final little correction, the 4th match of the day number 1 will be played between Team HS versus Maidan Friends. So that I request both the teams captain, please get ready. If you are completed your signatures, then please report here for the toss. Start of the over number last and starts with the wide delivery. ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು, ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಾಹನ K19ML 5605 ಬೆಲೋನೋ ಕಾರ್ ಅದು ನಮ್ಮ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಅಡ್ಡವಾಗಿ ನಿಂತಿದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಅದರ ಮಾಲಕರು ಆ ಕಾರನ್ನು ಈ ಕೂಡಲೇ ತೆರವುಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ದ ಕಾರ್ ನಂಬರ್ K19ML 5605 ಬೆಲೋನೋ. ಪ್ಲೀಸ್ ಕೋಆಪರೇಟ್ ವಿತ್ ಆರ್ಗನೈಸರ್ಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. Well directed bouncer, but even better punishment there from the batter, and unfortunately we're going to get a single for that, or couple wait for the umpire signal. It's a single. Single, thank you. So with that single, scoreboard numbers on to 36 on the board. Danu is the bowler, is bowling the last over of their innings. ದಯಮಾಡಿ ವಾಹನ ಮಾಲಕರು K19ML 5605 K19ML 5605 ಬೆಲೋನ ಕಾರ್ನ ಮಾಲಕರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ತಮ್ಮ ಕಾರನ್ನು ಅಲ್ಲಿಂದ ತೆರವುಗೊಳಿಸಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರಾಫಿಕ್ಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಿ. K19ML 5605 Belona car owner, please note, you need to remove your car. Lovely delivery, very fantastic one. No ball called by umpire, rightly so, it's going over the head. So that as per the rules and regulation of the cricket is concerned, when it's going over the head, it's definitely going to be a no ball, and with that no ball, scoreboard moves on to 38-7 on the board. This time, and they're going for the pull shot, missing it completely. The wicketkeeper behind the stump, they're appealing for the caught behind. Umpire says not out. Dano back to his bowling mark. This time using his feet and looking for the big stroke down to mid long off region, but it's just a single. Actually, it's a good one there from Dano. The bowling, that beautiful delivery to stop the batsman from the big shot. It's a 38 on the board. 38 for the loss of 4 wicket. Dano.
Pass umpire Dikshit. This time lovely shot. Full set one, but straight to the hands of square leg. Once it looks like the batsman has got that one right from the middle of the bat, but not really getting the distance what he's looking for. As ball travels straight to the hands of deep backward square leg and making no mistake at all. The wicket number 5 is back into pavilion of O's Warriors. It's a 38. The Frax Kotian down at deep backward square leg region, making no mistake at all. In the deep. Takes a catch. It's a 38 for the loss of 5 wickets. Dano, so far it's a good over. The last over is really looks the good one here for Juice Titans. Again, fumble from the field, misfield there from the field. They're coming back for the second, and they managed to complete that couple of runs quite easily in the end. With that couple of runs, scoreboard now moves on to 40 on the board. 40 for the loss of 5 wicket here in over number last in progress. Dunballs looking for the pull shot. The fielder will go into underneath it, and this time he is not making a mistake. The fielder from short mid wicket running towards almost in front of square, and it completes a catch. The last delivery is a wicket for Juice Titans. That means 40, which is a score of O's Warriors. They set a target of 41 to win the match for Juice Titans. And just under 7 runs per over, which is a required run rate for Juice Titans to win this match. And wait and see how Juice Titans will go in to get this 41 to get the victory of their first league match against O's Warriors. O's Warriors, they back very strongly in the last 3 overs, which is belongs to O's Warriors, but the first 3 overs which is belongs to Juice Titans. So altogether it's a good cricket between these two, and wait and see how well these two teams will go into battle for the victory. We'll take a short break here, and before that I once again request Team IHS as well as Maidan Friends captain, please to be reported here. And the players of Maidan Friends still they are not signed. Volunteers, please ದಯಮಾಡಿ ಅಂಪೈರ್ಸ್ನವರಿಗೆ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. So time to change in commentary box as well. It's over to my friend Zakir to take over the microphone in our national language, Hindi. Thank you. हेलो चिक, धन्यवाद क्षितिज जी. बेहतरीन तरीके से मैच का आंखों देखा हाल सुनाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय भाषा में यानी जबान पर मैच जो कि चल रहा है इस समय होज वॉरियर्स और जीएस टाइटंस के दरमियान. होज वॉरियर्स ने पहले बल्लेबाजी समाप्त करने के उपरांत कुल मिलाकर 40 रन जोड़े और 41 रनों का लक्ष्य यहां पर रखा है जीएस टाइटंस के आगे. होज वॉरियर्स के खिलाड़ी मैदान पर उतर चुके हैं क्षेत्र रक्षण करने के लिए, और दूसरे छोर पर अब तक दिखाई नहीं दे रहे हैं दोनों सलामी बल्लेबाज जीएस टाइटंस की. क्योंकि मैच के समय के अभाव है, हम गुजारिश करते हैं जीएस टाइटंस के कप्तान से क्योंकि अपने दोनों सलामी बल्लेबाजों को कृपया बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर भेजें. इस समय दूसरे तौर पर दोनों सलामी बल्लेबाज भी मैदान पर उतर चुके हैं. अशरफ और
प्रणीत और अशरफ दोनों आरंभिक जोड़ी यानी सलामी बल्लेबाज मैदान पर उतर चुके हैं इस लक्ष्य को पाने के लिए। और कुल मिलाकर 6 ओवर की मैच है इस आज के इस दिन का, यानी यक्कुर प्रीमियर लीग आयोजित किया है यक्कुर फ्रेंड्स ने सन 2022 का दूसरा सीजन प्रगति पर चलता हुआ आज का इस पहला दिन का तीसरा मैच जारी होते हुए अशरफ एक अच्छे बल्लेबाज हैं, धुआंधार बल्लेबाज है, आक्रमण रूप अपनाते हैं। अगर वो चल पड़े आज तो जीएस स्टेटस के लिए कोई दिक्कत का सामना नहीं करना होगा, क्योंकि आक्रमण रूप अपनाते हैं हर वक्त हर समय। और उनको रोकने के लिए टीम की कप्तान होज वॉयस की टीम के कप्तान ने नईम को गेंदबाजी की जिम्मेदारी सौंपा है। पहली ओवर लेकर पावर प्ले दूसरा बारी की पहली गेंद और अच्छी गेंद, पहली गेंद डॉट गेंद साबित होते हुए रक्षणात्मक रूप से गेंद को खेला है, सम्मान दिया है अच्छी गेंद का। अच्छी गेंद का सम्मान देना एक अच्छी बल्लेबाजी की निशानी होती है। और इस समय एक बार तैयार अशरफ, इस समय भूल कर लिया है, मैं इससे पहले भी जिक्र कर चुका हूं, अशरफ जो कि एक बेहतरीन आक्रमणकार बल्लेबाज है, अगर वो चल पड़े तो कोई दिक्कत का सामना नहीं होगा इस लक्ष्य को पार करने में जीएस टाइटंस को। और उसी तरीके का सा यहां पर बेहतरीन आगाज जो कि करते हुए अपने टीम के लिए अशरफ के बल्ले से 6 रन यहां पर जुड़ चुके हैं और इस 6 रनों से रनों के सिलसिला यहां पर जो कि शुरू हो चुका है। इस बार उठा लिया, काफी बेहतरीन, लाजवाब, उम्दा, आला, क्या कहना चाहते हैं इस शॉट को, कुछ भी कह लीजिएगा, क्योंकि आखिरकार यहां पर 6 रन जुड़ चुके हैं अशरफ ने। मैं जो कह चुका हूं, आक्रमण रूप अपनाते हैं अशरफ ज्यादातर। क्या लाजवाब शॉट था, बेहतरीन खूबसूरत अंदाज के साथ इस शॉट को खेला है। 100 ओवर के यानी लॉन्ग ऑफ की दिशा पर उठा रहा है और इस समय काफी अच्छी गेंद, फिर से सम्मान देते हुए अच्छी गेंद को अशरफ, वो जानते हैं किस गेंद को फायदा उठाए या ना उठाए। नहीं, और इस बार फिर से उठाना चाहते थे, लेकिन बल्ले का बाहरी किनारा लगकर कवर की दिशा पर गेंद गई और 1 रन लेने से कोई नहीं रोक पाएंगे। और इसे 1 रन के साथ रनों के यहां रन बन चुका है 13 रन पहली ओवर की छाती पर। और अच्छी गेंद, काफी बेहतरीन अंदाज के साथ इस शॉट को खेला है बल्लेबाज प्रणीत ने। और इसी के साथ पहली ओवर की मुकम्मल यहां पर हो चुका है और पहली ओवर के मुकम्मल के बाद रन संख्या बढ़कर बन चुका है स्कोर बोर्ड पर 13 रन, जबकि बिना कोई नुकसान पर। एक अच्छी शुरुआत मैं कहूंगा जो हर टीम की दरकार होती है, जो कि पावर प्ले भरपूर तरीके से फायदा उठाए और उठे भी ना कोई, उसी तरीके की शुरुआत यहां पर देते हुए अशरफ और प्रणीत, खासकर अशरफ की वो 2 छक्के, वाह क्या लाजवाब थी। अशरफ अगर चल पाते हैं, तो मैं पहले भी कह चुका हूं छक्के जड़ने से पहले अगर अशरफ चल पड़े तो जीएस टाइसन की नैया पार करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। और इस समय इस साझेदारी को तोड़ने की जिम्मेदारी लेकर आए हैं गेंदबाज यासीन खड़बा। अच्छे गेंदबाज है, अच्छे ऑलराउंडर है अपने टीम की तरफ से।
क्या विकेट लेने में कामयाबी मिल पाएगी, ये तो फिलहाल वक्त ही बताएगा। अब दूसरी ओवर हाईवे हैंड से निर्णायक दीक्षित का पार करते हुए ओवर विकेट से उतार दिया है। डीप स्क्वायर की दिशा पर गेंद सीमा रहेगी जाती हुई, लेकिन आखिरकार गेंद को रोक नहीं पाए और गेंद सीमा रेखा पार कर चुकी है और इन चौकों की मदद से रन संख्या बढ़कर बन चुका है 17 रन। 17 रन की निजी स्कोर पर बल्लेबाजी करते हुए इस समय अशरफ, प्रणीत ने अब तक खाता भी नहीं खोला है क्योंकि उनको ज्यादातर मौका नहीं मिला है और इस वजह से ज्यादातर स्ट्राइक अशरफ के पास ही है। इस मैच के बाद अगला मैच जो कि यानी इस लीग का आखिरी जो कि चौथा मैच खेला जाएगा टीम एचएस बनाम मैदान फ्रेंड्स के दरमियान। इन दोनों कप्तानों से गुजारिश है, दरख्वास्त है, रिक्वेस्ट है, आप जहां कहीं भी कृपया कमेंट्री बॉक्स पर संपर्क करें टॉस के लिए। और फिलहाल मैच की ओर चलते हैं। दूसरी ओवर की छाती पर यासिन की पहली गेंद को चौके झड़ा चुके हैं अशरफ, एक आक्रमण रूप अपनाते हुए अपने टीम के लिए जिसकी दरकार थी उनको। और इस समय अच्छी गेंद, अच्छी बेहतरीन वापसी वहां पर यासिन खड़बा द्वारा डॉट गेंद साबित हुई, रन की कोई गुंजाइश नहीं। और उठाना चाहते थे, इस समय नहीं कहते हुए यासिन आखिरकार विकेट लेने में, ब्रेक थ्रू दिलाने में सफलता प्राप्त करते हुए यासिन खड़बा अपने कप्तानों की उम्मीदों पर खरे उतरते हुए भरपूर तरीके से जिस विकेट की दरकार थी, जरूरत थी, आखिरकार वो विकेट मिलती हुई यासिन खड़बा को। और अशरफ की पारी समाप्त होते हुए बेहतरीन पारी खेलकर अपने पैरों वापस लौटते हुए और के स्थान जगह भरने के लिए नए बल्लेबाज का आगमन होते हुए अपने कदमों को धीरे धीरे बढ़ाते हुए क्रीज की ओर अशरफ का स्थान जगह भरने के लिए और प्रणीत का साथ निभाने के लिए अच्छी वापसी मैं कहूंगा यासिन खड़बा द्वारा एक चौका देने के बाद विकेट प्राप्त की, महत्वपूर्ण विकेट मैं कहूंगा अशरफ की। क्षेत्र रक्षण परिवर्तन कराते हुए विकेट कीपर रमीज सजाते हुए कहना ठीक रहेगा। और इस समय अच्छी गेंद थी, ब्लॉक हॉल पर थी, देखा गेंद को, ब्लॉक हॉल पर थी, पीछे निकले और हल्के से अपना कलाइयों का इस्तेमाल कर मोड़ दिया डीप स्क्वायर की दिशा पर। एक रन लेने से कोई नहीं रोक पाएंगे और इस एक रन के साथ रन संख्या बढ़कर बन चुका है 18 रन, जबकि दूसरी ओवर की छाती पर हाईवे एंड से अंपायर दीक्षित पार करते हुए यासिन आगे अगर निकलना चाहते थे और इस समय थर्ड अंपायर यहां पर दिया है, लेकिन दीक्षित ने अपने हाथों को फैलाकर वाइड का इशारा दिया है, यानी अतिरिक्त रन जरूर है, वाइड गेंद थी। और दूसरी छोर पर जो लेग अंपायर के रूप में रवि ऊपर आते, उन्होंने तीसरे निर्णय को यह जिम्मेदारी सौंपा है और इसके लिए नतीजे के लिए थोड़ी देर इंतजार करना होगा सभी दर्शकों को। और मैं एक बात कहना चाहूंगा, घर बैठे दुनिया के किसी कोने में भी आप सीधा प्रसारण दे सकते हैं नमना एन चैनल की बदौलत। और यहां निर्णय आ चुका है, नॉट आउट दिया है, यहां पर तीसरे अंपायर का नतीजा नॉट आउट है
और बाल बाल बच गए वहां पर बल्लेबाज। सुभाष जो के नए बल्लेबाज क्रीज पर मौजूद है, इस समय सामना करने के लिए यासिन खड़बा का इस गेंद को। जब तक इस पारी की आखिरी गेंद फेंकी नहीं जाएंगे हम इस मैच के बारे में कुछ कह नहीं सकते। एक अनोखी सूचना मैं देना चाहूंगा, वहां डीप स्क्वायर की दिशा पर जो बैनर है जीएस की, अगर कोई बल्लेबाज उस पर छक्का जड़ता है तो 1 महीने के लिए मुफ्त तरबियत दिया जाएगा जिम की तरफ से। और इस समय रन आउट होने का खतरा था जरूर, लेकिन गेंद पैरों पर लगी। लेग बाइस का इशारा देते हुए एक और अतिरिक्त रन खाते में जुड़ता हुआ और इस एक अतिरिक्त रन की मदद से 19 रन यहां पर बन चुका है। एक एक रन महत्वपूर्ण है जीएस टाइटंस के लिए, जिस तरीके पे भी बने बस स्कोर कार्ड पर स्कोर बननी चाहिए, वो सोच के साथ बल्लेबाजी करते हुए। पुल कर दिया है वहां पर, यक्षर कवर के सर के ऊपर से गेंद 1 रन दौड़कर पूरे कर चुके हैं और 1 ही रन से संतुष्ट होते हुए इस समय ओवर की मुकम्मल है। लगातार दूसरी ओवर के मुकम्मल के बाद रन संख्या बढ़कर बन चुका है 21 रन, जबकि 1 विकेट के नुकसान पर, यानी 10.010 की औसत से तकरीबन इस रन रेट को बरकरार रखते हुए पावर प्ले का खत्म हो चुका है। अब 30-10 के दायरे के बाहर अब इस समय क्षेत्र रक्षकों को तैनात किया जा सकता है 5, और जब तक 29 मिनट के अंदर अगर आप 6 ओवर फेंके नहीं जा पाते हैं तो एक क्षेत्र रक्षक को 30-10 के दायरे के अंदर बुलाना पड़ेगा टीम के कप्तान को, यहां ये नियम बनाया है। और इस समय एंड जॉन केरला एक्सप्रेस नाम से मशहूर एंड जॉन बॉलिंग मां पर हाईवे इन से उठाना चाहते थे, लेकिन पूरी तरीके से चकमा देते हुए एंड जॉन केरला यानी त्रिशूल मूल के गेंदबाज हैं। एंड जॉन को जिम्मेदारी दी है टीम के कप्तान हनीश ने गेंदबाजी की और विकेट लेने की भी, जाहिर सी बात है। और इस समय बल्ले पे सही तरीके पे भी नहीं है, तो गेंद बल्ले का अंदरूनी किनारा लगकर शॉट और फाइन की दिशा पर गेंद गई और इस वजह से 1 रन लेने से नहीं रोक पाएंगे और इस 1 रन के साथ रन संख्या बढ़कर बन चुका है 22 रन, जबकि 30 ओवर की चालती पर 1 विकेट के नुकसान पर मैच जो कि संघर्षपूर्ण होने का संभव है, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि एंड जॉन बॉलिंग मां पर इस समय और कट कर दिया है काफी समझबूझ के साथ और थर्ड मैन की दिशा पर जाती हुई गेंद, लेकिन गेंद जो कि सीमा रेखा पार कर चुकी है, यानी 2 रनों का इजाफा, 2 रनों का इजाफा, महत्वपूर्ण 2 रन, जरूरी 2 रन मैं कहूंगा, हर एक रन कीमती है, महत्वपूर्ण है, कीमती 2 रन का स्कोर कोड पर यहां पर जुड़ता हुआ 24 रन बन चुका है स्कोर बोर्ड पर तीसरी ओवर की छाती पर। एक बार फिर से तैयार एन और इस समय जोरदार अपील, लेकिन अंपायर पर कोई दबाव नहीं, लेकिन रन आउट होने का खतरा भी हो सकता था। अंपायर ने कहा गेंद टिप्पा पड़ने के बाद लक्ष्य स्टंप को छूकर निकलती हुई, यह नतीजा देते हुए निर्णायक रवि उत्पला एक अनुभवी निर्णायक है और शायद पिचिंग इन लाइन एंड मिस द लेग स्टंप जो कहते हैं लेग बिफोर में, यही नतीजा निकालते हुए पुल कर दिया है क्षेत्र वहां पर मौजूद, गेंद सीमारे के बाद छक्का, बेहतरीन, लाजवाब, उम्दा, खूबसूरत, क्या शॉट जड़ा है, पुल किया है, छोटी गेंद का भरपूर फायदा उठाया है बल्लेबाज सुभाष ने
और एंड जॉन अपने दिशा से पूरी तरीके से भटकते हुए और उस 6 रन की मदद से स्कोर बोर्ड पर उछलकर बन चुका है 31 रन, 31 ऑन द बोर्ड। यानी इसका मतलब है सिर्फ 10 रन मात्र दूर है अपनी विजय से, अपनी जीत से। और इस बार अच्छी वापसी ऑप्शन से काफी दूर, वाइड का इशारा देते हुए निर्णायक रवि उफला एक और अतिरिक्त रन खाते में जुड़ता हुआ। रन संख्या बढ़कर बन चुका है 32 रन एंड जौनपुर से। समय अच्छी गेंद, वहां पर रन थोड़ा खतरा हो सकता है, लेकिन एक और थ्रो वहां पर जो पॉइंट के दिशा में जो क्षेत्र रक्षक थे नवाज, उन्होंने पूरी तरीके से छूका और एक और ओवर थ्रो के कारण अतिरिक्त रूप में बेड़ देते हुए मैदान बॉलिंग कुल मिलाकर तीसरी ओवर की समाप्ति हो चुकी है और रन संख्या बढ़कर बन चुका है 33 रन, सिर्फ एक विकेट गिरने के बाद। इस मैच के बाद अगला मैच जो कि खेला जाएगा टीम आईएचएस बनाम मैदान फ्रेंड्स के बीच, और मैदान फ्रेंड्स ने टॉस को जीतकर पहले गेंदबाजी का यानी फील्ड का फैसला यहां पर किया है। होस्ट की कप्तान ने आशिफ को गेंदबाजी की जिम्मेदारी सौंपा है, यानी सिर्फ बचे हुए 18 गेंदों पर 8 रनों की दरकार है इस मैच को जीतने के लिए टाइटंस को। और अच्छी गेंद वहां पर हल्के हाथ के जरिए ढकेल दिया है लॉन्ग ऑफ की दिशा पर 1 रनों के लिए। बल्लेबाज सुभाष ने हाईवे से निर्णायक दीक्षित को पार करते हुए आसिफ राइट आर्म तेज ओवर द विकेट से गेंदबाजी करते हुए कट कर दिया है वहां पर। काफी बेहतरीन शॉट वहां पर सुभाष द्वारा, तेज गति की गेंद को भनक लिया था, ऑप्शन से छोड़कर निकलती हुई गेंद को, छोटी गेंद थी, भरपूर तरीके से फायदा उठाया सुभाष ने और कवर की दिशा पर ड्राइव किया 1 रनों के लिए। इस बार पुल कर दिया है क्षेत्र वहां पर मौजूद, गेंद फुलवारे के पास बेहतरीन छक्का और इस 6 रन के साथ काफी बेहतरीन तरीके से इस मैच का अंजाम दिया है और इस 6 रन के साथ इस मैच को पूरी तरीके से जीत लिया है। जीएस टाइटंस ने इस मैच को जीतकर 2 अंक प्राप्त करते हुए, और धन्यवाद देते हैं, कांग्रेचुलेशंस टीम जीएस टाइटंस को। और इस मैच के बाद अगला मैच जो कि खेला जाना बाकी है टीम आईएचएस बनाम मैदान फ्रेंड्स के दरमियान। मैदान फ्रेंड्स ने टॉस को जीतकर पहले गेंदबाजी की फैसला यहां पर किया है, और जब तक उनका पारी यहां पर शुरू हो, मैं यहां पर बुलाना चाहूंगा बेहतरीन मेरे साथी कमेंटेटर मिस्टर सतीश दी को अंतरराष्ट्रीय जबान पर। धन्यवाद।
ಮ್ಯಾಚ್ ಪೆಂಗಲೇನ ಸರ್ ಜಿಂದ ಮ್ಯಾಚ್ ಆದ ನಂಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಆರಬೇಕು ಏದಿ ನಿങ്ങളല്ലേ ಇಪ್ಪ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿങ്ങളുടെ ಯಾವುದು ಇದಾ ಯಾವುದು ಇದು ಜಿಎಸ್ ಅല്ലേ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಇದೆಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಇದು ಇದು ಈ ರೊಟ್ಟಿ ಒಣಸು ಮಂಪುನ ಕಲರ್ ಫ್ರೀ ಇತ್ತಿನ ಪೋಲೆ ದಯ ಮಲ್ತದು ಪಿಕ್ಚರ್ ಅಲ್ಲೇ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದಲ್ಲೇ ಲಾರ್ಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲೇ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾರ್ಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲೇ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾರ್ಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಒಂದು ಉಪ್ಪಟ ಅಂಗಡಿ ಚಲ್ಲಿ ಕೇಟಗ ಇದೆ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಒಂದಲ್ಲ ಮಾಡ್ಲಿ ಬೀಗ್ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಆಜಾರಿಯ ಸತ್ತು ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಇಂದಿಲ್ಲ ಓಕೆ ಇಂದಿಲ್ಲ ಇನೆಟ್ ಅಂಚ ಎಕಡೆ ವಿನ್ನರ್ಸ್ ವರ್ಕ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿನ್ನರ್ಸ್ ವರ್ಕ್ ನೆಟ್ ವಿನ್ನರ್ಸ್ ಅವೇ ವಿನ್ನರ್ಸ್ So man of the match of the previous match, which is goes to Ashraf of Juiced Titans. Ashraf is the one is responsible for open the acceleration which is required in the right time, and he scored 17 valuable runs, and he just as a man of the match. May I request Ashraf to come and collect your man of the match from our Arif Emmekere, the chief guest for the presentation of man of the match, and Ashraf, one who going to collect the man of the match award. Congratulations, Ashraf, for your wonderful innings, and just starts innings which is really needed some explosive start in the beginning. So congratulations, Ashraf, for your wonderful innings. And I request ದಯಮಾಡಿ ಭೋಜನದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಭೋಜನ ಮಾಡದವರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ತಮ್ಮ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಭೋಜನವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. I request all the players, kindly request you to have a lunch. The counter will going to close soon, so please take your lunch as quick as possible. So welcome back, good afternoon cricket lovers, and we are back to the match. I request the 12th man of both the teams, please report to the commentary box immediately. And here is team IHS takes on Maidan Friends. After winning the toss, captain of Maidan Friends elected to bat first, and so that Maidan Friends won the toss, elected to ball first, and team IHS will go into bat first. First ball, right arm over the wicket, and nicely plays it down to deep fine leg region for a single. So with that single, Anil is off the mark. Anil is off the mark by helping the ball down to short fine leg region. Short pitch delivery there from bowler Ashok, and the batsman straight away is off the mark with the single. So declared area, so that Anil will go and retain the strike for the next ball. It's a very good match between two very good teams. Team IHS versus Maidan Friends, as Ashok again back to his bowling mark.
Again Ashok. Right arm over the wicket. Bounce. This time lofted. High up in there. Will it going to be a sixer here? I think it's definitely going to be a sixer because the way that he got that one right from the middle of that. Just look at the follow through of the strokes. Absolutely brilliant. It's been a mesmerizing cricketing stroke there from Anil. Just getting that getting that line and length, finding that line and length so quickly, and showing the full face of the bat. The timing is exquisite in the occasion there from Anil, and he got the distance. It's not an easy stroke to play in the book when you're playing a stroke down to long off or extra cover region. Ashok again, right arm over the wicket. Good comeback here by bowler in that occasion, shortening the length quite deliberately, seeing that Anil is in a little bit aggressive frame of mind, and just away going delivery. Good comeback here by bowler's point of view. Ashok bowling that dot delivery. The score remains on 7 without loss of any wicket. Ashok, full toss, the batsman going for the full shot. It's going to be a wide, and Anil is not happy with himself. We know exactly this juicy full toss. He can dispatch that one down to deep square leg for a maximum, but ball is going further away outside the line of leg stump, and wide call by umpire Ravi Harish Padil. Scoreboard numbers on to 8 on the board for the without loss of any wicket. Ashok back to his bowling mark from the highway end. Beautifully bowled, perfect one. This is what the comeback which is required. This shows the experience of the bowler, isn't it? You know exactly the kind of line and length which is required after that punishment which is came from the bat of Anil, and he's back very strongly with some good line and length. Just some charging down the track, lofted that one, beautiful stroke. That's been outstanding, glorious shot again there from Anil, using his feet quite beautifully. And you know exactly there is no protection in the deep in the extra cover region. This is a power play, only 2 bodies out there in the deep, and that protection which is given in the onside region, one at deep long on and deep backward square leg. And he'll know exactly the kind of stroke which is required in that occasion. This is a good thinking as a batsman's point of view, seeing that the previous 2 delivery which is they're just moving from the good line spot. He just tried to use his feet in that occasion so that he can reach the pitch of the delivery. An excellent extra cover drive from Anil. This time full that one, handsome looking full shot. It's going to be a wait for the umpire signal, the boundary signal. That means ball just landed inside the boundary line. 1 bounce over the row for 4 runs. So runs are coming here just like a flowing waters of the rivers. 16 runs came from that over of Ashok, and that 16 which is only because of Anil who hitting 2 boundaries and a 6, and because of that very good explosive start there from Anil, and straight away fresher year for Maidan Friends. Team IHS has got a flying start. So Maidan Friends have to do something special in the second over. So Tausif is going to face the bowler. Vichu balls the first ball. It's a full toss. The batsman going for the drive, and ball went towards the declared area down to deep third man region, and by signal umpire. So with that declared, I think the batsman will going to retain the strike. The scoreboard numbers on to 16 on the board. 16 for the without loss of any wicket. 17 let me correction. 16 which is came from the first over. The single means it's a 17. Firoz is a bowler bowling from the highway end. With the nickname of Piju as Firoz back to his bowling mark. To Tausif. This time Tausif went for the big shot. Not quite getting hold of that and properly. Oh, drops. My goodness, can you believe this?
There is opportunity for the catch for the mid-off and extra cover fielder. A total misjudgment and costing the loss of wicket for the bowler and for the team. The high catch always a difficult one, and that's why you need to keep the eye on the ball till the last moment. The mid-on fielder, in fact, just running towards his slight left across him, and what could be a straightforward catch for the mid-off fielder, and the fielder of mid-on is off the catch. 18 on the board. Anil this time tries that. What a shot! Just stand and delivered. Oh my goodness! This is an outstanding cricketing stroke there from Anil. One of the difficult strokes to play in the book, I want to say that, because of the lofting the ball towards extra cover is not so easy, and getting the resistance is not so easy. And look at the way he's just transferring his weight onto the back foot. Absolutely magnificent stroke there from Anil, and score jumped into 24 now. Anil is a well-known cricketer, and he's justifying why he's a well-known cricketer. The way that he is batting in this particular 2 overs of the power play, the 2 sixes has been absolutely, I just mentioned about, is a mesmerizing cricketing stroke. One at deep long, deep extra cover, one at deep widest long off, and one at deep extra cover. And score jumps into 24 now. Right arm over the wicket again, looking for the lofted drive. Ball just missing his bat. Wicket keeper behind the stump did the rest, back to bowler. But all the damages which is required in the power play over, Anil almost did the damage. There's 24 already on the board, and out of 24, you can see that the domination here from Anil. He's scored a 21 valuable runs out of that 24. Firoz, right arm over the across the line of the delivery, singing that one. Ball went like a tracer bullet down to deep backward square leg region, but good piece of fielding there by the fielder. And the good piece of fielding actually by the fielder at deep backward square leg. So batsmen have to settle for the single for that. With the single, Skoba now moves on to the quarter century. They came in a very quick time, isn't it? Just the second over is in progress, and 25 already run in the board. The final time in this over, Firoz bowling with the short run up, bowling to Tausif. This time Tausif wanted to join the party, but I don't think we're going to get the distance. Fielder there in the deep, he'll going to take the catch. The long on fielder almost running towards the widest long on region to complete that catch. It's a very good catch in the end by the fielder in the deep long on. It's not so easy, I mind you. The fielder in the deep, it's always going to be a difficult catch. The long on fielder I have to run towards his right to take the catch, complete the catch. And the wicket number first, which is back into pavilion. It's a 25 for the loss of 1 wicket. Tausif is out for 1, but I think is responsible for the partnership for the first wicket, and his 25 runs of partnership is comes to an end with the wicket of Tausif. So new batsman in is Shabir. So walking towards the middle. The number 3 always I mentioned about, a very, very important batting number 3. The good players are really coming in that number 3 position. So 2 overs at 25, that means they are going exactly 12.5 runs per over. 12.5 runs per over. Now Iqbal brought into attack. The Iqbal need to put some polish stop on the run rate. And after that power play, we can see that so many bodies out there in the deep. The fielding really spreading out. One at deep long off, one at deep extra cover. One at deep long on and deep mid wicket, and one at deep backward square leg. Here is first one. Again Anil looking for his favourite shot, lofted extra cover drive. But this time ball is much quicker than his bat speed. A ball just missing his bat, and the wicket keeper behind the stump did the rest. And back to bowler. Iqbal again back to his bowling mark. Pass umpire Harish Padil round the wicket, right arm. Bowls this time. Ball is in there and out of the reach of that cover fine fielder. There's an opportunity of run out. But the fielder is not trying for that. But you need to take all these chances, isn't it? Because you are trying for the wicket of one of the danger batsmen, Anil. Wearing a danger cap as well in his head.
and the fielder in the backward point region trying to make the run out. I think they need to try for that, isn't it? If a direct hit always giving you the chance to pick the big wicket like Anil. They need to take that opportunity. They need to take the grab the opportunity. But this time fielder is not interested. Anil is safe in the negation. And the scoreboard is 26 on the board for the loss of 1 wicket. Shabir is back on strike. He's facing his first delivery. Iqbal bowling third time in this over. Full toss delivery. Nicely driven. Nicely placed. They're running hard. Looking for second. But fielder is so good in the deep. He's so good actually. Athletic work there from the fielder in the deep mid wicket. The batsman now to settle for the single. With the single, Shabir is off the mark. And scoreboard now moves on to 27 on the board. This time Anil. Opportunity for Iqbal. Indeed takes a catch. What a catch. Oh my goodness. I think he is just hitting the ground hard. His head is hitting the ground hard. And looks like he's feeling a lot of pain here. But what a catch. What a catch there from Iqbal. The wicket of Anil, the danger man departs. Once again trying for the lofted extra cover drive. Not quite getting hold of that properly. Ball is ballooning up in there. And the bowler on his follow through. Taken a very good catch. Iqbal looks like he's very safe in the negation. And little bit treatment is given with some water to his head. The back of his head, because while taking the catch, he's been the head which is hits very hard into the ground. That's why he's a little bit feeling the pain behind his back of his head. But now he looks very safe. Thanks God, he's safe again. The wicket number 2 which is back into pavilion of team IHS. 23 valuable runs he scored before he's back into pavilion. And absolutely explosive batting. He played some enterprising cricketing stroke. And the entertainment innings which is comes to an end of Anil. Iqbal back to his bowling mark. 5th time in this over. Around the wicket to new batsman. Copybook style of defensive stroke. Not only defended that one, but he managed to rotate the strike by picking up the single, by playing the ball right off that short mid-on fielder. Scoreboard numbers under 28 now on the board, where for the loss of 2 wickets. Iqbal to Shabir. Nice. That was a copybook style of cricketing stroke there from Shabir, leaning into the drive, but not really able to get the placement right as Iqbal finishes over. It's a very good over. Much better over compared to last 2 overs. It's a really good over there from bowler Iqbal. He picked up a valuable wicket of Anil. And after completion of over number 3, it's 28 for the loss of 2 wicket. 9.33 runs per over. The run rate progressing here. So 28 is the score. 3 ಓವರ್ನ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ 28 2 ವಿಕೆಟ್ನ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ. Sidhu. So very good very good contest between 2 very good players. That means Sidhu to Chiddu. It's a very good rhyming words. And again straight to the hands of short mid wicket. And okay. And what a fantastic stop there from short mid on fielder. Once again, Sidhu to Chiddu. Sidhu is constable and is bowling right arm over the wicket to Chiddu. This time again going for the pull shot, but not really getting that much of enough height what he's looking for. Not short enough to pull the ball as a bowler. Some extra face here from Sidhu as Chiddu fails to
get any kind of strokes in that occasion. Score remains on 28 on the board. A lot of constables which is playing in this Maidan, friends. 4 to 5 constables playing in this Maidan. Lovely shot, beautifully driven right down, straight down the ground. What a magnificent stroke there from Chidu there. He's placed that one very straight as an arrow. When you are playing that straight, it's very difficult for the fielder down at deep long on and deep long off. It's the outstanding straight drive there from Chidu to get the boundary. So with that boundary score, ball moves on to 32 on the board. It's always a delightful stroke, isn't it? When you're playing a straight drive, and it always gives you a lot of opportunity to get the boundary, because long off and long on, a little bit wider, and it's very difficult for them to stop the boundary. So with that boundary scoreboard now moves on to 32 on the board. Sidhu back to his bowling mark. Bowling right arm over the wicket to Sidhu. This time full Z1 and full Z1, but not really get the distance right. He got the distance elevation, but didn't got the distance. This was a good comeback as far as the bowler's point of view. But I think Sidhu has got a mouth in his heart in the mouth when the batsman hits the ball towards a deep backward square. Looks to be a maximum, but might be the direction of the wind is now not helping that cricketing stroke to get the distance. Maybe now we can see that the direction of the wind just in front of the wicket, and behind the wicket if you wanted to hit the ball. I think now in the afternoon it's very difficult to get the distance. So 32 for the loss of 3 wickets are back into pavilion of Team IHS. Safwan is the new batsman in. Sidhu got the reward the way he's bowled, but started with 2 dotted deliveries, then he considered boundary. Next delivery picked up a wicket. This time lovely delivery, perfect delivery to ball to the fresh leg, isn't it? And that was almost right on the block hold of the right-hander batsman Safwan. Safwan this time quite watchful in the occasion, seeing that that ball is almost came into him with the Yorker length, and he negotiated very well, just putting his bat in the right time and saving him from that Yorker length delivery. Good comeback here by Sidhu. Just 4 runs and a wicket in that over. Last time and final time in this over. This time pulls that one. Going to be a chance of the second wicket here for misjudgment. Absolutely misjudgment as the fielder and batsman coming back for the second run. It's not a good piece of fielding there by the fielder. What could be a second wicket here for Sidhu, and because of that total misjudgment by the fielder, and the bowler is just missing opportunity to pick the second wicket. But it's a good over there from Sidhu. After completion of over number 4, it's a 34 on the board for the loss of 3 wickets. So Team IHS, after getting a flying start in 2 overs, they got 25. Then good comeback here by the bowlers of Maidan, friends. And that means 2 overs which is belongs to IHS, and 2 overs which is belongs to Maidan, friends. 5th time in this over, Ramesh. 5th over will going to start, and Ramesh is brought into attack from the highway end, and he will going to ball to Safwan. Shabir this time lofty. What a shot! That was a glorious. My goodness, just stand and delivered. So easy for the batter Shabir to deliver that 6, because there's a short pitch outside the line of off stump all the time in the world for Shabir.
to use his strength by hitting the ball down to deep extra cover for a maximum. And with that 6 score, jumped into 40 now for the loss of a 3 wicket. Effortlessly played, effortless stroke from Shabir. Ramesh, back to his bowling mark. One protection has been given in the deep cover point. One at deep extra cover and deep long on. This time is a wrong end. This is into another end. Down to deep backward square leg for a maximum. The back-to-back 2 sixes. Shabir just destroying the bowling attack of Ramesh. Back-to-back 2 sixes. This time again that was effortless shot. Just a stand and delivered, isn't it? So easy for him to delivering the 6. And score jumped into 46 now. And looks like his IHS are inching towards one of the highest score of this tournament. So far it's a 50 is the highest total score in this tournament. Now it's a 46. It's just a 5th over in progress, and they got opportunity to break the record. This half-hearted chip that was extra cover for a single there by Shabir. So with the single, score numbers on to 47 on the board. 13 runs which is came from that last 3 deliveries of Shabir. That's only because of Ramesh. That's only because of Sabir. He hits 2 sixes and is batting on 14. Safwan will go into face Ramesh. Again, really it was a bad delivery and good treatment from the batter. The short pitch delivery, all the time in the world for the batter to pick that short pitch delivery towards a deep wideish long on, almost in the cow corner, and he got the distance. And score jumps into 53, and 50 comes off here for IHS, and highest total score of this tournament recorded by IHS. Ramesh under pressure. What a shot off the back foot, driven down to deep extra cover for a walkable singles. With the singles scoreboard numbers on to 54 on the board. This is just a 5th over is in progress. Expensive over. 3 sixes, 2 singles. That means 20 runs which is scored in these 5 deliveries. 16 which is came from the first over. This is a expensive over, and that this is a defeating that. Wow, one more. This is a huge one. This is a huge one there from a huge hitter of the ball. And what a fantastic struck here from Shakir. 3 sixes in that particular over he scored, and altogether 4 sixes came from that over, and altogether 26 runs which is came from that over. 60 on the board. The 60, one of the popular figure, 60, and they scored in just 5 overs. The last 3 wickets for that. That's a mountain of runs now. Absolutely, it's a mountain of runs. 6-0 in just 5 overs. The 12 runs per over, the scoring the runs. And the last over is going to start. Looks like Sidhu will go into ball that last over. They have to choose between Iqbal and Sidhu to ball the 2 overs. But Sidhu is much better to deal with that slog overs with face. What a delivery to start with. Just talking about Sidhu has got extra pace in his bowling. So he's generating pace because he's got a very good run up as well. And he's almost charging in from outside the 20-yard circle and bowling that fantastic line and length. So dotted delivery to start with. It's a 60 already on the board. It's the last over is in progress. Maidan friends have to now control this last over. Already
after conceding 6. This is a slower one. Pick that one. And he got the distance. So, trying hands of that deep longer fielder. He's tried his level best to stop that one. He tried to take the catch. But I think it's not enough. Not enough there from the fielder. I don't think it's going to be that much of good effort there from the fielder. If any athletic fielder, if any good fielder who there in the long off, they can manage at least to pull the ball inside the boundary line, unless the fielder is just got a fingertips and ball is landed out of the boundary line for a 6. With that 6 score jumped into 66 for the loss of 3 wicket. See the balls. This time top edge opportunity for the bowler and the backward point fielder, and one fielder is charging for the backward point region. He takes the catch. And wicket number 4, which is back into pavilion. It's a 66 for the loss of 4 wicket. Shakil is a catcher down at backward point region. Looks like once it's a misunderstanding for that catch. But at last the fielder from backward point region, Shakil, just got a kept the eye on the ball till the last moment. And almost looks like it's a collision between him and the bowler. But luckily, the catch which is taken safely. So new batsman in is Naveen. Out. Safwan is back into pavilion after scoring 15 runs. Is a well played 15 runs there from Safwan. Next match, Prajwal takes on Oz Warriors. My request both the teams, please get ready. Prajwal Panthers as well as Oz Warriors. The battle between Panthers versus Warriors for the next match. Second match of the league for both the team. Charging down the track, chance of catch, and he's gone. Sidhu picking up 2 wickets and 2 consecutive deliveries. It's a good comeback as far as the bowler's point of view. After conceding a 6, then he bowled 2 very good deliveries to pick the wickets. That means he's on hat-trick. So Masood, the catcher, down at the deep long off. Halik is a new batsman in. Halik. Umpire, new batsman. Halik. Halik mein na. Nicely driven down to deep long. Oh, misfield! Absolutely, it's a sloppy. It's a sloppy there from the fielder at deep long up. What could be a certain single because of that misfield? They got a boundary. Halik got the boundary, and scoreboard jumped into 70. It's a lot of pressure now for the fielders of Maidan, friends, because of the runs which is coming from the batters of Team IHS are really dominating the bowling, and unlucky for Sidhu. And this time nicely driven down to deep long on. They're running hard. They knows that is the last delivery. They're going for the second. In comes a throw, and they completed it too. Even they're looking for the third as well. And oh my goodness, they completed third. Absolutely, it's a disappointment, isn't it? One is the presence of mind from the batters, and one is the absence of mind here from the fielders of Maidan. The friends, they got 3 valuable runs, and out because of that 3 runs they scored 73 runs, and they set a target of 74 to win this match. Sorry. So 74 is the target for Maidan friends. It's the highest total score of this tournament, which is scored by the team IHS. And this
the mountain of runs they're going to chase here. We'll take a short break. After that short break, my friend Mr. Zakir will going to entertain you with the beautiful language Hindi. Thank you. हेलो चिक, धन्यवाद सतीश जी। बेहतरीन तरीके से मैच का आगोतिक हाल सुनाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय जबान पर। और इसी के साथ मैच के इस मैच जो कि चल रहा है इस समय टीम एचएस बनाम मैदान फ्रेंड्स के दरमियान। मैदान फ्रेंड्स ने टॉस को जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया था और उसके नतीजे में टीम एचएस ने पहले बल्लेबाजी समाप्त करने के बाद अब तक का इस श्रृंखला का बहुत बड़ा लक्ष्य दर्ज किया है, यानी 73 रन कुल मिलाकर जोड़े हैं और 74 रनों का लक्ष्य रखा गया है टीम एचएस ने मैदान फ्रेंड्स के आगे। मैदान फ्रेंड्स कुल मिलाकर इस दूसरी पारी पर इस लक्ष्य को पार करने में कामयाब हो पाएंगे ये तो फिलहाल वक्त ही बताएगा। कुछ क्षणों पर दूसरी पारी शुरू होने जा रहा है। अतिरिक्त खिलाड़ी टीम एचएस का प्लीज कमेंट्री बॉक्स पर संपर्क करें। द 12th मैन ऑफ एचएस टीम प्लीज कम टू द माइक पॉइंट इमीडिएटली। इस मैच के बाद मैच जो कि खेला जाएगा प्रज्वल पैंथर्स बनाम जीएस टाइटंस के बीच। और प्रज्वल पैंथर्स ने टॉस को जीतकर फिलहाल टॉस जीता है, नतीजा अब तक नहीं बताया है, इसके लिए आपको थोड़ी देर इंतजार करनी होगी। और बहरहाल इस मैच की ओर चलते हैं जो कि मैच जो कि छोटा मैच जो कि चलता हुआ टीम एचएस बनाम मैदान फ्रेंड्स के बीच। और टीम एचएस की खिलाड़ियां मैदान पर उतर चुके हैं क्षेत्र रक्षण करने के लिए। और दूसरी छोर पर दोनों सलामी बल्लेबाज यानी आरंभिक जोड़ी फिरोज और उनके साथ निभाने के लिए रिफाक, दोनों एक बेहतरीन अनुभवी बल्लेबाज है। मैदान टीम की ओर से देखेंगे ये लक्ष्य को पार कर पाएंगे नहीं। बहरहाल मैच जो कि शुरू होने जा रहा है, पहली ओवर लेकर शब्बीर तैयार और अच्छी गेंद वहां पर हल्के से खेल दिया है शॉर्ट टर्न की दिशा पर फिरोज ने। इसे 1 रन के साथ रनों की सिलसिला यहां पर शुरू हो चुका है। फिरोज ने भी अपना खाता खोलते हुए इस 1 रनों से इस समय सामना करने के लिए तैयार रिफाक, जाने माने बल्लेबाज रिफाक आगे आकर ड्राइव कर दिया है लॉन्ग ऑन की दिशा पर, लेकिन क्षेत्र रक्षक वहां पर तैनात थे। हालिक
हल्का सा टुप्पा बनने के बाद गेंद को गैदर किया और उससे पहले दोनों बल्लेबाजों ने एक रन दौड़कर भी पूरे कर चुके थे और इस रन के साथ रन संख्या बढ़कर अब बन चुका है 2 रन पहली ओवर की चालती पर बिना कोई विकेट के नुकसान के। और पुल करना चाहते थे, छोटी गेंद थी, सही तरीके पे बल्ले पे नहीं आई थी गेंद को, लेकिन फिरोज एक आक्रमण रूप बल्लेबाज है और लंबे शॉट ज्यादातर खेलने में विश्वास रखते हैं अपने आप में और शबीर भी कोई कम नहीं है, एक अनुभवी गेंदबाज है शबीर टीम एचएस की तरफ से। स्पार ड्राइव कर दिया है, गेंद सीमा क्योंकि जाती हुई गेंद देखना पड़ेगा, गेंद सीमा रेखा पार कर चुके हैं, पहला छक्का यहां पर गिरता हुआ मैदान फिर की टीम से फिरोज के बल्ले से भी और इसी छक्के की मदद से स्कोर कार्ड पर उछलकर बन चुका है 6 रन पहली ओवर की छाती पे। अच्छा शॉट था, भनक लिया था गेंद को, हल्के से पीछे निकले और अपने कलाइयों के सहारे मोड़ दिया डीप यानी स्क्वायर की दिशा पर। इस बार उठा दिया है फिरोज ने और वहां पर पूरी तरीके से छुके जो क्षेत्र रक्षण तैनात थे डीप स्क्वायर की दिशा पर, लेकिन इस समय वहां पर एक मौका जरूर बन सकता था और भाग्य ने भरपूर साथ देते हुए फिरोज का भाग्यशाली मैं कहूंगा और इस मौके की बदौलत फिलहाल नाबाद बल्लेबाज इस समय स्ट्राइकर पर फिरोज। लगातार दूसरा चौका गिरता हुआ फिरोज के बल्ले से निकलती हुई इस तरीके की बल्लेबाजी की सख्त जरूरत है टीम मैदान फिंस को, क्योंकि लक्ष्य बहुत बड़ा रखा गया है टीम एचएस ने। और इस बार अच्छी गेंद ब्लॉक हॉल पर थी गेंद, लेकिन हालांकि ऑन साइड की दिशा पर मोड़ना चाहते थे, लेकिन बल्ले का अंदरूनी किनारा लगकर सीधे शॉर्ट फाइनल की दिशा पर गेंद गई और इस वजह से 1 रन जरूर मिला है इन दोनों बल्लेबाजों को और मैदान फ्रेंड्स को भी। और इसी के साथ पहले ओवर के मुकम्मल हो चुका है। पहले ओवर के मुकम्मल के बाद रन संख्या बढ़कर बन चुका है 11 रन, यानी तकरीबन अच्छा खासा शुरुआत मैं कहूंगा बिना कोई नुकसान पे। स्पार्क कट करना चाहते थे, नई गेंदबाजी का आगमन हुआ है इस समय। शब्बीर स्वार कट करना चाहते थे आश्रम से काफी दूर, अपने हाथों को फैलाकर वाइट का इशारा देते हुए निर्णायक रवि उपला एक और अतिरिक्त रन खाते में जुड़ता हुआ। 12.00 की औसत से रिक्वायर्ड रन रेट है। इस बार उठा दिया है, लेकिन क्षेत्र वहां पर तैनात है, लपक पाएंगे या नहीं, लेकिन लपक लिया है। बहुत बड़ा झटका यहां पर फिरोज के रूप पर यहां पर पहला विकेट का पतन होते हुए आखिरकार शबीर ने विकेट को प्राप्त किया है। पहला ब्रेक थ्रू जिसे कहते हैं, पहला ब्रेक थ्रू यहां पर दिलाने में सफलता प्राप्त होते हुए शबीर को। और इसी के साथ फिरोज की बारी समाप्त, मायूसी के साथ अपने पहले वापस लौटते हुए और दूसरी ओवर की छाती पर उनके आउट होने के बाद नए बल्लेबाज अपने कदमों को बढ़ाते हुए क्रीज की ओर मशहूर एक अच्छे बल्लेबाज है, इक्का दुक्के में ज्यादातर विश्वास रखते हैं,
मध्यम क्रमांक में बल्लेबाजी करते हैं ज्यादातर। इस समय ऊपर आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए। वे जानते हैं जो जरूरी रन रेट है वो तकरीबन 12.00 के औसत से है। इस रन रेट को रिक्वायर्ड रन रेट यानी जरूरी रन रेट, इस रन रेट से रन को आगे बढ़ाना होगा अगर विजय की ओर पहुंचना है तो टीम मैदान फ्रेंड्स को। इस बार उठाना चाहते थे, स्क्वायर की दिशा पर मशहूर ने 1 रन दौड़कर पूरे कर चुके हैं। 2 रन भागना चाहते थे लेकिन दूसरे रन में भी सफलता यहां पर मिलते हुए आते ही अपना खाता खोलते हुए मशहूर इन 2 रनों से, और इन 2 रनों के साथ रन संख्या बढ़कर बन चुका है 14 रन, जबकि 1 विकेट के नुकसान के बाद दूसरी ओवर की छाती पे शब्बीर जो के क्षेत्र रक्षण जो के सजावट करते हुए पावर प्ले प्रगति पर चलता हुआ बहुत बड़ा लक्ष्य का पीछा करते हुए इस बार उल्टे बल्ले से खेलने का प्रयास किया था, पूरी तरीके से छूटते हुए बल्लेबाज मशहूर सीधे विकेट कीपर अनिल के दस्तानों में गेंद। रन की कोई गुंजाइश नहीं वहां पर, डॉट गेंद साबित होते हुए इस समय शब्बीर अच्छी वापसी। आगे आकर हल्के से ढकल दिया है, स्क्वायर की दिशा पर 1 रन दौड़कर पूरे कर चुके हैं मशहूर। हालांकि दूसरा रन भागना चाहते थे लेकिन आखिरी मौके पर रोका अपने आप को सिर्फ 1 ही रन से संतुष्ट होते हुए। रिफाक जो कि एक अच्छे बल्लेबाज है, अनुभवी बल्लेबाज है, लंबे शॉट मारने में क्षमता रखते हैं वे रिफाक भी। देखते हैं वे अपने टीम के लिए क्या कर पाते हैं। इस बार कट कर दिया है वहां पर, 1 रन दौड़कर पूरे, डायरेक्ट हिट लगा लेकिन जब तक गेंद विकेटों पर पड़ती उससे पहले बल्लेबाज मशहूर पहुंच चुके थे क्रीज पर और नॉट आउट का नतीजा देते हुए निर्णायक हरीश पटेल। और इसी के साथ ओवर की भी मुकम्मल हो चुकी है। लगातार दूसरी ओवर की मुकम्मल के बाद रन संख्या बढ़कर बन चुका है 16 रन, जबकि 1 विकेट के नुकसान, यानी इस समय रन रेट घटती हुई नजर आ रही है। यानी 8.00 फिलहाल बरकरार जो कि रन रेट है, यानी इससे साबित होता है रिक्वायर्ड रन रेट है, जो जरूरी रन रेट है, ये बढ़ता हुआ हर एक डॉट गेंद का नतीजा जरूरी रन रेट बढ़ेगा। इस वजह से रन रेट को मेंटेन रखना सख्त जरूरत है इन बल्लेबाजों को। सफान को ही गेंदबाजी की जिम्मेदारी सौंपा है टीम के कप्तान ने अपना कोटा समाप्त करने के लिए। यानी इस समय पावर प्ले खत्म हो चुका है, बिल्कुल अब कोई दिक्कत नहीं है। यानी 30-10 के दायरे के बाहर फिलहाल 5 क्षेत्र रक्षणों को तैनात किया जा सकता है और रिफाक फनकते हुए क्षेत्र रक्षकों को, क्योंकि वे जानते हैं सारी जिम्मेदारी रिफाक और मशहूर के कंधों पर इस मैच की जिताने की इस समय। और सफान एक अनुभवी गेंदबाज है टीम की ओर से। आगे का ड्राइव 4 की दिशा पर ड्राइव किया है, हालांकि रन दौड़ने की प्रयास नहीं किया था। अगर 1 रन दौड़ पाते जरूर मिल सकता था, लेकिन आखिरी मौके पर दोनों ने अपने आप को रोक लिया। आगे एक ड्राइव करना चाहते 1 सेकंड की दिशा पर क्षेत्र वहां पर तैनात, लेकिन आसान सा कैच, मैं कहूंगा लॉलीपॉप कैच था ये, क्योंकि ज्यादा देर हवा पे नहीं थी, आसान सा कैच था, लपक लिया जा सकता था, लेकिन जीवदान मिलता हुआ रिफाक को और भरपूर फायदा उठाते हुए इस समय उल्टे बल्ले से खेलने का प्रयास, कामयाबी मिलती हुई, लेकिन 2 रनों का इजाफा यहां पर मिलता हुआ।
क्षमा चाहूंगा 1 रन का इजाफा यहां पर खाते में जुड़ता हुआ इस 1 रन के साथ रन संख्या बढ़कर बन चुका है 18 रन तीसरी ओवर की चालती पे। हाईवे से गेंदबाजी करते हुए सफान इस बार लंबे शॉट मारने के प्रयास किया था, पूरी तरीके से छकमा देते हुए सफान मशहूर को टिप्पा पड़ने के बाद सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में गेंद, रन की कोई गुंजाइश नहीं। उठा दिया है मशहूर ने, लेकिन क्षेत्र रेशमा पर तैनात आसान से कैच को लपक लिया गया है और इसी के साथ दूसरा झटका यहां पर गिरता हुआ मैदान फ्रेंड्स का, जो कि मशहूर के रूप में। मशहूर के आउट होने के उपरांत नए बल्लेबाज का आगमन होते हुए 18 नंबर जर्सी पहने हुए अपने कदमों को धीरे धीरे बढ़ाते हुए क्रीज की ओर मशहूर का स्थान जो कि भरने के लिए और रिफा का जो कि साथ निभाने के लिए आए हैं, सारी जिम्मेदारी अपने कंधों पर लेकर इस समय स्ट्राइक पर मौजूद इस बार उठाना चाहते थे, हवा पे है गेंद, लेकिन गेंद टिप्पा पड़ने के बाद क्षेत्र रक्षण के हाथों में, लेकिन 1 रन लेने से नहीं रोक पाएंगे और इस 1 रन के साथ ओवर की भी मुकम्मल हो चुकी है। लगातार तीसरी ओवर के मुकम्मल के बाद रन संख्या बढ़कर बन चुका है 19 रन, जबकि 2 विकेट गिरने के बाद शकील आए हैं नए बल्लेबाज, लेकिन अगर शकील को 1000 रुपए कमाने का मौका है यहां पर, अगर आप 3 छक्के जड़ते हैं किसी भी गेंदबाज को, कम से कम आपको 1000 रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाएगा इमरान की तरफ से। और धीमी गति की गेंद अनिल द्वारा रन आउट होने का खतरा, डायरेक्ट, अगर डायरेक्ट गेंद विकेटों पे पड़ती तो जरूर खतरा बन सकता था शकील को, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। भाग्य ने भरपूर साथ देते हुए उनका भाग्यशाली मैं कहूंगा, और इस समय अनिल बॉलिंग वहां पर आए हैं रिफा के लिए। उठा दिया है एक कवर के सर के ऊपर से, वहां पर फिर से एक मौका गवा दिया है, बार बार मौका देते हुए रिफा को पूरी तरीके से चूके इस कैच को लपकने में। उठाना चाहते थे, पूरी तरह से के चकमा देते हुए अनिल अपनी गति का परिवर्तन करते हुए समझबूझ के साथ गेंदबाजी वे करते हुए इस समय फिर से उठाना चाहते थे, लगातार डॉट गेंद साबित होते हुए शकील इस समय लक्ष्य पर थी गेंद, वाइड का इशारा देते हुए निर्णायक रवि उपला एक और अतिरिक्त रन खाते में जुड़ता हुआ, इस अतिरिक्त मदद के साथ रन संख्या बढ़कर बन चुका है 22 रन। बार बार चकमा देते हुए अनिल बिंगरे शकील को चतुराई के साथ गेंदबाजी करते हैं, इस बार कट कर दिया है कवर की दिशा पर, गेंद जो कि सीमा रेखा पार हो चुकी है 4 रनों के लिए। आखिरकार बल्ले पे आई शकील की, लेकिन इस समय छक्का नहीं चौका जड़ा है और इस चौके की मदद से स्कोर बोर्ड पर बन चुका है 26 रन 4 ओवर की समाप्ति के बाद। बारह गेंदों पर 48 रनों की दरकार है इस मैच को जीतने के लिए मैदान फ्रेंड्स को। मुश्किल है जरूर, लेकिन नामुमकिन नहीं, क्योंकि क्रिकेट एक अनिश्चितताओं का खेल है। आखिरी मौके पर किसी भी वक्त
मैच का रुख पलट सकता है। और इस समय रिफाक हली को गेंदबाजी की जिम्मेदारी सौंपा गया है टीम की कप्तान ने। और इस बार उठा दिया है, काफी बेहतरीन, लाजवाब, उम्दा, खूबसूरत। इस शॉट को क्या कहना चाहते हैं दर्शक आप सोच लीजिए, लेकिन दर्शकों का आंख को ठंडा किया है यहां पर रिफाक ने। काफी बेहतरीन तरीके से साथ इस शॉट को खेला है। आसान नहीं होता है लॉन्ग ऑफ। मुझे वो छक्का याद दिलाता है जिन्होंने हमारे किंग कोहली ने लगाया था पिछले जो वर्ल्ड कप हुआ था, जो हारिस रऊफ की गेंद में मारा था। उसी तरीके के से शॉट काफी हद तक वही तरीके का था। और जो कि रिफाक जो उनको मौका मिला है उसका भरपूर फायदा यहां पर उठाते हुए फिर से उठा दिया है। बेहतरीन था, लेकिन क्षेत्र रक्षक इस समय तैनात है वहां पर, लेकिन इस समय रिफाक का बारी पूरी तरीके के साथ समाप्त होते हुए और उनके आउट होने के बाद नया बल्लेबाज सिद्धू क्रीज की ओर अपने कदमों को बढ़ाते हुए, और यहां पर शकील को 5,000 रुपए का मौका है यहां पर कमाने के लिए। अगर 3 छक्के आप जड़ते हैं, क्षमा चाहूंगा, इस समय 5 छक्के अगर आप लगाते हैं तो 5,000 रुपए मेरे हाथों में हैं। आपको एक मौका है यहां पर। शकील को इस समय हलिक इस समय फिर से उठा दिया है, गेंद हवा में, क्षेत्र रक्षक के पीछे फिर से लगातार दूसरा विकेट को प्राप्त किया है हलिक ने। काफी बेहतरीन गेंदबाज यहां पर करते हुए बार बार बल्लेबाज यहां पर विकेट को नजर आती है मैदान की टीम की तरफ से, और आखिरकार 0 रन पर सिद्धू अपने पेविलियन को वापस लौटते हुए। शकील नॉन स्ट्राइकर पर अभी भी फिलहाल तैनात है, और सिद्धू की आउट होने के बाद नए बल्लेबाज का आगमन हुआ है काशीनाथ। हैट्रिक का मौका है यहां पर, हली को हैट्रिक विकेट प्राप्त करने का मौका है। और इस बार अच्छी गेंद वहां पर रक्षणात्मक रूप से गेंद को खेला था, वहां पर ओवर थ्रो किया है, लेकिन बिना वजह ओवर थ्रो की वजह से एक और अतिरिक्त रन मिला है। इस समय 18 नंबर जर्सी पहने हुए शकील आए हैं। अगर वे 5 छक्के जड़ते हैं 5,000 रुपए का नगद पुरस्कार आपको दिया जाएगा इमरान की तरफ से, हर एक छक्के को 1,000 रुपया। इस बार उठा दिया है कवर की दिशा पर, लेकिन क्षेत्र रक्षक वहां पर तैनात आसान से कैच को लपक लिया है। शकील की बारी समाप्त, और यह 5,000 रुपए सीधे इमरान की जेब में वापस। नहीं, जेब में वापस नहीं गया है। यह मौका अभी नए बल्लेबाज जो आए हैं शरीफ, उनको भी बरकरार है। अगर शरीफ आप 5 छक्के जड़ते हैं, आपको भी 5,000 रुपए कमाने का मौका है। इस समय बेहतरीन गेंदबाजी का प्रदर्शन देते हुए हलिक इस ओवर में 3 विकेट को छटकाया है। काफी लाजवाब गेंदबाजी इस समय हलिक द्वारा। इस बार पुल किया है डीप स्क्वायर की दिशा पर, गेंद टिप्पा पड़ने के बाद सीधा सीमा की गिर जाती हुई, और इस 4 रन की मदद से स्कोर बोर्ड पर बन चुका है
37 रन। प्रज्वल पैंथर्स की कप्तान से गुजारिश है, टॉस को जीता है आप, लेकिन प्रज्वल पैंथर्स कप्तान से गुजारिश है कि अपना फैसला यहां पर दीजिए। ठीक है, यहां पर फैसला मिल चुका है। प्रज्वल पैंथर्स ने टॉस को जीतकर पहले क्षेत्र रोशन करने का यानी गेंदबाजी का फैसला किया है। इस समय आखिरी ओवर फेंकने के लिए नए गेंदबाज का आगमन हुआ है। हनीश पीजे को गेंदबाजी की जिम्मेदारी सौंपा है टीम के कप्तान ने। अच्छी गेंद पर रन नट होने का मौका था, लेकिन पूरी तरीके से बच गए वहां पर दोनों बल्लेबाज, और इसी के साथ 38 रन यहां पर बन चुका है। यानी अब बचे हुए 5 गेंदों पर उल्टा दिया है शरीफ ने, गेंद सीमारे के पार होती है नहीं, लेकिन शायद ठिप्पा पड़ने के बाद सीमारे के पार हो चुकी है, यानी चौका है। लेकिन इस चौके के साथ रन्स को यहां के आगे बढ़ाते हुए 42 रन यहां पर बन चुका है। इस मैच को पूरी तरीके से टीम एचएस जीतता हुआ नजर आ रहा है। इस बार उठा दिया है शरीफ ने, इस बार क्षेत्र वहां पर तैनात, लेकिन इस समय छक्का जड़ा है शरीफ ने, और इस छक्के की मदद से 48 रन यहां पर बन चुका है स्कोर बोर्ड पर। काफी हद तक अपने रन्स को आगे बढ़ाते हुए शरीफ फिर से उठा लिया, बेहतरीन लाजवाब उम्दा शरीफ के बल्ले से लगातार 2 छक्का यहां पर जड़ता हुआ, एक अच्छी बल्लेबाजी करते हुए इस छक्के की मदद से 54 रन यहां पर बन चुका है। 54 ऑन द बोर्ड। दो गेंदों पर 20 रन की दरकार है और उठाना चाहते थे। इस समय पूरी तरीके से चूंकि चकमा देने में कामयाब होते हुए गेंदबाज अनिश पीजी, और पैरों पर लगी गेंद लगबैज का इशारा देते हुए एक और अतिरिक्त रन खाते में जुड़ता हुआ 55 रन यहां पर बन चुका है। इस दूसरी पारी का, इस इनिंग्स का आखिरी ओवर की आखिरी गेंद फेंकते हुए अनिश, ब्लॉक हॉल पर थी गेंद, लेकिन वहां पर गेंद जो कि इस समय सीमारे के पार कर चुके हैं 4 रनों के लिए, और इस 4 रन की मदद से स्कोर बोर्ड पर बन चुका है 59 रन, और इसी के साथ इस मैच को जीतकर इस मैच को जीता है जीएस ने, और 2 अंक प्राप्त करते हुए शायद शरीफ ऊपर आ पाते बल्लेबाजी करने के लिए, इसका नतीजा कोई और ही होता, लेकिन बहरहाल मैच तो जीएस की टीम ने जीत चुके हैं। क्षमा चाहूंगा, आईचेस की टीम ने जीतकर 2 अंक प्राप्त किया है, और इसके बाद मैच जो कि खेला जाएगा प्रज्वल पैंथर्स और जीएस टाइटंस के दरमियान। प्रज्वल पैंथर्स ने टॉस को जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया है, और जब उनका मैच यहां पर शुरू हो, मैं यहां पर लेना चाहूंगा एक छोटा सा ब्रेक। धन्यवाद। और आगे का हाल सुनाने के लिए मैं मेरे साथी कमेंटेटर मिस्टर सतीश जी को आमंत्रित करना चाहूंगा अंतरराष्ट्रीय जबान पर। धन्यवाद।
ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಊಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಯಾರಾದರೂ ಊಟ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಾಕಿ ಇರುವವರು ದಯವಿಟ್ಟು ಊಟ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಸಂಘದ ಪರವಾಗಿ ಕೇಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಆ ಊಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಬಂದ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಹಲಿಕ ಅವರು ಎಲ್ಲಿದ್ರು ವೇದಿಕೆ ಬರಬೇಕು. ಅವಳು ಒಂಜಿ ವೈಟ್ ಕಲರ್ ಆಕ್ಟಿವ್ ಏರ್ ಅವಳು ದೀತೀನಿ ಅವಳು ಒಂಜಿ ದೆಪ್ಲೆ ನಂಬರ್ ಐತವು 1114 ವೈಟ್ ಕಲರ್ ಆಕ್ಟಿವಾ. So thank you very much, Zakir. And we are back to this match, the match number 5 of day number 1 of this prestigious Yekkur Premier League 2022. Meanwhile, I announce the man of the match of the previous match. It's a close contest between two batters, but of course, always the all-rounder will going to get the opportunity to pick the man of the match. It goes to Shabir because of his quick-fired 20 runs in just 6 balls, and he bowled one good over of 1 run, 5 runs, and 1 wicket. So Shabir is a man of the match. So that I request Shabir to come and collect your man of the match from our chief guest. ದಯಮಾಡಿ ಶಬೀರ್ ಅವರು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂದು ತಮ್ಮ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿ ಗಣ್ಯರಿಂದ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಕಮಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದಿಸ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ toss which is on by Prajwal Panthers and rightly elected to field first. That means the team Juice Titans will go into bat first here. The opening batters already they made their way to the middle of the pitch. Shabir ಅವ್ರು ದಯಮಾಡಿ ಬರಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ. ಶಬೀರ್ So Shabir of IHS will go in to collect the man of the match for his wonderful innings of 20 runs, and he bowled one good over, and in that he picked up 1 wickets by conceding just 5 runs. Outstanding performance, congratulations. And sure. K19 MG 775 Brezza ಗಾಡಿ 4-wheeler. ದಯಮಾಡಿ ಅದರ ಮಾಲಕರು ತಮ್ಮ ಕಾರನ್ನು ಅಲ್ಲಿಂದ ತೆರವುಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರಾಫಿಕ್ಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ತಿದೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಬೇಕು. So first ball and right arm over the wicket, and it's a shot which one almost looks like he is going to drag the ball into the stumps, but luckily the last moment the batsman a little bit has got the footwork to stop the ball to hit the stumps. Abhishek.
Abhishek. Right arm over the wicket. Ashraf. Ashraf drives that one beautifully right in the gap towards the deep extra cover region. Fielder chasing the ball, but ball winning the race against the fieldsman. Excellent placement in the negation there from the batter Ashraf off the back foot, punching it that down to cover and extra cover. There is no protection has been given in the deep in the offside region. Once it defeats the infield and that ball is really running towards, racing towards the fence, towards a deep wideish long off boundary for 4 runs. So with that boundary, they started open the account with the 4 without loss of any wicket. Abhishek. Right arm over the wicket bounce. This time again, lovely shot. The same result. This time I think ball will go into the better than the previous one. The way that he got the placement and timing in that strokes, absolutely exquisite. There from Ashraf, the back-to-back 2 boundaries for Ashraf. Ashraf won the man of the match in the previous match, and he's just continuing the form what is left in the previous match. And Abhishek getting the punishment. The placement is so good in that occasion. The twice in that occasion, he's got that gap between cover and extra cover. But still there is no protection in the deep, in the offside region. Very interesting. 1 at deep backward square leg, 1 at deep long on. And umpire, please stop the ball. Stop the ball, please. The truck which is passing there. Thank you. So deep long on, we are talking about 1 at deep backward square leg. The 2 fielders are in the deep. After that, 2 boundaries in the offside region, but still there is no protection. Abhishek changing the angle round the wicket. He bowls. This is a full toss delivery, but protection is there in the deep in the backward square leg. The fielder have to run to his left to field the ball, and ample time for the batter to complete the single. So with that single, scoreboard now moves on to 9 for the without loss of any wicket in the over number first in progress. Abhishek. Right arm round the wicket again. Lovely delivery indeed. Appeal for caught behind. That was a half-hearted shout. The only the wicket keeper is behind. The stump is up. But look at the Abhishek. The bowler is not so confident. After seeing the wicket keeper is appealing, then Abhishek started to appeal. So no damage done. 9 on the board without loss of any wicket. Abhishek again back to his bowling mark. Right arm over the wicket. This time full Z1 towards a deep long on region. Walkable single. There is plenty of time for the batter to complete the single. So first over completed after completion of over number first. And a good start here from these 2 opening batters for Juice. A little bit for Frajwal Panthers scored 10 runs, double figure without loss of any wicket. Second over going to start from the highway end. Ranjit. Straight to the hands of fielder at square leg. And that was a really soft dismissal. Praneeth is caught at square leg of the bowling of Ranjit. The wicket number, the first which is back into pavilion of Juice Titans. They lost their little bit correction. Yes, Juice lost their first wicket. Caught at square leg. Venu, the fieldsman there in that square leg, wearing his jersey number 1. And behind the square he stands and takes a comfortable catch. So important breakthrough came from Ranjit, because if they wanted to put the break on the run rate, they need to pick the wickets. And it's a golden duck here for Praneeth. The first ball itself is back into pavilion. Replacing him is a new batsman, number 3 batter, just walking towards the middle. Suhas just examining the field set. Subhas, little bit correction.
Ball there, what a delivery, what a magnificent. It's been outstanding delivery there from Sujit. Little correction, Ranjit. And that was a Yekkur line delivery, isn't it? And many batsmen really not expecting that kind of the delivery. The first delivery itself, the batsman Subhas is out for golden duck. And that means the bowler is on hat-trick. Ranjit is on hat-trick. Superb delivery there from Ranjit. What a delivery that one. Absolutely unplayable. Frex Kotian. Freeze Kotian is a new batsman walking towards the middle. There is a same jersey number 46. One is for Freeze Kotian and one for Jitesh. So little bit correction. Jitesh is a new batsman in left-hand batter. Will go into face. That means Ranjit is on hat-trick. He's bowling that hat-trick there. It's going to be a first hat-trick of this tournament. Golden opportunity for Ranjit to pick the hat-trick. The Jitesh just looking around the field. Get ready to face the bowling of Ranjit. Will bowling round the wicket. Over the wicket, little bit correction, but he just missed the opportunity. The wide call by umpire so that it breaks. That he just missed the opportunity to get the hat-trick. And wide ball, so with that wide scoreboard now moves on to 11 on the board for the loss of 2 wicket. Ranjit, what a fantastic start from him. 2 wickets, which is much required for Juice as far as restricting the runs in this power play over. Ranjit bowls off the back foot and nicely guiding it down to short gully region for a single. So with that single, scoreboard now moves on to 11 on the board, 12 on the board. After a long time, scoreboard is moving, and of course after that wide bowled in the previous over, the run which is came from the bat off the batter. So 12 for the loss of 2 wicket. Ranjit back to his bowling mark. 4th time in this over to Ashraf. He is looking pretty good in the middle. 2 boundaries already scored in the first over, but he didn't got strike in this over. Now he's back on strike and he will go into face Ranjit. Right arm over the wicket. Lovely shot. Nicely turns that one down to square leg region. Off the toes. Flicks that one off his legs down to square leg region for a single by Ashraf. With that single scoreboard now moves on to 13 on the board. Right strategy is there from Ashraf after seeing that 2 wickets which is fell very quickly in that over. A little bit watchful in that occasion as he didn't look for any big strokes in that occasion. You know exactly the kind of batting which is required in this situation. Ranjit so far looking pretty good. Just 3 runs in that over. Round the wicket he balls. Beautifully balled. It was just outside the line of off-stamp batsman going for the off-drive. Just came in off volley. Of course, drivable delivery. The batsman can drive the ball towards extra cover and cover point region. There is no protection at all in the deep. But just missing the opportunity, Jitesh. Outstanding over. 2 wickets and just 3 runs. Final time in this over. Right arm round the wicket. That's all the problem, isn't it? This is a very good delivery for the right-handed batsman because it is a leaving delivery for the right-handed batsman. As the fact that Jitesh is a left-hand batter, it's definitely going to be wide. This is the one area that's always going to be difficult for the bowler when it's a left and right combination. You need to change the line and length for different kind of batsman, left and right left and right combination. So 14 on the board. Second wide in that over. This time going for the full shot, not quite getting hold of that properly, but he managed to get the single for that. With that single, the good over completed. It's a much better over there from Ranjit compared to the previous one. And after completion of over number 2, it's 15 on the board. That means 5 runs which came from that over. And out of that 5, he bowled 2 wide deliveries and 3 which came from the batter. So 15, 7.5 runs per over. The run rate progressing here. 2 very good teams. Prajwal Panthers came into
this tournament as a favorite because they are the defending champion. Jews also, they also came into this tournament as a favorite because of the way they performed in the first match, and suddenly they wanted to continue their winning track, and for that I think they need to play out of their skin. They need to perform very well if they wanted to win the match against Prajwal. Sachin brought into attack. Sachin brought into attack, and one more very good bowler for the side. Sachin to Ashraf. Ashraf is knows his potential, capability. So far is batting well this time. Slower one, absolutely slower one from Sachin early into the stroke. Prajwal little bit correction. Ashraf thought it might be the short pitch enough. Of course, it's a short pitch delivery, but the fact that the batter little bit early into the stroke, he couldn't manage to take advantage of that delivery, and he missed out completely. Sachin back to his bowling mark. Very bright, hot, and sunny afternoon. Sachin right arm over the wicket. One more good delivery indeed. Absolutely fantastic one here from Sachin. Extra bounce as well. The batsman couldn't manage to tackle with that bounce as Ashraf tried to work that on the onside region. Misses it completely. So that leg by call by umpire with the addition of that extra scoreboard numbers on to 16 on the board. Good comeback by the bowlers of Juice Titans after that first over, which is 10 runs, the 2 boundaries which is came afterwards. We can see that the boundaries are dried up, and that's the one thing they want to see. As much as they dried that big shots like boundaries and 6, the opportunities always for the fielding team to restrict the opposition for less than 40. Again, nicely bowled, beautiful delivery indeed. Again there from Sachin just reading the mind of the batsman. He know exactly what the strength of the batter, and he's just bowling to the weakness of the batter outside the line of off stump, and missed it completely by the batter. Sachin over the wicket, balls, pulls that one, chance for the fielder, just in number 33, Gautam charging into that catch, and he just got that one from his 2 hands. Almost it looks like it's a difficult chance at once when the fielder from a deep backward square leg charging into that. Looks like ball will go to land it safely, but the fielder done a good job. Is charging into the ball, sprinting into the ball, and hold that catch quite nicely. Good catch in the end there by the fielder. Gautam the catcher there in the short square leg, deep square leg. Chetan Bangera is a new batter walking towards the middle. Bengre, little correction, not Bangera. Chetan Bengre. Right arm over the wicket, balls, and defensively played off the back foot. There is a possibility of run, but Ashraf is not interested. His partner is also not interested, so that no chance of any run. 16 on the board. So far, Sachin bowled a fantastic over. Economical, the wicket taking as well. Sachin. Right arm over the wicket. Batsman looking for the switch it, but missed it completely. Fantastic over. Absolutely a good one there from Sachin. And it's a caught behind the wicket, or it's a bowled out. I don't know what. Chetan, caught behind. I think it's a caught behind. Caught behind the wicket, and the scoreboard is 16 on the board. 16 on the board for the loss of 4 wicket. Looking for the switch it, and he got outside edge of the bat, and wicketkeeper behind the stump did the rest.
a good comeback here by the bowlers of Juice. The first over is a 10, second over is a 5, and the third over is just a single, that is in the leg by, in the form of leg by. That means a maiden over. This time lofted handsomely, and it's a huge one. The Ashraf till there in the middle. You can't say anything in cricket in this match because he is the one. He is the one. He's a settled batsman in the middle, and he got that one right from the middle of the bat. The juicy full toss, and Ashraf have to say thank you very much for the delivery. And Kashyap is being the captain of the side. It's not a good start from him, as he bowled the full toss, and batsman lofted that one down to deep backward square leg for a huge 6. The huge 6 from the huge man, and a much required blow from him because the runs are dried up in the first in the previous 2 overs, and knows the Ashraf knows that acceleration which is much required after that 2 quiet overs, and he got acceleration in the first ball itself. Kashyap. Right around the wicket, one more full toss and one more big stroke. Oh my goodness, what's really going on here for bowler? The 2 full toss and Ashraf once again hammering it down to deep mid wicket for a huge 6, the second sixer of this over, and score jumped into 28 now for the loss of 4 wicket. You can't do the mistake, isn't it? You can't do the mistake when you are bowling to the caliber of Ashraf. That was definitely going to inviting the batsman to go for the big shot, and Ashraf picking up 2 sixes. That means, can he able to hit the hat-trick 6 here? So 28 on the board. The previous match there was announcement of 5,000 rupees for 5 sixes, but there is no announcement even the 2 sixes which came in 2 deliveries. Kashyap. Now what a shot off the backward. Look at the stroke, that one absolutely terrific. But just a single in the negation. Fielder is Abhishek there in the deep. Is a very quick in the negation to moving to his left and denying extra run from the batter. Just a single here for Ashraf. With that single scoreboard numbers on to 29 on the board. That was a fantastic square cut there from Ashraf off the back foot. And Kashyap got a punishment. 13 runs which came in last 3 deliveries. 4th time in this over. This time new batsman picked up a single down to deep extra cover region. Abhishek, the busy customer, once again he is in the picture now. Picks the ball, returns the ball to the hands of wicketkeeper. One more addition. With the addition of the single scoreboard moves on to 30 on the board. This time Ashraf, it's a 3rd 6. This is a huge one. This is a huge one there from Ashraf. What a magnificent innings he's playing. It's an innings of a lot of caliber, because it's not so easy when wickets are tumbling in front of him. He was standing tall and he playing innings which is much required for his team. This is the 3rd sixer of this particular over. The Kashyap, being the captain of the side, is getting a punishment. 36 on the board. This time one more short pitch delivery, but this time it couldn't quite hold up that one properly. But the fielder charging in from the deep, but couldn't manage to reach the catch. He just came into that catch, but he's taken that one in the off volley. Expensive over is comes to an end there from Kashyap. Really very expensive indeed. 3 sixes in that particular over. Altogether 21 runs came from that over. Highly expensive. 37 which is the total score. ನಾಲ್ಕು ಓವರ್ನ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ 37 4 ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 37 for the loss of 4 wicket after completion of over number 4. Sachin, Juice are looking now towards a good score against the defending champion. This time Ashraf, he's just continuing his form, and he got the distance as well. What a magnificent stroke.
This is an outstanding batting performance here from Ashraf. Astonishing cricketing stroke. Oh my goodness. Nothing much wrong with the line of the delivery. Of course, it was a little bit in off volley, but the way that is Ashraf, the transferring his weight onto the back foot and beautifully driven, lofted drive towards the long off for a maximum. This time again looking for the helicopter shot, but not really getting that much of timing behind the stroke. He managed to rotate the strike. He wanted to back on strike, and he definitely is back on strike. It's not a good going here for Prajwal Panthers. Excellent running between the wicket, just grabbing the opportunity of the laziness of the fieldsman of Prajwal Panthers. The Titans of Juice are looking now pretty good. They're cruising towards a big score. 45 on the board already, in just over number 5 in progress. It's what one-man army as Ashraf so far getting more than 90% of the runs from his bat. That shows the domination. Sachin to Ashraf, looking for the slog sweep shot, but ball is hitting his stomach, missing the bat. That's the thing what Sachin is wanted to do here. One of the best bowler as so far is introduced by the captain of the opposition. Sachin is bowled his first over as a maiden. Now he is bowling his second over. The first ball itself he got a treatment here from Ashraf, and then he came back strongly. This time Ashraf again going for the swing, but just a blind attempt there from Ashraf. It's all happening when you are in aggressive frame of mind. You want to send each and every ball out of the park, but this time he's just missing the ball because Sachin just shortening the length and bowling a little bit away going delivery. Sachin, sensible batting, and this time Ashraf quickly realizing that of course runs are so good, why not to rotate the strike in this situation. So one more single added, total scoreboard numbers under 46 now. A little bit exchange of word. Of course maybe that strategy, the statics what really required in the remaining delivery. Of course the last ball is which is remaining in this over of Sachin, and Friz Kotian will go into face the last delivery of Sachin's over. So far in this particular over, 9 runs which is scored. This time looking for the pull shot, but ball definitely going to land safely, and they will going to get a single for that. So Fraze will going to retain the strike for the last over after completion of 5 overs. Juice Titans after a shackling start and dig back very strongly with some runs. 47 for the loss of 4 wickets. The next match, the match number 6 will be played between Yekkur Blasters versus IHS. So that I request both the captains complete of formalities of signature as well as toss. ದಯಮಾಡಿ ಎಕ್ಕೂರು ಬ್ಲಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಐಚೆಸ್ ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಆಟಗಾರರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ನಮ್ಮ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಕೊಠಡಿಗೆ ಆಗಮಿಸಬೇಕು. ತಮ್ಮ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರ ಹಾಗೂ ನಾಣ್ಯ ಚಿಮ್ಮಿಗೆಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. Harris starts with the delivery, absolutely perfect one. Look at the lay, ball is landed to the hands of the bowler, wicket keeper. It's a quicker one, the much quicker delivery there from Harris there. Needed such kind of bowling in the last over. (47) Harris bowling with the short run up. Right, over they get balls off the back foot, drives that one down to deep long off, but Ashraf doesn't want a second run here. We need to keep the strike for the final 4 deliveries of their innings because he is a subtle batsman in the middle. He's looking pretty good. He's batting on 38 so far with the help of 4 sixes. Absolutely
one of the best innings so far in this tournament from Ashraf. Oh, what a shot! This time, straight down the ground, as straight as an arrow. He clearing the man out in the deep long on. What a fantastic cricketing stroke there from Ashraf. Audacious batting performance here from Ashraf. He's batting on 44. He's got a golden opportunity to get the 50. And if you're able to get the 50, that definitely is the first half century of this tournament. What a magnificent innings came from Ashraf. As the 50 comes up after that, 6 score jumps into 50. 5 is batting on 46 and just 4 short of his 50. Golden opportunity. Harris. Item over the wicket. Going for the big swing of the bat. Appeal for leg before wicket. And half-hearted shout. The wicketkeeper is not interested to appeal, but the bowler is very much interested to get the leg before wicket here. But umpire Dikshit, rightly so, knows that ball going to miss the leg stump and no damage done. Harris back on his bowling mark. 2 balls remaining. Right arm over the wicket. Big swing of the bat is gone. Caught behind the wicket. And Ashraf's innings which comes to an end. But I think he will definitely going to get the standing ovation from his dugouts. The way he batted here. Not only the supporters from his dugout, but from the left of our commentary box, the supporters will definitely going to acknowledge his innings. What a innings he's played. Absolutely one of the best entertainment innings and played some enterprising cricketing stroke, and is 46 in just 22 deliveries against the best team of this tournament. So new batsman in is Sali. So Ashraf little bit disappointed that he didn't got a 50. He's much deserved that 50 because he got 3 deliveries to spare. But more than the 50, he's thinking about the acceleration of run rate for his team. And that's why he's got out. Nicely driven down to deep long on Rajan. They're charging for the second. They come back for the second. In comes the throw from the deep. But it was a long distance. Absolutely, it's a long distance. When you are trying to return the ball to that strikers, and couple of runs here for the batter Shali to finish their innings of 6 overs. After completion of 6 overs, it's 57 is the total score, and they set a target of 58 to win this match. And fantastic performance there from Zeus Titans. It's not so easy, but we can see that is a one-man army. That complete domination by Ashraf, and scoring many runs out of that. 57 is individual scored 46, and other 11 runs which is came from other batsmen, and and from the extras as well. 3 extras. That means only 8 runs which is scored by the other batsman, and more than 80% of the runs which is came from the bat of Ashraf is scored 46 valuable runs, one of the highest individual score of this tournament as well. And before the innings will go into start of Prajwal Panthers, I would like to invite Zakir to take over the microphone in our national language. But you cannot underestimate Prajwal Panthers. The name that what they got, Panthers, they will definitely going to fight like a Panthers, and so that I think Zeus Titans, they have to bowl well if they wanted to win this match. But I think the batters did the job, and all up to the bowlers of Zeus Titans, how well they will going to justify the innings of Ashraf. It's over to Zakir. Thank you.
आलोचक। धन्यवाद सतीश जी, बेहतरीन तरीके से मैच को आंखों देखा हाल सुनाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय जबान पर। बहरहाल मैच की ओर चलते हैं। प्रज्वल पैंतीस बनाम जीएस टाइटंस के बीच मैच जो कि चल रहा है इस समय। प्रज्वल ने 35 पर टॉस को जीतकर पहले क्षेत्र रक्षण करने का निर्णय लिया था और उसके जवाब पर जीएस टाइटंस कुल मिलाकर 57 रन जुटे हैं और 58 रनों का लक्ष्य रखा है प्रज्वल पैंतीस की आगे। बहरहाल मैच की ओर चलते हैं। दोनों सलामी बल्लेबाज मैदान पर उतर चुके हैं, पुनीत और सचिन, और गेंदबाजी की कार्य निभाने के लिए यशपाल स्वर्ण बेंगरे यानी यशु। पावर प्ले प्रगति पर चलता हुआ 2 ओवर के पावर प्ले। यशु हाईवे एंड से पहली गेंद लेकर, बार अच्छी गेंद, ब्लॉक हॉल पर थी गेंद, पहली गेंद डॉट गेंद साबित होते हुए बड़ा सा लक्ष्य का पीछा करते हुए इन दोनों बल्लेबाज उतर चुके हैं इस समय मैदान पर। वहां पर धीमी गति की गेंद पूरी तरीके से चकमा देने में कामयाब होते हुए यशु, और इसी के साथ पहला झटका यहां पर गिरता हुआ पुनीत के रूप पर। शून्य रन की कुल पर पहला विकेट का पतन होते हुए प्रज्वल पैंतीस का, और आखिरकार यशु ने बेगदूत लाया अपने टीम के लिए। और इस समय उनके आउट होने के बाद नया बल्लेबाज का आगमन होते हुए कश्यप, एक अनुभवी खिलाड़ी प्रज्वल पैंतर की तरफ से पुनीत का स्थान जो कि भरने के लिए और सचिन का साथ निभाने के लिए। सचिन जो कि पिछले मैच पर जो विजय प्राप्त हुआ था पैंथर्स का, वो और मैन ऑफ द मैच पुरस्कार से नवाजा गया था उनको, और बेहतरीन पारी खेली थी अपने टीम के लिए, बहुत बड़ा योगदान दिया अपने टीम के लिए विजय प्राप्त करने की। इस समय यशु दूसरी बार हाईवे एंड से निर्णायक दीक्षित को पार करते हुए कश्यप के लिए। आश्रम से काफी दूर अपने हाथों को फैला कर वाइड का इशारा देते हुए, यानी अतिरिक्त गेंद, यहां पर एक और अतिरिक्त रन खाते में जुड़ता हुआ। इसे एक रन के साथ रनों की सिलसिले यहां पर शुरू हो चुका है इसे 1 रनों से। इस बार अच्छी गेंद, काफी रफ्तार भरी गेंद, समझबूझ के साथ गेंदबाजी करते हुए यशपाल, काफी अनुभवी गेंदबाज है जीएस की ओर से, काफी सारे श्रृंखला खेल चुका है इस खिलाड़ी। इस चम से काफी दूर, इस समय सही गेंद करार देते हुए निर्णायक दीक्षित, छोड़ दिया, कोई छेड़खानी करने की कोशिश नहीं किया तब कश्यप ने। नतीजा निकला डॉट गेंद का, यानी पिछला गेंद था, और इस समय वाइड गेंद एक और अतिरिक्त रन खाते जुड़ता हुआ, यानी कुल मिलाकर 2 रन बन चुका है बिना कोई नुकसान के। इस बार उठा दिया है डीप स्क्वायर की दिशा पर, टिप्पा पड़ने के बाद गेंद को लपक लिया क्षेत्र रक्षक ने, और 2 ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। आखिरकार बल्ले से ये 2 रन निकलते हुए कश्यप की, इस 2 रन के साथ अपना खाता खोलते हुए कश्यप, और टीम की यहां पर स्कोर बन चुका है कुल मिलाकर 4 रन, जबकि 1 विकेट के नुकसान पर, जो आउट होकर पवेलियन वापस हो चुके हैं पुनीत के रूप में।
अच्छी गेंद, बेहतरीन गेंदबाजी यहां पर करते हुए समझ बूझ के साथ अब अनुभव का सही तरीके का उपयोग यहां पर करते हुए इशू। और इसी के साथ पहली ओवर की समाप्ति हो चुकी है। पहली ओवर की समाप्ति के बाद रन संख्या बढ़कर बन चुका है, जबकि 4 रन 1 विकेट के नुकसान पर 58 रनों का लक्ष्य का पीछा करते हुए प्रज्वल पैंथर्स इस समय आए हैं। सचिन एक अनुभवी बल्लेबाज, एक अनुभवी खिलाड़ी, जो कि अगर इस मैच को प्रज्वल पैंथर्स को जीतना है तो सचिन का बल्ला बोलना सख्त जरूरत है टीम पैंथर्स को, क्योंकि अच्छा खासा अनुभवी है उनको और अच्छी तरीके से बल्लेबाजी भी कर पाते हैं। और चेतन बिंगरे को गेंदबाजी के कार्य सौंपा है टीम के कप्तान। और उनका सामना करने के लिए तैयार सचिन। दूसरी ओवर की पहली गेंद लेकर हाईवे एंड से अंपायर हरीश पटेल को पार करते हुए इस बार काफी खूबसूरत तरीके के साथ एक पैर को आगे लेकर फनक लिया था गेंद को। छोटी गेंद को भरपूर फायदा उठाने में सफलता मिलती हुई सतीश ने इस चौके की मदद से अपना खाता खोलते हुए और इस मैच के बाद अगला मैच खेला जाएगा यक्कुर ब्लास्टर्स बनाम आईचेस के दरमियान। इन दोनों कप्तानों से गुजारिश है, दरख्वास्त है, रिक्वेस्ट है, निवेदन है, आप जहां कहीं भी कृपया कमेटी बॉक्स पर संपर्क करें टॉस के लिए, क्योंकि समय के अभाव के कारण और मैचेस यहां पर खेले जाने बाकी है। इस वजह से जल्दी से जल्दी यहां आकर सहायता कीजिए। बहरहाल मैच की ओर चलते हैं। चेतन की पहले गेंद पे ही चौका जड़ चुके हैं सचिन और इस समय एक बार फिर से सचिन आक्रमण रूप अपना में क्षमता रखते हैं। सचिन ने एक अनुभवी भरपूर अनुभवी के साथ इस समय बल्लेबाजी करते हुए अच्छी गेंद, अच्छी वापसी वहां पर चेतन द्वारा। पहली गेंद पे चौका देने के बाद दूसरी गेंद डॉट गेंद यहां पे फेंकते हुए चेतन दूसरा पावर प्ले प्रगति पर चलता हुआ इस बार उठा दिया है गेंद। सीमा रेखा हालांकि पार हो चुका है, लेकिन सिर्फ एक ही रन से 2 रन, क्षमा चाहूंगा, सिर्फ 2 रन से खुश होना पड़ेगा और इन 2 रन के साथ रन संख्या बढ़कर बन चुका है 2 अंकों पर पहुंच चुका है, यानी 10 रन 1 विकेट के नुकसान पर। पावर प्ले चलता हुआ सिर्फ 2 ही क्षेत्र रक्षकों को 30 के दायरे के बाहर तैनात किया जा सकता है पावर प्ले में, और इस समय चलता हुआ चेतन तैयार, आगे आकर ड्राइव कर दिया है, क्षेत्र सीमा पर तैनात कोई नहीं है, गेंद सीमा रेखा पार हो चुकी है 6 रनों के लिए। काफी खूबसूरत, बेहतरीन, आला, उम्दा, जो चाहे कह सकते हैं इस शॉट को, क्योंकि आसान नहीं होता एक स्टेप आगे निकलकर इस गेंद को एक्स्ट्रा कवर के सर के ऊपर से छक्का लगाना कोई आसान बात नहीं होती बल्लेबाजों को, क्योंकि अनुभव इतना है इस बल्लेबाज को, हर तरीके का किट जो कि शॉट खेलने में क्षमता ये बल्लेबाज रखता है अपने साथ। फिर से निकाल दिया है, काफी बेहतरीन उम्दा शॉट, लगातार दूसरी गेंद पर छक्का जड़ाते हुए सचिन। इससे पहले मैं सचिन के बारे में बता चुका हूं कि सचिन एकमात्र ऐसे बल्लेबाज जो है इस टीम में है जो कि वो अंत तक रखते हैं, तो कप्तान की उम्मीदें बरकरार रहेगी प्रज्वल पैंथर्स की
क्योंकि वे बेहतरीन बल्लेबाज हैं। कहीं इनकी पारियां मैं खेल चुका हूं, देख चुका हूं, और इस 2 छक्के की मदद से स्कोर कार्ड उछलकर बन चुका है 22 रन। दूसरी ओवर की चालती पर लाइन से भटकते हुए चेतन आश्रम से काफी दूर हरीश पटेल ने अपने हाथों को फैलाकर वाइड का इशारा देते हुए, यानी कुल मिलाकर 2 रन मिलेंगे यहां पर। 2 अतिरिक्त रूप में स्कोर बोर्ड पर स्कोर यहां पर बनता हुआ 24 रन 1 विकेट के नुकसान पर। दो रनों का इजाफा हो चुका है। इस वजह से बल्लेबाज सचिन अपने स्ट्राइक अपने पास रख सकते हैं। सचिन को ही स्ट्राइक अपने साथ रखना होगा, क्योंकि 1 रन का इजाफा हुआ था, इस वजह से 1 अतिरिक्त रन की वजह से, यानी कुल मिलाकर 2 रन खाते में जुड़ता हुआ। और इस समय उल्टे बल्ले से खेलने का प्रयास किया था, क्षेत्र वहां पर पीछे बेहतरीन तरीके से प्रयास किया था वहां पर क्षेत्र रक्षक ने, लेकिन आखिरी मौके पर गेंद उनके हाथों से छूटा और एक जीवदान मिलता हुआ सचिन को। और इस जीवदान के साथ ओवर की भी मुकम्मल हो चुकी है। लगातार दूसरी ओवर के मुकम्मल के बाद रन संख्या बढ़कर बन चुका है 26 रन यहां पर बन चुका है, सिर्फ 1 विकेट गिरने के बाद। यानी बचे हुए 24 गेंदों पर 32 रनों की जरूरत है इस मैच को जीतने के लिए। सचिन बेहतरीन पारी यहां पर खेलते हुए अपने टीम के लिए, और कश्यप भरपूर साथ उनका निभाते हुए, और यशु को ही मजबूरन कप्तान को वापसी बुलाया गया है अपना कोटा समाप्त करने के लिए, क्योंकि जो ये 2 बल्लेबाज बल्लेबाजी कर रहे हैं वे इस समय अगर विकेट लेना सख्त जरूरत है, गेंदबाजों को साझेदारी तोड़ना जरूरत है अगर अपने पक्ष में करना है तो इस मैच को जीएस को, क्योंकि यशु वो क्षमता रखते हैं, विकेट टेकिंग गेंदबाज है। हाईवे एंड से यशु राइट आर्म रन द विकेट से गेंदबाजी करते हुए कश्यप के लिए अच्छी गेंद हल्के हाथों से डीप लॉन्ग ऑन की दिशा पर धकेल दिया है 1 रनों के लिए, और इस 1 रन के साथ रन संख्या बढ़कर बन चुका है 23 रन। यशु बनाम सचिन, अनुभवी बल्लेबाज के सामने अनुभवी गेंदबाज, कांटे की टक्कर। काफी बेहतरीन तरीके से शॉट को खेला है सचिन ने, क्या खूबसूरत अंदाज के साथ इसका शॉट को खेला है। कवर ड्राइव जिसे कहते हैं उस प्रकार का ड्राइव यहां पर किया है, और इस 1 रन के साथ रन संख्या बढ़कर बन चुका है 28 रन। फुल टॉस गेंद रन ढूंढने खतरा हो सकता था, लेकिन गलत दिशा की ओर थ्रो किया है क्षेत्र रक्षक ने इस गेंद को। शायद नॉन स्ट्राइक की ओर थ्रो कर पाते तो खतरा जरूर बन सकता था कश्यप के लिए, लेकिन इस समय यह 1 रन तो जरूर अपने खाते में जुड़ता हुआ प्रज्वल पैंथर्स की स्कोर बोर्ड। सचिन एक बार फिर से तैयार सामना करते हुए, कट करना चाहते थे, टिप्पा पड़ने के बाद बाहर की ओर निकलती हुई गेंद पूरी तरीके से चकमा देते हुए यशु सचिन को। फिरकी गेंदबाज कहना ठीक रहेगा यशु को, क्योंकि अलग अलग तरीके से दिशाओं से गेंदबाजी करते हैं यशु।
फिर से देखिए काफी खूबसूरत अंदाज के साथ गेंद को खेला है सचिन ने, लॉन्ग ऑफ की दिशा पर हल्के से ढकल दिया है 1 रनों के लिए, और इस 1 रन के साथ रन संख्या बढ़कर बन चुका है 30 रन बन चुका है स्कोर बोर्ड पर। कट कर दिया है, वे जानते हैं इन दोनों बल्लेबाज, क्योंकि यशु एक अनुभवी गेंदबाज है जो कि बड़ा शॉट खेलने की दरकार नहीं है इस ओवर में, क्योंकि हालांकि मैच उनके पक्ष में जरूर बनता हुआ नजर आता है, और लेकिन इस समय कश्यप और सचिन दोनों आपस में सलाह मशवरा करते हुए यानी बचे हुए 18 गेंदों पर 28 रनों की दरकार है इस मैच को जीतने के लिए। प्रणीत को गेंदबाजी की जिम्मेदारी सौंपा है टीम के कप्तान ने, क्योंकि वे जानते हैं जो तलाश रहे हैं विकेटों की, जो विकेट तलाश रहे हैं टीम के कप्तान जीएस की, सचिन की, अगर वो कोई गेंदबाज निकाल पाते हैं तो जरूर मैच पे वापसी जरूर कर पाएंगे जीएस की टीम। अठारह गेंदे 28 रन, काफी संघर्षपूर्ण मैच होने का संभव है। दर्शक भरपूर तरीके से इस मैच का आनंद लेते हुए बेहतरीन सूरज की किरणें मैदान की चारों तरफ टहलता हुआ प्रणीत पिछले मैच पर बेहतरीन गेंदबाजी की थी अपनी टीम के लिए, इस समय सचिन को शायद वार्म अप करते हुए प्रणीत धीमी गति की गेंद, वहां पर हल्के तरीके से हल्के हाथों से गेंद को खेला है गली की दिशा पर, शॉर्ट पॉइंट गली की दिशा पर यानी शॉर्ट फाइन कहना ठीक रहेगा, वहां की दिशा पर 1 रन को हल्के से टक्कर दिया है सचिन ने, और इस तरीके के 7 रन संख्या बढ़कर बन चुका है 31 रन। कश्यप सामना करने के लिए तैयार रहा, आगे आकर ड्राइव कर दिया है लॉन्ग ऑन की दिशा पर, गेंद हवा में है, शेतर उसके पीछे, गेंद टिप्पा पड़ने के बाद सीमा रेखा पार कर चुकी है 4 रनों के लिए, काफी महत्वपूर्ण 4 रन। अगर क्षेत्र रक्षण वहां पर थोड़े से पीछे तैनात होते शायद ये कैच जरूर बन सकता था, लेकिन उन्होंने सही तरीके पे देखा नहीं गेंद को, और उस वजह से उनके हाथों से ये कैच छूटता हुआ और गेंद सीमा रेखा पार कर चुकी थी और 4 रन खाते में जुड़ चुका है, और इन 4 रन के साथ रन संख्या बढ़कर बन चुका है 35 रन, 35 ऑन द बोर्ड। इस समय यह मैच बराबरी की स्थिति पर नजर आती हुई कौन सी टीम भी जीत सकता है इस समय। आगे अगर कट करना चाहते थे वहां पर धीमी गति की गेंद को फनक नहीं पाए कश्यप, आखिरी मौके पर चतुराई के साथ समझबूझ के साथ गेंदबाजी करते हुए प्रणीता, बहुत बड़ा झटका मैं कहूंगा कश्यप के रूप में, दूसरा विकेट का पतन होते हुए, और उनके आउट होने के बाद नए बल्लेबाजन का आगमन होते हुए आरिश जॉन्टी के नाम से मशहूर ये खिलाड़ी हारिस
पिछले मैच पर बेहतरीन पारी खेली थी अपने टीम के लिए, जो साझेदारी चली थी सचिन और आरिश के दरमियान। दोनों ने अपने टीम के लिए बेहतरीन बल्लेबाजी की थी पिछले मैच पर। वो मैच ने पंजाब पैंथर्स ने जीत लिया था भरपूर तरीके से। और इस समय सचिन का फिर से साथ निभाने के लिए हारिस क्रीज पर मौजूद। प्रणीत आखिरकार विकेट को लपकने में सफलता प्राप्त करते हुए धीमी गति की गेंद, फुल टॉस गेंद थी, उठाना चाहते थे लेकिन सही तरीके पे बल्ले पे नहीं आई थी गेंद। गेंद डोके स्क्वायर की दिशा पर गेंद गई और एक रन जरूर दौड़कर पूरे कर चुके थे इन दोनों बल्लेबाज। और इस एक रन के साथ रन संख्या बढ़कर बन चुका है 36 रन। इस समय सचिन सामना करने के लिए तैयार। प्रणीत हाईवे एंड से निर्णायक हरीश पटेल को पार करते हुए धीमी गति की गेंद वहां पर चेतन ने लपक लिया है। सचिन को बहुत बड़ा झटका मैं कहूंगा। जिस विकेट की दरकार थी, जिस विकेट की तलाश थी, आखिरकार प्रणीत ने वो विकेट को प्राप्त किया है और बहुत बड़ा झटका देते हुए यहां पर पंजाब पैंथर्स को प्रणीत ने 36 रन पर रुक चुका है स्कोरबोर्ड। और उनके आउट होने के बाद अपने धीरे धीरे कदमों को बढ़ाते हुए 12 नंबर जर्सी पहने हुए विजेत प्रणीत आखिरकार अपने 2 विकेट प्राप्त की है। वहां पर काफी महत्वपूर्ण विकेट मैं कहूंगा, क्योंकि जो साझेदारी चल रही थी कश्यप और सचिन के दरमियान वो खतरनाक साबित हो सकती थी जियास के लिए। और जो काम करने के लिए, जो जिम्मेदारी निभाने के लिए टीम की कप्तान ने गेंदबाजी के कार्य सौंपा था प्रणीत को, काफी हद तक वो कार्य यहां पर निभाते हुए। और अच्छी गेंद, बेहतरीन गेंद, ठिप्पा पड़ने के बाद सीधे विकेट कीपर के अशरफ के हाथों में गेंद। रन की कोई गुंजाइश नहीं। काफी बेहतरीन ओवर की समाप्ति हो चुकी है और इस ओवर की समाप्ति के बाद रन संख्या बढ़कर बन चुका है 36 रन पर ही रुका हुआ है 3 विकेट के नुकसान के बाद। बारह गेंदों पर 20 रन की दरकार है इस मैच को जीतने के लिए, यानी 10.00 रिक्वायर्ड रन से बनाना होगा। उठा दिया है और इसने काफी बेहतरीन शॉट, इसे कहते हैं छक्का। जिस छक्के की दरकार थी आरिश, यहां पर आरिश अपने अनुभव का भरपूर इस्तेमाल करते हुए जिसकी दरकार थी वो काम यहां पर निभाते हुए आरिश, जो कि जॉन्टी के नाम के मशहूर है आरिश, और इस समय अपनी टीम के लिए बेहतरीन काम करते हुए। इस 6 रन की मदद से 42 रन यहां पर बन चुका है। फिर से पुल कर दिया है वहां पर। इस समय देखना पड़ेगा, 1 रन दौड़कर पूरे कर चुके थे। गेंद सीमा रेखा पार कर चुकी है 2 रनों के लिए।
2 रनों का इजाफा, यानी इसका मतलब है स्ट्राइक अपने पास ही रखेंगे हारिस। आरिफ पर दबाव बढ़ता हुआ नजर आते हुए सारी जिम्मेदारी आरिफ के कंधों पर लेकर गेंदबाजी करते हुए इस समय और इसमें बेहतरीन लाजवाब उम्दा अविश्वसनीय जो कहना चाहिए इस कैच को सारी दर्शकों का आंखों का ठंडक बन चुका है यह कैच। मेरे ख्याल से अब तक का यानी सारे श्रृंखला का बेहतरीन कैच होने वाला है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बेहतरीन कैच को लपक लिया है अशरफ ने। अशरफ जो बल्लेबाजी पर जो कमाल किया था अपने टीम के लिए, इस समय विकेट कीपर के विकेट के पीछे भी उसी तरीके का कमाल दिखाते हुए आरिश की पारी समाप्त होते हुए क्या अभी भी कोई ट्विस्ट है इस मैच पर? जरूर होना पड़ेगा क्योंकि मैच ऐसे स्थिति पर आ चुका है, इन दोनों में से कोई भी टीम एक जीत सकता है। नए बल्लेबाज का आगमन हुआ है रंजीत यानी रंजू। नौ गेंदे 14 रन। उठाना चाहते बाबर, रन आउट होने का खतरा हो सकता था अगर गलत दिशा पर थ्रो किया है क्षेत्र रक्षक ने गेंद को। शायद अगर क्षेत्र रक्षक नॉन स्ट्राइकन की ओर थ्रो कर पाते तो जरूर रनआउट का खतरा बन सकता था बल्लेबाज के लिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। भाग्य ने भरपूर साथ देते हुए इन दोनों बल्लेबाजों का, और इसका मतलब है 1 रन और खाते में जुड़ता हुआ 45 रन यहां पर बन चुका है। आठ गेंदे 13 रन। कट करना चाहते थे, पूरी तरीके से चूकते हुए अच्छी वापसी वहां पर आरिफ द्वारा। आरिफ जो दबाव अपने ऊपर लेकर गेंदबाजी कर रहे थे उसमें काफी बेहतरीन तरीके से वापसी करते हुए आरिफ हर एक डॉट गेंद 22 ಆಡಿತ್ತು ಸರ್ 22 ಆಡಿತ್ತು 13 13 ಔಟ್ 45 ಇತ್ತು 45 और इसमें फिर से एक बल्ले का बाहरी किनारा लगा और सीधे 1 रन की दिशा पर, यानी 1 रन का इजाफा और इस 1 रन के साथ रन संख्या बढ़कर बन चुका है 46 रन, यानी 46 ऑन द बोर्ड। ओवर की मुकम्मल हो चुका है। पांच ओवर के समाप्ति के बाद रन संख्या बढ़कर बन चुका है 46 रन, यानी इसका मतलब है बचे हुए आखिरी गेंद पर, आखिरी 6 गेंदों पर 12 रनों की दरकार है इस मैच को जीतने के लिए। द रिमेनिंग आर 6 डिलीवरीज, 12 रन्स रिक्वायर्ड टू विन दिस मैच फॉर प्रज्वल पैंथर्स। कांटे की टक्कर यहां पर होने वाला है, काफी संघर्षपूर्ण मैच होने वाला है। दर्शक इस मैच का भरपूर आनंद लेते हुए धनु 27 नंबर की जर्सी पहने हुए गेंदबाज
धनु को गेंदबाजी की कार्य सौंपा है टीम की कप्तान ने। क्या ये 12 रन बनाने में रोक पाएंगे धनु? क्या वे बल्लेबाज रंजू और विजेश दोनों ये 12 रन बना पाएंगे? ये तो वक्त की बताएगा। फिलहाल रंजू सामना करते हुए, हर खिलाड़ी की ना पद बड़ा होता है ना कद बड़ा, जो मुश्किल में खड़ा वही सबसे बड़ा। क्या रंजू वो साबित कर पाएंगे? इस समय एक संघर्ष मोड़ पर आ चुका है मैच। पुल करना चाहते थे लेकिन सही तरीके पे बल्ले पे नहीं आई थी गेंद। एक रन दौड़कर पूरे कर चुके हैं। 2 रन भागना चाहते थे रंजू, वहां पर रन आउट हो सकता है, रन आउट हो सकता है आखिरी मौके पर। वहां पर जो कि दीक्षित ने, जो कि लेग एम्पायर थे, उन्होंने तीसरे निर्णय को यह जिम्मेदारी सौंपा है। नतीजे के लिए थोड़ी देर आपको इंतजार करना पड़ेगा। क्या मैच चल रहा है यहां पर, संघर्ष भरा हुआ यह मैच। फिलहाल निर्णय नतीजा निकालते हुए और तीसरे अंपायर की निर्णय यहां पर आउट। आखिरकार रंजीत की बारी समाप्त होते हुए 2 रन नहीं था, लेकिन उसके बावजूद 2 रन दौड़ना चाहते थे। बिना वजह रन्स दौड़ने में अपने विकेट खोते हुए रंजू खोकर अपने पेविलियस वापस लौटते हुए, और उनके आउट होने के बाद नए बल्लेबाज 17 नंबर जर्सी पहने हुए हिदायतुल्ला, हिदायत जो कि नया बल्लेबाज इस समय 1 रन बन चुका है। एक गेंद पर 47 रन बन चुका है। बचे हुए 5 गेंदे 11 रन की दरकार इस मैच को जीतने के लिए। विजीत और हिदायत ने दोनों सलाह मशवरा करते हुए देखेंगे कौन सी टीम जीत पाती है। इस समय स्पार कवर की दिशा पर ड्राइव कर दिया है, गेंद सीमारों की गिर जाती हुई, गेंद सीमारे के पार हो चुकी है। फुल टॉस गेंद का भरपूर फायदा उठाया है हिदायत ने। आते ही चौका जड़ा है, महत्वपूर्ण चौका, और इस चौके के साथ रन संख्या बढ़कर बन चुका है 51 रन, यानी 51 ऑन द बोर्ड, यानी बचे हुए 4 गेंदे 7 रन की दरकार है इस मैच को जीतने के लिए। हिदायत, सारी जिम्मेदारी दोनों के कंधों के ऊपर। क्षेत्र रक्षण सजाते हुए अशरफ, लॉन्ग ऑफ, लॉन्ग ऑन, डीप एक्स्ट्रा कवर, शॉर्ट मिड विकेट, डीप स्क्वायर लेग, शॉर्ट फाइन इस तरीके से शेषे से सजाया है, उठा दिया है लॉन्ग ऑफ की दिशा पे। 1 रन दौड़कर पूरे कर चुके हैं। 2 रन भागना चाहते थे, रन आउट होने खतरा बन सकता है। आखिरकार अंपायर की उंगली उठी और इस बीच रन आउट। इस बीच रन आउट होकर पेविलियन वापस लौटते हुए विजेश, लेकिन 1 रन जरूर खाते में जुड़ता हुआ। स्ट्राइक अपने पास रखेंगे हिदायत। 3 गेंदे 6 रन, कुछ भी हो सकता है। मुश्किल है जरूर लेकिन नामुमकिन नहीं। जब तक इस ओवर की आखिरी गेंद पे के नहीं जाएंगे,
हम इस मैच के बारे में कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि क्रिकेट एक अनिश्चितताओं का खेल है। इसे अब तक कोई समझ नहीं पाया है। धनो हाईवे इनसे चौथी गेंद लेकर हिदायत के लिए, काफी संघर्षपूर्ण मैच। उठा दिया है, हिदायत ने उठा दिया है, गेंद सीमारे का पार हो चुकी है। बेहतरीन छक्का, क्या लाजवाब छक्का जड़ा है हिदायत ने। इस छक्के की मदद से इस मैच को पूरी तरीके से जीत लिया है प्रज्वल पैंथर्स ने। लगातार दूसरा जीत उनके खाते में जुड़ता हुआ। कांग्रेचुलेशंस, काफी बेहतरीन मैच था। इस मैच का मैन ऑफ द मैच पुरस्कार जाता है द वन एंड ओनली, लगातार दूसरी मैच पर मैन ऑफ द मैच पुरस्कार जीते हुए सचिन प्रज्वल पैंथर्स का। प्लीज आप यहां पर आइए और आपके लिए सुभाष जी सचिन को ये पुरस्कार भेंट कीजिए। सचिन, सचिन बेहतरीन गेंदबाजी की थी, मेडन ओवर पे गए थे और उसमें 2 विकेट भी प्राप्त किया था और बल्लेबाजी में भी कुल मिलाकर 23 रन जोड़े हैं और उसमें से 2 छक्के और 1 चौके शामिल है। काफी बेहतरीन पारी, मैच विनिंग परफॉर्मेंस जिसे कहते हैं अंग्रेजी में। और जब तक उनका मैच शुरू हो, मैं यहां पर बुलाना चाहूंगा मेरे साथी कमेंटेटर मिस्टर सतीश, जो कि अंतरराष्ट्रीय जबान में। धन्यवाद। मशहूर मशहूर नाಳೆ ನಾಳೆ ಕಾಂಡೆ ಬರಡಿ ಮಶೂರ್ ಅಶೋಕಣ್ಣ ಉಲ್ಲೇ ರಾಹುಲು ഇത് നടന്നുകൊണ്ട് തുടങ്ങി ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് അയച്ചത് അത് കഴിഞ്ഞ് ഇത് 2 ഇത് 3 സോറി 2 ടോട്ടൽ 3 മാച്ച് ഉണ്ട്.
Yekkur Blaster team HS. Bowling. Anil. So thank you very much. Welcome back. Good evening, cricket lovers. And the match now between Yekkur Blasters versus IHS. After winning the toss, Yekkur Blasters selected to field first, and the first ball, and it's a dotted delivery. Anil is on strike, and the non-striker Tausif is in non-striker's end. So very good opening pass out there in the middle for IHS. For the next ball, pulls that one nicely. Good piece of fielding there by the fielder. Mix up, chance of run out. Good throw coming from the fielder, and it's gone. Total misunderstanding between the wicket between Anil and Tausif, costing a big wicket here. And the excellent piece of fielding there by the fielder. Actually, there is a possibility of a single there, but because of that yes and no between these two, the batters are costing a big wicket here, and it's not a good start here for IHS. Team IHS there playing their second match. They defeated Maidan Friends in their first match. So new batsman in is Chida. Walking towards the middle. Early entry here for Chida. In the very third ball of the innings, he is coming to the middle. That's only because of the misunderstanding between the wicket, the costing a wicket. So bowler Imran, right arm over the wicket, bowls beautifully bowled, perfect delivery. The perfect delivery for the fresh leg, and it just came in Chida. And it was a perfect delivery for any batter, and ball just moving from the good land spot. The wicketkeeper behind them standing well up to the stumps. Nice collection, back to bowler. It's a very good over so far. Imran, 4 time in this over. Again down the leg stump, batsman almost flicks it off his legs down to find leg region for a easy single. This is a declared area, so that with that declared they open the account with the single. The first run comes up for IHS, the one for the loss of 1 wicket. Imran, the bowling in the power play overs, keeping one fielder in the deep long on and one at deep mid wicket, and one more fantastic delivery there from Imran. He's just enjoying the condition in the evening. He's bowling with some extra pace, and even very good line and length is maintained so far. Imran again to Chida. Chida this time going for the big swing of the bat, but ball is missing his bat. Wicketkeeper not missing the opportunity to gather the balls. A fantastic start here from bowler Imran. Just a single run conceded in that over. After completion of 1 hour, it's 1 for the loss of 1 wicket. IHS. Jamal, one more very important player, the player for the side of Yekkur Blasters. So Jamal is the one who's contributed very well in the previous match against team Yekkur Baba. All-round performance from him. Yes.
So second over of the power play, and straight away one fielder at a deep long on and deep mid wicket. Two fielders in the onside region. This time, what a shot! That was a magnificent stroke. The Anil's speciality. What a player he's been. He's definitely the one who can be the entertainer when he's get going. What a shot that one. Little bit outside the line of leg stump, and he just lofted that one down to deep backward square leg boundary for a huge 6. The way he's batted in the previous match, and he's just continuing that form in this particular match as well for his team. So open that one, open the account with a big one, Anil, and scoreboard now moves on to 7 on the board. The fantastic view of this cricket ground. Just a train which is passing just in front of our commentary box, and the highway also passing. This time went for the big shot, ball high up in the air, opportunity for the fielder, and he did drops the catch. It's definitely going to be expensive drop. The lot of time for one of the fielder can judge the catch, or whether it is a mid on or short mid wicket fielder, even the deep mid wicket fielder charging from the deep. It's definitely going to be a big opportunity which is missed out by the Blasters. You can't give the opportunity to batter like Anil. They will definitely going to capitalize. They got a potential. Hard luck. Left arm round the wicket, swinging that one, but against the line of the delivery. Line is outside the line of off tempo. Anil wanted to swing that one, one of his favorite shot down to deep backward square leg, but ball almost missing his bat. Rightly so. Good change of line. Good thinking there from Jamal, seeing the intention of the batsman, and scoreboard remains on 9 on the board. Left arm round the wicket again, going for the big shot, not quite getting hold of that and properly. Misunderstanding between the wicket. The same kind of run out which taken place in the first over. As Anil just watching the ball, he's not watching his partner. You know exactly, he wanted to deal with this power play. That's the one reason behind this Anil's intention. That this is the last over of the power play. He wanted to take the strike. All the deliveries of this over. So far 4 deliveries of this over. This time went for the reverse sweep again. That was extra bounce which is defeats this bat. Good going, good comeback here by Jamal for the bowler's point of view. It's not so easy, isn't it? When you were punished with a 6 in the first ball, then you need to come back very strongly. And so far he is able to keep this man Anil quiet with his excellent line and length. 9 on the board. Jamal from the highway end. Is not satisfied the field set. Square leg fielder. 2 fielders left and right of square leg umpires. One in front of square. One which is behind the square. Jamal. Left arm over the wicket. This time swings at one. Fielder no! This is a total misjudgment. I don't know why the fielder is charging to that catch. Ball is just came to him where he was standing. No need to rush to that catch, isn't it? Absolutely, it's a disaster for the fielding team. I want to wait for the umpire signal. We need to go into a boundary. It's a boundary. Yes, umpire already signaled it's a boundary. So what a disaster for Blasters. They missing the 2 golden opportunities in that over. What could be outstanding over from Jamal because of that fielder which is not really anticipating very well. So 2 overs completed after completion of over number 2. It's 13 on the board. I just 13 for the loss of 1 wicket. 12 runs came from that over of Jamal. Imran to continue his second and last over of his quota. Right, what a delivery. What a delivery that one. Absolutely. We're not really watching that any clue of the kind of ball because of the square angle commentary box. Might be that ball is outswing delivery. Is going away from the right-handed batsman. Again looking for the pull shot. What a fantastic bowling here from Imran. He starts well with the first over. He bowled magnificent over of just single run.
Then he's continuing his second over as well. So far, 2 deliveries, 2 dotted deliveries. The pressure now for the batter Chida, because he played almost 5 dotted deliveries and he got only single run from the bat. Strong breeze is passing in the middle, in the ground. Again, a nicely driven. This time he's got a contact with the bat, but protection has been given in the deep. Wideish long on field. As the batsman have to settle for the single. The fielder is searching for the ball. He's still searching for the ball, but Anil is wanted to keep the strike. But once he realizing that the fielder is still searching the ball, he's just calling his partner for the second run. And they completed that couple of runs as well. With that couple of runs, scoreboard moves on to 15 on the board. Coming down the track, lofted that one, handsome looking drive. Almost the ball is passing over the cameraman of Namana TV, just missing it. Just going over his umbrella. His protection is given for him from the sunlight. What a fantastic stroke there from Chida. Just breaking the shackle. He's been a quiet for a long time, but this time is the right time. Frees his arm. Again going for the pull shot. Almost is utilizing the depthness of the crease type. Just going back to pull that one. Luckily there was a very close to the stumps in the negation, Chida, but he's just survived. Single, 22 on the board for the loss of 1 wicket. Sachin ball. Wow, beautifully balled. Imran, absolutely perfect one. The deviation here definitely defeats the batsman Anil. It's a good over, and good over in the sense actually. It's come back very well. His score is conceded 9 runs in that particular over. So after completion of over number 3, it's a comeback over for IHS, and they managed to score 22 runs in 3 overs. That means 7.33 runs, the run rate progressing here. Team IHS knows that they're playing against one of the better team, Yekkur Blasters. They played a good game of cricket against Team Yekkur Baba. G1 brought into attack, starts with the delivery which is outside the line of off time. They're going for the quick single. They managed to complete that one. Shida almost turning towards a danger end, towards the non-Sega's end, and responded very well by Anil. So with that single, score numbers on to 23 for the loss of 1 wicket. Outstanding cricket tournament is progressing here in the name of Yekkur Premier League 2022 as G1 again. Oh, what a shot! If any ground, it might be the maximum, but here it was the minimum. Just a single. Couple? No, single. It's a single. Wait for the umpire signal. It's a single. As with that single, score numbers on to 24 on the board. Unfortunate. Umpire asking for extra ball because it's very difficult to find the ball behind the wicket. So Anil picked up a single for that. Excellent hook shot, in fact, not a full. It's just like ball is going over his shoulder level, and it hooks that one down to deep fine leg for a single. Now they got the ball, and thanks to the volunteers of Yekkur Premier League. It's bringing the ball very quickly, and 20 scoreboard is 24 on the board. So over number 4 is in progress, and G1 will going to continue third time in this over. 2 balls, 2 runs conceded so far. So Anil looks comfortable in the middle so far. He's batting on 13 with the alpha of 6 and a boundary.
This time Anil off the back foot is so strong in that particular stroke. Look at the placement. Absolutely terrific. He's a master class as far as driving the ball towards extra cover region is concerned. Absolutely master class strokes. It is nothing much wrong with that line and length, because the way that the batsman Anil transferring his weight onto the back foot, it's not so easy stroke to play when you are punching the ball off the back foot. And look at that, the way he knows exactly where the fielder is. There's a long off and extra cover. Still he managed to get the gap. Extraordinary batting performance here from Anil. So this time full Z1, not really getting that much of shot enough to full Z1 down to square leg. He's just adjusting the stroke by hitting the ball towards deep mid wicket region. With that single scoreboard moves on to 29 on the board. He's batting on 18 now, Anil. G1. Using his lovely delivery in the the batsman coming down the track, charging down the track as a G1 quickly realizing that it's a premeditated. The batsman coming down the track before the bowler is delivering the ball. That's why the G1 has got a right idea to where to pitch the ball. He's just shortening the length, just bowling outside the line of off stump. The wicketkeeper behind the stump did the rest, and back to bowler. G1 again. Right, I'm over the wicket, short pitch delivery, full Z1 again. It's not a sweetest part of the bat in the relegation. Just bottom of the bat comes into play in the relegation for that full shot. Just a single for Chidu. So after completion of over number 4, it's a 30 on the board. And IHS are looking in a comfortable position. And they're scoring the runs almost 7.5 runs per over. The 7.5 runs per over. The projected score will be 15 plus 30 is 45. In the similar run rate, if able to get the runs, they will going to get 45. The completion of over number 6. Wait and see. Can they able to accelerate, or they will stick with this run rate? Wait and see. So one more Imran came into middle. It's Imran BC with jersey number 56. To the right under batter Chida. Chida so far is playing a good role. And another end. The spinner is in interaction again, coming down the track, not really able to hit the ball properly. But even the fielder is not able to read the turn of spin of that strokes. And a couple of runs here for Chida then. A little bit comedy of error in the negation there from the fielder. And especially the backward point fielder need to realize that the ball is almost coming, ball is spinning, because the batsman tried to cut the ball. And all the chances of ball is defeating the fielder. This time lovely full shot, but I wait for the umpire signal. What kind of a score? It is going to be a 6 signal by umpire. Very short pitch delivery, isn't it? It's not a kind of delivery to ball to the batsman like Chida. And it's an easy pick here for Chida. Short pitch, and short pitch in the sense it was a very easy short pitch delivery for any right-hander batsman. Definitely they're going to enjoy that short pitch delivery, and score jumped into 38 on the board for the loss of 1 wicket. What a fantastic partnership is progressing here between Chida and Anil. Imran BC little bit under pressure now. Right arm, left arm, round the wicket. Again charging down the track. Opportunity for the fielder at long off. And the G1, I think so. The fielder did the deep long off. Will going to complete the catch. And the wicket number 2, which is back into pavilion. The well played innings here from Shida. Absolutely good innings for his team. He scored at 23 valuable runs before he's back into pavilion, and is responsible for the very good partnership between him and Anil. The partnership which is really brought
So one more leg by signaled by umpire. With that single scoreboard now moves on to 39 on the board. Imran, BC, fifth time in this over. Lovely shot. It's going to be a maximum. What a fantastic strike. Oh, magnificent stroke there from Anil. What a great shot that one. It's the ball is bent many a miles towards the wideish long on. With that six scoreboard now moves on to 45. This time again played it down to deep long of region for a single. With that single scoreboard now moves on to 46 on the board. 46. It's one more the better over. Expensive over bowled by Imran, and in that particular over they got 16 runs. It's a highly expensive run over there from Imran BC. So 46 on the board, completion of over number 5, last over remaining in the innings of IHS. Such important attack. Anil is batting on quarter century, 25. Oh, that is opportunity, hard opportunity, tough opportunity for that square leg fielder. And Anil managed to pick the single for that. And with that single scoreboard numbers on to 47 on the board. And Anil's individual score now moves on to 26. Sachin. Right arm over the wicket, lofted. It could be a chance for the fielder at mid wicket and comfortably held there by the fielder. So the one more wicket is back into pavilion. Shabir, the batsman, is out for duck without disturbing the scoreboard. He is just walking towards the pavilion. And of course, once it looks like when he hits the ball, which a sweet sound came from the bat, but it is not from the middle of the bat. In fact, it played it very high. If you're able to hit that one a little bit in a flatter version, you can get the distance for that. And the good comeback here by the bowler. Safwan is the new batsman in. Beautifully balled, appeal for leg before it's gone. Flum in front of wicket. No doubt at all in the occasion. Ball is pitched in a line. And batsman across the line tried to swing that one in the onside region. Missing the line completely. And the wicket number, one more wicket is back into pavilion. 47 on the board. A leg before wicket, and umpire Dikshit has got no hesitation in his mind to raise his finger. Safwan, no option at all. You know exactly dealing with the final over, the need to throw the bat, but he's just choosing the wrong delivery for the big shot. And 3 balls remaining in their innings. IHS 47 on the board. 1,000 rupees announced for 1,000 rupees for hat-trick. Yes, Unni Krishnan is very, very happy seeing the performance of Sachin, one of the backbone of this cricket tournament as well. So Unni Krishnan, so want to see his pace bowler to get the hat-trick. This time chance of run out, but not a hat-trick, it's a run out. It's a hat-trick for the team actually, and one more wicket is back into pavilion. There's a wicket number 3 which is back in the pavilion in this particular over. So far it's a good last over from Sachin. Score remains on 47. 2 balls remaining in that over.
Alike. Alik. Alik back. Alik came into middle as a number 7 batter, but strike in the hands of Anil. Oh, what a delivery that one! Absolutely, Anil came into strike after that. 2 wickets, which is falling in front of him. 3 wickets, but he came into strike. But Sachin has a different idea as he bowls one more dotted delivery. So far, just a single run in that last over. Final time in this over. Right up over the wicket, Anil pulls that one right in the gap towards a deeper, whitish long on boundary for 4 runs. Nice way to finish the innings here from Anil. What a great innings he played. He remains unbeaten. And looks like he scored a 30 valuable runs. I want to check out now. As scoreboard is now exactly 51. And they set a target of 52 to win the match for the Blasters, Yekkur Blasters. And where is he? Can Yekkur Blasters able to get this 52 or not? But it's a good over. And Sachin is bowled a very good over. The over which is required, just a boundary which is came in that last over, then a single. Altogether the 5 runs. It's not a bad over. And but what innings Anil is played here. 30 runs unbeaten in just 17 deliveries with the help of 2 sixes and 3 boundaries. Absolutely, he played a enterprising cricketing stroke, and it's an entertainment innings from Anil. We'll take a short break here and wait and see how well the Blasters will go into bounce back here. Can they blast some runs here against IHS? We take a short break. After short break, my co-commentator and will go in to take over the microphone. It's over to Zakir for the further explanation of the match in our national language, Hindi. Thank you. Lion Kings and Hose. Captains, please come to mic box. धन्यवाद सतीश जी, बेहतरीन तरीके से मैच का आंखों देखा हाल सुनाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय जुबान पर। और बहरहाल कुछ क्षणों पर दूसरा पार यहां पर शुरू होने जा रहा है। यक्कुर ब्लास्टर्स की सलामी बल्लेबाज मैदान पर उतर चुके हैं और दूसरी छोर पर क्षेत्र रोशन करने के लिए खिलाड़ी भी उतर चुके हैं। इस मैच के टॉस को जीता था यक्कुर ब्लास्टर्स ने और उन्होंने पहले गेंदबाजी का फैसला किया है। गेंदबाजी का फैसला किया था टीम ब्लास्टर्स के कप्तान ने और पहले टीम एचएस की टीम को बल्लेबाजी करने का आमंत्रण किया था और उन्होंने कुल मिलाकर 6 ओवर खेलने के बाद 52 रनों का लक्ष्य रखा है। और बहरहाल मैच देखिए शुरू होने जा रहा है। पहली ओवर लेकर सफान जहीर हाईवे एंड से निर्णायक रवि उपला को पार करते हुए और सलामी बल्लेबाज के रूप पर जमाल
जमाल स्ट्राइक रन पर और 9 स्ट्राइक रन पर सचिन। जमाल के लिए सफान गेंदबाजी कर रहे थे, लेकिन अचानक गेंदबाजी करने पे रुके क्योंकि लाइन और लेंस से बिगड़ने की ड्राइव किया था जमाल ने, लेकिन रन की कोई गुंजाइश नहीं थी। क्षेत्र रक्षक ने बेहतरीन तरीके से गेंद को लपक लिया। शॉट मिड ऑन के जो मिड विकेट की दिशा पर क्षेत्र रक्षक तैनात थे, एक बार फिर से तैयार, उल्टे बल्ले खेलने का प्रयास किया था। रन आउट होने का खतरा, और खतरा जरूर बन सकता था वहां पर सचिन के लिए, लेकिन आखिरी मौके पर बाल बचते हुए अगर सफर ने गेंद को विकेटों पे थ्रो कर पाते तो निश्चित रूप पर सचिन के लिए खतरा बन सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। भाग्यशाली रहे वहां पर, भाग्य ने भरपूर साथ देते हुए सचिन का। और इस समय एक बार फिर से तैयार जमाल, बेहतरीन गेंदबाजी का प्रदर्शन वहां पर सफान द्वारा। काफी अनुभवी गेंदबाज है सफान वहां पर रहा, जो कि जमाल का विकेट को प्राप्त करने में कामयाबी मिलती हुई। सफान को और निश्चित रूप पर पहला झटका यहां पर गिरता हुआ जमाल के रूप में। बेहतरीन गेंदबाजी का नजारा देते हुए यहां पर सफान अपने अनुभवी का भरपूर इस्तेमाल करते हुए इस मैच पर, और जमाल के आउट होने के बाद नए बल्लेबाज का आगमन होते हुए क्रीज पर रजत। चार गेंदें फेंकी जा चुकी है, कोई रन्स अब तक नहीं बना है स्कोर बोर्ड पर। एक विकेट गिर चुकी है जमाल के रूप में। फिर से अच्छी गेंद वहां पर सफान द्वारा, रजत ने ऑन साइड की दिशा पर फ्लिक किया है 1 रनों के लिए, और इस 1 रनों के साथ रनों के सिलसिला यहां पर शुरू हो चुका है। इस 1 रन से अपना खाता जो कि खुलता हुआ रजत, और पारी का भी यहां पर खुलता हुआ नजर आता है। 1 विकेट के नुकसान पर 1 रन यहां पर बनता हुआ पहली ओवर की चालती पर। सचिन जो के बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं, सफान गेंदबाज क्षेत्र रक्षण बन परिवर्तन करते हुए, सजाते हुए पावर प्ले चलता हुआ, और इस समय उठाना चाहते थे पूरी तरीके से चकमा देते हुए सफान सचिन को, और इसी के साथ बेहतरीन ओवर की मुकम्मल होती हुई, और पहले ओवर के समाप्ति के बाद रन संख्या बढ़कर एकमात्र रन यहां पर बन चुका है। 1 विकेट जो कि गिर चुके हैं, जो कि जमाल के रूप में। और इस समय निश्चित रूप पर दबाव जो कि बढ़ता हुआ ब्लास्टर्स के बल्लेबाजों के ऊपर, क्योंकि हर एक डॉट गेंद जरूरी रन रेट को बढ़ता हुआ। पुल किया है वहां पर रजत ने, सिर्फ 1 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा, और इस 1 रन के साथ रन संख्या बढ़कर बन चुका है 2 रन। 52 रनों का लक्ष्य का पीछा करते हुए यक्कुर ब्लास्टर्स की खिलाड़ी।
और अच्छी गेंदबाजी यहां पर करते हुए जोरदार अपील, आत्मविश्वास से भरा हुआ अपील, लेकिन अंपायरों पर यानी निर्णायक पर कोई दबाव नहीं हुआ पर। सचिन सामना करने के लिए तैयार है, एक बार फिर ड्राइव कर दिया हंसर की दिशा पर, रन आउट होने खतरा जरूर बन सकता था अगर गेंद विकेट पे पड़ती तो, ऐसा नहीं हुआ। भाग्यशाली रहे वहां पर सचिन, लेकिन इस रन के साथ धीरे धीरे रन बढ़कर बन चुका है 3 रन, जबकि दूसरी ओवर की चालती पर पावर प्ले चलता हुआ। पावर प्ले में ज्यादातर रनों की बारिश होती है, लेकिन इस समय धीमी गति के साथ रन से यहां पर बनता हुआ नजर आती है। उठाना चाहते थे, बल्ले का बाहरी किनारा लगा और इसी के साथ रजत की बारी समाप्त होते हुए दूसरा विकेट का पतन होता हुआ रजत के रूप में। मायूसी के साथ अपने पेलन वापस लेते हुए रजत, और उनके आउट होने के बाद नए बल्लेबाज का आगमन हुआ है इस समय। रजत के आउट होने के बाद इमरान नए बल्लेबाज आ चुके हैं स्ट्राइक रन पर। कैट करना चाहते थे, काफी चतुराई के साथ गेंदबाजी करते हुए वहां पर शब्बीर, काफी अनुभवी गेंदबाज है शब्बीर टीम की ओर से। कवर की दिशा पर काफी खूबसूरत अंदाज के साथ गेंद को ड्राइव कर दिया है, गेंद सीमा की ओर जाते हुए आखिरकार रोका गया है। गेंद को कम से कम 2 रन जरूर अपने टीम के लिए बचाया है वहां पर क्षेत्र रक्षक ने, और इसी के साथ ओवर की समाप्ति हो चुकी है, यानी इसी के साथ पावर प्ले भी खत्म होता हुआ। कुल मिलाकर लगातार दूसरे ओवर की समाप्ति के बाद रन संख्या बढ़कर बन चुका है 5 रन 2 विकेट गिरने के बाद। बचे हुए 24 गेंदों पर 47 रनों की दरकार है इस मैच को जीतने के लिए। यानी तकरीबन 11.20 से रन की दरकार, रन रेट से यहां बनानी होगी अगर इस मैच की जीतनी ओर जाना है तो। तकरीबन 12 की जरूरी रन रेट से इस रन को बनाना होगा अगर इस मैच के लिए जीतना है तो। सारी जिम्मेदारी सचिन और इमरान के कंधों के ऊपर आ चुकी है। गेंदबाजी की कार्य सौंपा है टीम के कप्तान ने हालिक को गेंदबाजी की जिम्मेदारी सौंपा गया है। इस समय हालिक तैयार, हाईवे एंड से निर्णायक रवि उपरा को पार करते हुए राइट आर्म ओवर द विकेट से गेंदबाजी करते हुए बाएं हाथ के बल्लेबाज सचिन को फूल कर दिया है, गेंद सीमा रेखा पर टिप्पा का कर जाती हुई 4 रनों के लिए। इस 4 रन की यानी इस चौके की मदद से स्कोर बोर्ड पर उछलकर रन यहां पर बन चुका है 9 रन। चौके और छक्कों की दरकार है अगर इस मैच को जीतना है तो यक्कुर ब्लास्टर्स के लिए। हर एक ओवर पर 2-2 छक्के कम से कम यहां पर छड़ना चाहिए अगर मैच को जीतना है तो। फिर से उठा दिया है वहां पर क्षेत्र से, उसके पीछे टिप्पा लेने के बाद गेंद को गैदर किया है, रन आउट होने का खतरा हो सकता था, विकेटों पर पड़ी
गेंद विकेटों पे पड़ी लेकिन अंपायरों पर कोई दबाव नहीं। आखिरी मौके पर दीक्षित जो के लेग अंपायर के रूप में तैनात है उन्होंने नकार दिया है पूरी तरीके से और 2 रन दौड़कर भी पूरे कर चुके हैं और इन 2 रन 7 रन संख्या बढ़कर बन चुका है 11 रन। जबकि 2 विकेट के नुकसान पर बेहतरीन रनिंग बिटवीन द विकेट इन दोनों बल्लेबाजों के बीच, विकेटों के बीच काफी बेहतरीन तरीके से दौड़ते हुए इन दोनों बल्लेबाज, काफी तालमेल, काफी हद तक इस पारी को संभालते हुए ये 2 बल्लेबाज धीरे धीरे साझेदारी भी बढ़ती हुई। सख्त जरूरत थी साझेदारी की टीम ब्लास्टर्स को अगर इस मैच को जीतना है तो। वहां पर जोरदार शॉट मारने की प्रयास किया था लेकिन सही तरीके पे बल्ले पे नहीं आई थी गेंद, सीधे विकेट कीपर की दिशा पर गेंद गई। सिर्फ 1 रन जरूर मिलेगा और ये 1 रन के साथ रन संख्या बढ़कर बन चुका है 12 रन। लंबे शॉट की दरकार है, छक्के और चौकों की बौछार करना होगा अगर इस मैच को जीतना है तो यक्कुर ब्लास्टर्स को, बल्लेबाजों को। हालिक क्षेत्र से जाकर गेंदबाजी फिर से करने के लिए तैयार, उठा दिया है, देखना पड़ेगा गेंद सीमारे के कार पड़ते हैं नहीं और इस समय गेंद सीमारे का पार हो चुकी है। 6 रन के लिए बेहतरीन छक्का जिसकी दरकार थी रनों की, यहां पर इमरान वो काम यहां पर करते हुए अपने टीम के लिए। इसी तरीके की शॉट की जरूरत है अगर इस मैच को जीत की ओर ले जाना है तो टीम ब्लास्टर्स को, इन दोनों बल्लेबाजों को। लाइन से भटकते हुए हालिक, छोटी गेंद थी, भरपूर फायदा उठाया है इमरान ने। आगे आकर ड्राइव करना चाहते थे, काफी बेहतरीन वापसी वहां पर हालिक द्वारा, छक्के देने के बाद अच्छी वापसी, डॉट गेंद साबित होते हुए हालिक के लिए छक्का देने में कामयाबी हुए। जोरदार शॉट मारने का प्रयास किया था इमरान ने। इस बार लक्ष्य पर गेंद बल्ले का बाहरी किनारा लगकर सीधे शॉट फाइनल की दिशा पर गेंद गई, यानी 1 रन का इजाफा। 1 रन का इजाफा यहां पर मिलता हुआ टीम यक्कुर ब्लास्टर्स को। इस 1 रन के साथ रन संख्या बढ़कर बन चुका है 19 रन, तकरीबन 6.01 से रन रेट को आगे बढ़ाते हुए, यानी जरूरी रन 19 ऑन द बोर्ड, द कंप्लीशन ऑफ 3rd ओवर, द लॉस ऑफ 2 विकेट। बचे हुए 18 गेंदों पर 33 रनों की दरकार है इस मैच को जीतने के लिए। लगभग 11.00 की वजह से रनों को बनाना होगा अगर इस मैच को जीतना है तो इन दोनों बल्लेबाजों को। और गेंदबाजी की जिम्मेदारी सौंपा है टीम की कप्तान सफान को अपना कोटा समाप्त करने के लिए, क्योंकि एक बेहतरीन गेंदबाजी की थी पहले ओवर पे। क्या इस समय विकेट प्राप्त करने में कामयाब हो पाएंगे सफान, यह तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल सचिन सामना करने के लिए तैयार। सफान की ये गेंद को ड्राइव करना चाहते थे, आश्रम से काफी दूर थी, बल्ले का बाहरी किनारा लगा और उस वजह से गेंद जो है शॉट यानी 3rd मैन की दिशा पर जाती हुई गेंद। 1 रन का इजाफा, इस 1 रन के साथ रन संख्या बढ़कर 20 रन यहां पर बन चुका है। फुलटॉस गेंद पूरी तरीके से चकमा
वहां पर रन आउट होने का खतरा जरूर हो सकता है, लेकिन सचिन निकले थे क्रीज से, लेकिन इमरान ने दौड़ने से मना कर दिया क्योंकि वे जानते थे अगर वे दौड़ पाते तो जरूर मुश्किल में पड़ सकते थे, उनका विकेट खतरे में बन सकता था, लेकिन समझबूझ के साथ वो क्रीज से नहीं निकले और अपने विकेट जो के बचाते हुए। सचिन ने व्यक्तिगत स्कोर 9 रन बनाकर अपने पहलवान वापस लौट चुके हैं और उनके उठाने के बाद नए बल्लेबाज आए हैं हमजा उजरे। काफी बेहतरीन बल्लेबाज है, काफी अनुभवी बल्लेबाज है। क्या इस समय अपना योगदान भरपूर दे पाएंगे जिसकी दरकार है अपने टीम के लिए? मैं पहले कहता आ चुका हूं, मुश्किल वक्त है ना, हर खिलाड़ी की कद बड़ा होता है ना पद बड़ा, जब मुश्किल में करा वही सबसे बड़ा। बेहतरीन गेंद, वहां पर गति की गेंद थी, समझबूझ के साथ गेंदबाजी करते हुए सफान अपना अनुभव का भरपूर इस्तेमाल उपयोग यहां पर करते हुए जो हमजा समझ पाए सफान की धीमी गति की गेंद को और आखिरी मौके पर अपने गति का परिवर्तन किया है सफान ने, और उस वजह से हमजा जो बहुत बड़ा झटका मैं कहूंगा उनके आउट होते हुए नजर आती ही, और मायूसी के साथ अपने पवेलियन वापस लौटते हुए हमजा, और उनके आउट होने के बाद नया बल्लेबाज का आगमन हुआ है इमरान सीनियर और इमरान जूनियर। इमरान 20 आए हैं बाएं हाथ के बल्लेबाज। सफान काफी एक्सपीरियंस जिसे कहते हैं अंग्रेजी में, काफी अनुभवी भरा हुआ गेंदबाज सफान। देखिए किस तरीके से गेंदबाजी यहां पर करते हुए, समझबूझ के साथ, चतुराई के साथ गेंदबाजी करते हुए जिसकी दरकार थी अपने टीम के लिए। और इस समय फिर से सामना करने के लिए तैयार बल्लेबाज इमरान कोडी। वहां पर बेहतरीन तरीके से विकेट को प्राप्त किया है। इस समय चतुराई के साथ रफ्तार से फेंकी गई गेंद थी और बल्ले का बाहरी किनारा लगकर सीधे विकेट कीपर अनिल के दस्तानों में गेंद। इसका नतीजा निकला इमरान की पारी समाप्त, इमरान कोडी की पारी समाप्त। सफान एक बेहतरीन गेंदबाजी यहां पर करते हुए तीन विकेट प्राप्त कर चुके हैं सफान अपने गेंदबाजी में। आखिरी गेंद शेष है इस ओवर की और उनके आउट होने के बाद नए बल्लेबाज का आगमन हुआ। द लेजेंड ऑफ दिस ग्राउंड कहते हैं अंग्रेजी में, काफी अनुभवी भरा होम ग्राउंड जिसे कहते हैं, उन्नी कृष्णन, उनका आगमन हुआ। इस समय काफी अनुभवी बल्लेबाज है इस मैदान का, काफी समय से खेलते हुए आ रहे हैं। अच्छी तरीके से क्या अपना अनुभव का भरपूर इस्तेमाल करने में उन्नी कृष्णन कामयाब हो पाएंगे, ये तो वक्त ही बताएगा। 21 रन यहां पर बन चुका है। सफान की आखिरी गेंद और अच्छी गेंद को सम्मानजनक स्ट्रोक दिया है वहां पर। काफी बेहतरीन ओवर की समाप्ति होते हुए सफान की
कुल मिलाकर 4 ओवर की समाप्ति के बाद रन संख्या बढ़कर बन चुका है 21 रन। यानी इसका मतलब है अब बचे हुए 12 गेंदों पर 31 रनों की दरकार है इस मैच को जीतने के लिए। इकतीस रन की दरकार है इस मैच को जीतने के लिए। मुश्किल है जरूर लेकिन नामुमकिन नहीं। 5 विकेट अपने हाथों में लेकर इमरान बाएं हाथ के बल्लेबाज इस समय सामना करने के लिए तैयार, और इस बार उठाया है लॉन्ग ऑफ की दिशा पर, लेकिन क्षेत्र रशवा पर तैनात। इमरान की बारी समाप्त होते हुए यहां पर छठा झटका यहां पर गिरता हुआ। साजन आए हैं नए बल्लेबाज, अपने धीरे धीरे कदमों को बढ़ाते हुए क्रीज की ओर। मुश्किल है जरूर लेकिन नामुमकिन नहीं, कुछ भी हो सकता है। जब तक इस पारी की आखिरी गेंद पे के नहीं जाएंगे इस मैच को कौन सी टीम जीतेगी यह तो वक्त ही बताएगा, क्योंकि इस समय अनिल तैयार और उठाना चाहते थे, काफी समझबूझ के साथ गेंदबाजी करते हुए। बल्लेबाजी में भी तो कमाल जरूर किया था अनिल ने, नाबाद 30 रन बनाए थे अपनी टीम के लिए। इस समय गेंदबाजी पर कमाल दिखाते हुए बार बार डॉट गेंद यहां पर गिरती हुई अनिल द्वारा, और इस समय उठाना चाहते थे लेकिन गेंद हवा में है। अनिल ने आखिरी मौके पर गेंद को लपक लिया है और एक और विकेट का पतन होते हुए साजन की बारी समाप्त। 7वां झटका यहां पर गिरता हुआ और उनके उठाने के बाद जावेद जो के नए बल्लेबाज अपने कदमों को बढ़ाते हुए क्रीज की ओर। काफी बेहतरीन ओवर यहां पर फेंकते हुए अनिल। जावेद अनिल की गेंद का सामना करने के लिए, और समय अच्छी गेंद, जोरदार अपील, लेकिन निर्णय के ऊपर कोई दबाव नहीं। फिर से एक और डॉट गेंद, लगातार 5 डॉट गेंद यहां पर होती हुई। इस समय मेडन विकेट ओवर का मुकम्मल होता हुआ बेहतरीन ओवर की समाप्ति अनिल द्वारा। यानी अब बचे हुए 6 गेंदों पर 31 रनों की दरकार है। यानी इसका मतलब है कम से कम 5 छक्कों की जरूरत है इस मैच को जीतने के लिए। क्या उन्नी कृष्णन 5 छक्के जड़ पाएंगे अपनी टीम के लिए? गेंदबाजी पे बुलाया है टीम के कप्तान ने। सुमित कितली, सुमित किटली को गेंदबाजी को बुलाया गया है। आखिरी 6 गेंदे 31 रन। इस बार उठा लिया है उन्नी कृष्णन ने, लेकिन नाकामयाबी मिलती हुई। कोशिश तो भरपूर किया था उन्नी कृष्णन ने, लेकिन टाइम नहीं कर पाए और आखिरकार अपने विकेट जो कि खोते हुए मायूसी के साथ अपने पेविलियन वापस लौटते हुए 8वां झटका यहां पर गिरता हुआ उन्नी कृष्णन के रूप में। 5 गेंदे 31 रन, कम से कम 5 छक्कों की जरूरत है। लॉन्ग ऑन की दिशा पर उठा दिया है, लेकिन एक ही रन से संतोष होना पड़ेगा, क्योंकि एक टिप्पा गाने के बाद
आगे आकर निकलकर डाइव कर दिया है लॉन्ग ऑन के दिशा पर। सिर्फ एक रन यहां पर मिलता हुआ, 1 या 2 रन से मैच बात नहीं बनने वाली है। मेरे ख्याल से इस मैच को पूरी तरीके से इस मैच को जो कि आईएचएस ने जीतते हुए नजर आ रही है। और इस समय ड्राइव किया है, सिर्फ 1 रन ही मिलेगा और इस मैच का जो नया यक्कुर ब्लास्टर्स की डूबती हुई नजर आ रही है। जैसे यहां पर सूरज डूबता हुआ नजर आ रहा है इस मैदान से, उसी तरीके से उनकी नैया भी डूबती नजर आ रही है। आगे आकर ड्राइव करना चाहते थे, हालांकि कैच जरूर बन सकता था, लेकिन एक टिप्पा पड़ने के बाद गेंद को गैदर किया क्षेत्र रक्षक ने और 1 ही रन से संतुष्ट होते हुए इस 1 रन के साथ रन संख्या बढ़कर बन चुका है 25 रन। और इसी के साथ आईएचएस ने लगातार इस मैच को जीतकर 2 और अंक प्राप्त किया है और धन्यवाद देते हैं। और जबकि इस मैच के बाद अगला मैच जो कि खेला जाएगा लायन किंग्स बनाम होज वॉरियर्स के दरमियान। मैं यहां पर बुलाना चाहूंगा मेरे साथी कमेंटेटर मिस्टर सतीश जी को, जो अंतरराष्ट्रीय जबान पर। धन्यवाद। I request Anil Bengre, please come and collect your man of the match. Anil Bengre of team IHS for his outstanding performance, all-round performance. In fact, he scored 30 valuable runs and he bowled 1 maiden over. So he deserves this man of the match award. ದಯಮಾಡಿ IHS ತಂಡದ ಅನಿಲ್ ಅವರು ಕಮೆಂಟ್ರಿ ಬಾಕ್ಸ್ನ ಮುಂದಗಡೆ ಬರಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ತಮ್ಮ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು. Anil will going to collect man of the match for his all-round performance from Salim. One more outstanding cricketer, Salim, has played for Adi Maheshwar cricketers, Lions cricketers, and he's just presenting the trophy to Anil Bengre for his outstanding performance from the bat and ball. So Lion Kings on the toss selected to field first against Oz Warriors. So that opening batters of Oz Warriors, they came into One minute.
10 ನಂಬರ್ல CR7 10 ರಮೀಸ್ ఒక CR7 ನವಾಜ್ Ramesh and Nawaz are the two opening batters out there in the middle. And on behalf of Lion Kings, the bowler bowling the first over. Left arm around the wicket, pass ball, beautifully bowled, well pitched up delivery, but ball just going away from the right-hand batsman Ramesh. So umpire Rabi Uppala seeing that the line of the delivery takes his own time to decide that wide and is signalled wide. First one coming up here for Oz Warriors, one without loss of any wicket. So Nawaz bowling from the highway end. Left arm down the wicket he bowls. This time Ramesh went for the big shot. Ball high up in the air. Fielder is none underneath it. And long on fielder taken the comfortable catch in the end. And Ramesh's innings comes to an end, is out for duck. One for the loss of 1 wicket now. Oz Warriors got a shackling start. Tried to take the advantage of the fielding restriction, but didn't got the elevation he's looking for. He got the elevation, but didn't got the distance he's looking for. And there is no chance at all for any big shot in the occasion, because ball is just moving from the good line spot. He wanted to hit the ball against the line and pays the penalty for that. After the dismissal of Ramesh, new batsman in. Nawaz again. This time lovely shot, beautifully played and up and over towards the deep cover point boundary for 4 runs. Lovely shot, delightful stroke. He got the wicket outside the line of off stump, and batsman off the back foot plays it over the head of Rupesh at cover point, and once it defeats the infield, and no chance at all for the field to chase the ball. And Simak has got a good start from the bat and score moves on to 5 on the board. Left arm round the wicket he bowls, going for the pull shot straight to the hands of fieldsman. Chance of run out there, but not quick enough to make the run out. But the batsman is quick enough to complete the single in the negation, and Nawaz completes Nawaz running towards the danger end and completes the run. So one more run is added to total. Scoreboard now moves on to 6 on the board for the loss of 1 wicket. The wicket of Ramesh is back into pavilion too early. The wicket which is taken there by Nawaz in his first over. 6 for the loss of 1 wicket. Again Nawaz, left arm. Oh, lovely delivery. Flum, absolutely flum in front of wicket. Look at where the boot. It's right in front of a middle stump, isn't it? The back foot. And what a fantastic stuff here from Nawaz. This is one of the best Yorker line deliveries so far in this tournament. It's unplayable. Absolutely unplayable Yorker line delivery there from Nawaz. Hitting the boot right in front of a middle stump of Nawaz. And Nawaz also out for duck. 2 opening batters, they're out for duck. So new batsman in is Yasin. Yasin will go in face next delivery from Nawaz. Nawaz is on fire. Picked up 2 wickets. Tall man. This time he lofted. It's an opportunity for the deep long on fielder, and he got the catch. 3rd wicket here for Nawaz. It's a dream start there from Nawaz. Picked up 3 valuable wickets and 3 ducks
we can see in the scoreboard it's a 3 ducks. Ramesh is out for duck, Nawaz is out for duck, now Yasin is also out for duck. Quite unusual scoreboard. We can see that 6 for the loss of 3 wicket. And the 3 wickets here for Nawaz. Outstanding bowling performance there from Nawaz. The dream start which is given by Lion Kings. He's on hat-trick. He's on hat-trick. Can he able to get the hat-trick? No. It's right behind the line of delivery, and he's just giving the direction down to third man region for a couple of runs here. With that couple of runs, scoreboard numbers on to 8 on the board. And the first over completed after completion of first over. Equal start for both the team, as was Warriors got 8 runs. At the same time, Lion Kings, they got 3 valuable wickets in that particular over. So 8 for the loss of 3 wicket. Oz Warriors not really out of the worries. They are the Warriors, so they need to play like a Warriors if they wanted to get some good score. Rupesh the second over of the power play is going to start. Rupesh again. Right arm over the wicket. First ball, batsman going for the swing. Missed it completely. Leg by called by umpire Arish Padil. With the addition of that leg by scoreboard Namuzan to 9 on the board for the loss of 3 wicket here in over number 2 in progress. So what a fantastic tournament progressing here. The day number 1 is almost a successful one, and a little bit late start in the morning, but I think because of the discipline which is shown by all the teams, they're maintaining their time sense, and they were able to complete the matches in a scheduled time. Outside the line of leg stump, going to be a wide, one more extra. With that extra scoreboard moves on to double figure 10 on the board. The discipline is so important, isn't it, in cricket? Without discipline, you cannot organize the tournament successfully. All that we required the discipline. As again, right arm over the wicket, nicely place it down to short mid wicket region. The fielder there in the short mid wicket run across his right to field the ball. Ample time for the batter to complete the single. Uneasy's individual score moves on to 3. And now Simak is only one player. He can takes his team to good one, and he's got a potential. He got a caliber, and needed some responsible innings from him. This time, chip that one, helicopter shot, but safely plays it down to deep long off region. Before the mid-off-fielder run back to fields that one, ample time again for Shamik to pick up a couple of runs. With that couple of runs, scoreboard numbers on to 13 on the board for the loss of 3 wicket. And half-hearted actually. He wanted to chip that one by playing a helicopter shot down to mid-wicket, but he just couldn't manage to take that right from the middle of the bat. Pulls that one. No, loose stroke up. Drops the catch. Can you believe this? This is certainly going to be a costly for Lion Kings. And that ball, the Simak tried to pull that one. This is a 1 wicket really what Lion Kings desperately wanted. But unfortunately, they missed out by the mid-on fielder. And now just look at that one. In those who are watching the live telecast of this cricket tournament, they're enjoying this scenario where the cricket is progressing in the middle, and outside the ground, a train which is passing. It's been can't get that kind of scenario anywhere than this cricket ground. The one side the train which is passing, and another side the vehicles which is passing in a highway. The fantastic view of this cricket ground. 15 on the board. Meanwhile, 2 overs which is complete.
One ball remaining. Last time in this over, Rupesh. Right over the wicket. Balls went for the full shot. Will it go into a big one? Yes, it does. It was a magnificent struck. Really, he played that one right from the middle of the bat. Fulls the ball, handsome looking full towards a deep backward square leg boundary for a huge 6. Just like I mentioned about, you need to pay the penalty for that drop catches. You can't give the chances for the batter like Shimak. He's just capitalizing that chance opportunity. And what a shot there from Simak, the final debut of the second over. Nothing much wrong with the run rate. Even they lost the 3 wickets, but look at the run rate what they maintained. 21, 10.5 runs per over. Even they lost 3 wickets. Madhu brought into attack. One more experienced capper. What a shot. Beautiful shot. That was a delightful stroke there from Simak in the against off the back foot. Square cutting that one down to deep backward point region for a single. With their single score, but moves on to 22 on the board. Traditional cricketing stroke in the occasion there from Simak. Madhu. Right arm over the wicket, balls going for the big swing of the bat, but misses that one completely. Ball hitting the stomach, and with that dotted delivery, score remains on 22 on the board. 22 for the loss of 3 wickets. Over number 3 in progress. Now Simak just walking towards the middle and have a separate word with his partner. Maybe he's telling that why you are taking that much of risk. We have got a good score in the board. We needed one partnership. This time full toss, and this time I think the fielder will go to take the catch down at square leg. Not really having enough bat onto that. Juicy full toss outside the line of leg stump. Instead of hitting the ball, he just tried to helping it down, and he just pays the penalty for that. Wicket number 4, which is back into pavilion of Hose Warriors. They are 21 for the loss of 22 for the loss of 3 wickets. Wickets are tumbling, but runs are coming. Altogether, it's an equal battle is on between these teams. Simak is back on the pavilion, but he did damage. 14 runs in just 8 balls. Simak, Anis and Naeem. The brothers out there in the middle. Again, the chance of run out in a non-strikers, and oh, direct it might be the curtain in the innings of Naeem, in fact. And of course, Anish not happy with his brother, which Simak is back into pavilion in that particular hour, but nothing much worried about. One more brother is came into middle. The two brothers out there in the middle. Again, hits that one down to square leg region. Full toss delivery. A fumble from that fielder. They're coming back for the second. Just grabbing the opportunity of that misfield by the fielder. With that couple of runs score, but moves on to 25 on the board. 25 for the loss of 4 wicket. One shot call by umpire. And one shot means it's a 24 now. 24. Anish swept that one straight to the hands of short fine leg. One more good over is completed. After completion of over number 4, it's a much better over from Madhu compared to last 2 overs. Even though that 2 overs are the wicket taking over, but expensive one. But here is Madhu bowled a very good over indeed. And just 3 runs which came from that over, and one big wicket. The wicket of Shimak is back into pavilion. It's a 25 on the board for the loss of 4 wicket. 24 little correction, that one shot. 24. The 24 on the board for the loss of 4 wicket. Now the run rate is exactly 8 runs per over after completion of 3 overs. Nawaz to continue. He got a good start in the first over, 8 runs, and picked up 3 valuable wickets.
Now is back on attack from the highway end. Naeem, Anish, the brothers out there in the middle. Lovely delivery to start with. The appeal for caught behind, half-hearted shout. And nothing will go into impact. Umpire Arish Padil is more than 26 years of experience. Even Ravi Uppala at square leg. The both are started in the same year. Their umpiring career. Both are completed to silver jubilee. Again, this time appeal for leg before wicket is given. Him is gone. One more wicket is back into pavilion. The batter is shuffled across the line of the delivery, and he just pays the penalty for that. What outstanding bowling performance here from Nawaz. He's picked up his 4th wicket. He picked up his 4th wicket, and golden opportunity for Nawaz to pick the piper. So far, I think there's no piper. No one able to pick 5 wickets. The golden opportunity out here for Nawaz to pick the 5 wickets. He picked up for 4 wickets. Vinod came into middle. This time again, lovely delivery, lovely lifting of delivery in the negation there from bowler Nawaz, using his height very well, and even the better batting performance here from the new batsman Vinod, just standing tall and just steering the ball down to backward gully region. In fact, picked up a single for that. With that single, scored Namuzan to 25 on the board for the loss of 5 wickets. Out of 5, this man is got 4. Nawaz, left arm balls, beautifully ball, appeal for leg before wicket, but umpire rightly said it's a bat inside edge of the bat, saving the batsman from the leg before wicket. But what a fantastic bowling performance here from Nawaz. Is one of the best weapon he's used so far in this tournament, in this particular match, that is the Yekkur line delivery. It's not so easy every time it's bowling the Yekkur. Again, nicely plays it down to third man region. The good one here from the batter. They picked up just a single for that very delightful steer down to third man region. And with that single scored Namuzan to 26 on the board. All in sudden we can see that little bit slow cricket is progressing here. Quite understandable the way the bowler is bowling that line and length. Very difficult for the batter to hit the big shot. So 4 overs completed. After completion of 4 overs, still it's a good score on the board for Oz Warriors. They're 26 on the board. One ball remaining in this overs. One ball remaining. Nawaz to bowl the last and final delivery of that over. 26 on the board. This time, this is what the lucky delivery I want to say, because already umpire called this over is completed, but the one delivery which is spared, as Nawaz picked up 5 wickets in this match, and congratulations, because it's a piper. It's just like the batsman scoring 100. It's equal to the 100 whenever the bowler is picking up the 5 wickets. Outstanding performance here from Nawaz. Picked up 5 valuable wickets. I want to see his bowling figure. 2 overs, no maiden, and I want to see how many runs is conceded. 8 runs in the first over and just 2 runs in the second over. That means 10 runs. 2 overs, no maiden, 10 runs and 5 wickets. Outstanding. 5 runs per over economy rate and 5 wickets. Just dismantling the batting department of their opposition. But still nothing much worried about the run rate what Ozorias, even they lost the wicket, but they got us runs in the board. 26. 2 overs to spare. Asif, number 18, number 11 in fact. Bowler
Usman is the bowler. Asif is the batter. He picked up a single. Little bit correction. New batsman Vinod picked up a single. Now Asif is back on strike. I will going to face first delivery of his second delivery of the bowler Usman. This time slashes, but straight to the hands of fielder. The Rakshat is not really moved at all where he was standing. The ball just coming straight to him, and he just completes the formalities of taking the catch. The wicket number 7 or 8. The wicket number 7 is back into pavilion at the score of 27 on the board. 27 for the loss of 7 wicket. Now, Oz Warriors looking in deep trouble because now tailenders have to bat in remaining deliveries of their innings. Usman picked up a wicket. Sadiq is the new batsman in. Sadiq Chirate, as famously known as Chirate, because every player has got a nickname, and you need to play like a Chirate if you wanted to get a good score. Wait and see. Sadiq, right arm over the wicket, chips that run, and chance of run out in the non-strikers, and he's gone. The Chirate is knowing for quick running, but here is not really run like a Chirate. So Sadiq runs very slowly, so he just pays the penalty for that. He's not really justifying his nickname, what he's got. But the bowler is justifying. I am most faster than the batter, and just pick the ball, returns the ball quickly to the non-strikers and stumps. The wicket number 8 is back into pavilion. The 27 for the loss of 8 wicket. The Mubarak is the new batsman in. Number 10 batsman in the middle. Now all eyes are in this man, Vinod. He's got a potential of accelerating the run rate. Usman. Right, over the wicket. Looks for the big shot. One more wicket is back into pavilion. The wickets are tumbling like a house of cards here. One more wicket is back into pavilion, and one more opportunity for the bowler to pick the hat-trick here. The back-to-back 2 wickets is 27 on the board for the loss of 27. The last batsman in. And John is a number 11 batter. They need to consume the remaining deliveries, isn't it? They got 2 deliveries in this over. Oh, wow, magnificent delivery. And even the hands-on doesn't really understand what kind of deliveries of how quick it's going to be. And it's a team hat-trick already in this over. There's a one break in the middle after getting 1 wicket, 1 run out in the middle. After there's 1 wicket and 1 more dotted delivery. What a fantastic spell here from Usman. Just a single run at 2 wickets. Altogether 3 wickets in that over. Usman final time this over. Firing from the far end. Oh, that was a typical tailender reaction there from the batter. The wicketkeeper fails to collect the ball. By call by umpire. 5th over is completed. After completion of over number 5, it's a 28 on the board for the loss of 9 wickets. The last over remaining. And can these 2 batters will go in to consume this last over? At least 3-4 runs in the last over. I think the much better for them. At least they will going to get fighting total 30 plus. But because in this condition it's almost 5 fast 25. In this condition, in any score 35 to 40 definitely is going to be a good score, to depend if they field well, bowl well. And first priority of these 2 batter to get that runs. Fulls that one nicely down to deep backward square leg region for an easy single. They doesn't want to take any risk because the last wicket's in the middle.
The 5 deliveries remaining. With that single score, now moves on to 29 on the board. Last 5 deliveries remaining. Winky. This time ball second nicely turns that one down to fine leg region. And clever thinking by the fielder. Let the ball goes into the declared area. Just a single. With that single score, now moves on to 30 on the board. For the loss of 9 wickets. A disaster, disappointment for Oz Warriors, because one stage they're cruising towards 50 plus runs, but wickets are tumbling. Wicket and outside run of off time too much, and the evening exercise here for Harish Padil, and one more extra wide signal. 31 on the board. Short pitch delivery, and just playing the tennis stroke forearm, and it's going to be out, and a disaster. Not required, isn't it? Not required. Still, it's 2 deliveries left in that over, but they're going for the second. Pays the penalty for that. The all out, and they bundle out. They just bundle out for 32 runs. 3 deliveries to spare. 32 runs they scored, but all wickets are bundled out. And that's only because of Nawaz. He's leading from the front, picking the piper. 5 wickets in his 2 overs. And then it's a good bowling performance from other bowlers. Usman, Venki, all are contributed for the dismissal of 10 wickets of their opposition. So low scoring game in the evening. 32 is the total score. 33 is going to be a target, and wait and see. The run rate is just over 4 runs per over is the required run rate for team Lion Kings to register their victory. Wait and see how Lion Kings will going to justify their name, Lions. And of course the bowlers did the job. They justified by the bowls like a lion, but now all up to the bowl batters of Lion Kings to bat sensibly. Just 33 to win this match, and we take a short break here in our commentary box, and after the short break our friend will going to take over the microphone in our national language, Hindi. It's over to Zakir. So now I request Nawaz to please come and collect your ball for picking up for 5 wickets, which is duly signed by the field umpires Harish Padil and Ravi Uppala. ದಯಮಾಡಿ ನವಾಜ್ ಅವರು ದಯಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಕಮೆಂಟ್ರಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಕಡೆ ಬರಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ಳದೆ. ದ 2 umpires, I request Ravi Uppala and Harish Padil, please present this ball to Nawaz for his 5 wickets. So big hand and a round of applause required for its outstanding performance. Nawaz is receiving the ball where he picked up 5 wickets. Outstanding performance. Congratulations, Nawaz, for your great performance. One of the best bowling figure in the day number 1. It's over to Zakir. Thank you. धन्यवाद सतीश जी, बेहतरीन तरीके से पहली पारी का आंखों देखा हाल सुनाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय जुबान पर। और बहरहाल मैच की ओर चलते हैं, जो इस पहले दिन का इस श्रृंखला का आखिरी मैच जो कि प्रकृति पर चलता हुआ लायन किंग्स बनाम होस वॉरियर्स के बीच है। 33 रन टारगेट। लायंस किंग ने पहले टॉस को जीतकर पहले क्षेत्र रोशन करने का यानी गेंदबाजी करने का फैसला किया था और पहली बल्लेबाजी करने के लिए हॉर्स वॉरियर्स को आमंत्रित किया था और उन्होंने कुल मिलाकर 32 रन जोड़े यानी 33 रन का लक्ष्य रखा है लायंस किंग के आगे। और इस समय देखना पड़ेगा इस लक्ष्य को पार करने में वो सफलता प्राप्त करते या नहीं। बहरहाल पहली ओवर लेकर अनिश
रक्षित और मधु आए हैं दोनों सलामी बल्लेबाजों के ऊपर, और नॉन स्ट्राइकर पर मधु तैनात और स्ट्राइकर पर रक्षित। पहली ओवर लेकर हनीश हाईवेन से पहली गेंद स्मार उठा दिया है, देखने पड़ा गेंद हवा में है, लेकिन एक टिप्पा खाने के बाद यासिन खड़बा जो क्षेत्र क्षमा पर तैनात है उन्होंने दौड़कर गेंद को गैदर किया और 2 रन से यहां पर संतोष होना पड़ेगा लायंस किंग के लिए। दो रनों के सिलसिला यहां पर शुरू हो चुका है। इस बार उल्टे बल्ले से खेलने का प्रयास किया था, लेकिन गेंद जो कि टिप्पा पड़ने के बाद सीमा रखी की जाती हुई गेंद अंपायर ने 2 रनों का इशारा देते हुए, और इन 2 रन साथ रन संख्या बढ़कर बन चुका है 4 रन, जबकि पहले ओवर की चलती पर इस समय मैदान के साइड पर रेलगाड़ी यहां पर जाती हुई काफी खूबसूरत नजारा, काफी कम ऐसे नजारे देखने पड़ेंगे दर्शकों को, क्योंकि मैदान के करीब ऐसे रेलगाड़ी गुजरती हुई, मेरे ख्याल से मालगाड़ी है, लेकिन बहरहाल इस समय अनिश एक बार फिर से तैयार उठाना चाहते थे, जोरदार अपील, लेकिन अंपायर पर कोई दबाव नहीं, नकार दिया पूरी तरीके से। आत्मविश्वास से भरा हुआ अपील था हनीश द्वारा, लेकिन डॉट गेंद साबित होते हुए उल्टे बल्ले खेलने का प्रयास किया था, प्रयास पर कामयाबी मिलती हुई, लेकिन टिप्पा पड़ने के बाद सीमा रेखा की ओर जाती हुई गेंद, अंपायर का इशारा 2 रनों का, और इन 2 रन साथ रन संख्या बढ़कर बन चुका है 6 रन, जबकि पहले ओवर की चलती पे बिना कोई नुकसान पर निर्णायकों ने 2 रनों का इशारा दिया था, और 2 रन ही यहां पर दर्ज किए जाएंगे। और यहां पर मैच जो कि चलता हुआ इस समय, इस पहले दिन का आखिरी मैच, जी हां, इस समय रवि उपला गेंद यहां पर मांगते हुए कमेंट्री बॉक्स से, और उनको दे दिया गया है दूसरी गेंद, और इस मैदान से काफी हद तक सूरज की किरणें बिल्कुल गायब हो चुकी हैं, और धीरे धीरे डूबता हुआ नजारा दिखते हुए अभी सभी दर्शकों को। और इस समय मैच जो कि इस पहले दिन का आखिरी मैच पर चलता हुआ, रक्षित सामना करते हुए अनिश की इस गेंद को स्पार उठा दिया है डीप स्क्वायर की दिशा पर, 2 टिप्पा खाने के बाद गेंद जो कि सीमा रखी गिर जाती हुई 4 रनों के लिए। काफी बेहतरीन शॉट फड़क लिया था, गेंद अनिश छोटी गेंद फेंकने वाले हैं, और एक पैर को आगे निकाल कर हल्के से बल्ले को ऑनसाइड की दिशा पर मोड़ दिया, और 4 रन यहां पर मिलता हो उनके लिए। बल्ले की फुल टॉस गेंद थी, हालांकि लो फुल टॉस गेंद थी, सही तरीके पे फायदा नहीं उठा पाए, लेकिन एक रन तो जरूर मिलेगा, और इस एक रन के साथ ओवर की मुकम्मल हो चुकी है। पहले ओवर के मुकम्मल के बाद रन संख्या बढ़कर बन चुका है 11 रन, जबकि बिना कोई नुकसान पर।
ಟ್ರೋಫಿ ನಾನು ನಾಳೆ ತರ್ತೇನೆ. ನನಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ಉಂಟು ಝೀರೋಗೆ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಝೀರೋ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಟ್ರೋಫಿ ಕೊಡಬೇಕು. बहरहाल दूसरी ओर फेंकने के लिए रमेश का गेंदबाजी के कार्य सौंपा है टीम की कप्तान और बाएं हाथ के बल्लेबाज रक्षित सामना करते हुए और उठाना चाहते थे. अच्छी गेंद थी ब्लॉक हॉल पर, सही तरीके पे बल्ले पे नहीं आई थी गेंद. डॉट गेंद साबित होते हुए रमेश के 33 रनों का लक्ष्य का पीछा करते हुए लायन किंग की टीम इस समय और इस समय काफी रफ्तार भरी गेंद थी, लेकिन लाइन से पटकते हुए रमेश लक्ष्य से काफी दूर. निर्णायक हरीश पटेल जी ने अपने हाथों को फैलाकर वाइड का इशारा देते हुए कमेंट्री बॉक्स पर और एक और अतिरिक्त रन खाते में जुड़ता हुआ. हाईवे से रमेश दौड़ते हुए पुल का छोटी गेंद थी, भरपूर फायदा उठाने में सफलता प्राप्त करते हुए और 4 रनों का इशारा देते हुए ठीक है, क्षमा चाहूंगा. आखिरी मौके पर निर्णायक ने अपने निर्णय बदलते हुए 2 रन का इशारा देते हुए और इन 2 रन 7 रन संख्या बढ़कर बन चुका है यहां पर 14 रन, जबकि दूसरी ओर की चालती पे इस बार फिर से छोटी गेंद को पुल किया है डिप स्क्वायर की दिशा पर, वही दिशा पर ड्राइव किया है, पुल किया है यहां पर रक्षित ने और एक और 2 रन दर्ज होता हुआ स्कोरबोर्ड पर. छोटी गेंद पर भरपूर फायदा उठाने में कामयाबी मिलती हुई रक्षित का. इस पे उठाना चाहते थे, पैरों पर लगी गेंद, रन की कोई गुंजाइश नहीं, वहां पर डॉट गेंद साबित होते हुए हाईवे से गेंदबाजी करते हुए रमेश और इस समय लक्ष्य पर थी गेंद, लाइन से भटकते हुए वहां पर रमेश लक्ष्य पर छोड़ती जाकर जाते हुए गेंद को वाइड का इशारा देते हुए निर्णायक यहां पर एक और अतिरिक्त रन खाते में जुड़ता हुआ. बहुत बड़ा लक्ष्य नहीं है, कम से कम अतिरिक्त रन इस बार फिर से छोटी गेंद थी, भरपूर फायदा उठाने में सफलता नहीं मिली, लेकिन आखिरकार 1 रन तो जरूर वो खाते में जुड़ता हुआ. रक्षित के खाते में भी 1 रन यहां पर जुड़ता हुआ और कुल मिलाकर इस 1 रन के साथ रन संख्या बढ़कर धीरे धीरे बन चुका है 18 रन. दूसरी ओर की छाती पर काफी बेहतरीन शुरुआत इन दोनों बल्लेबाजों के बीच. सिर्फ 15 रनों की दरकार है इस मैच को जीतने के लिए. लायंस किंग को पुल कर दिया है मधु, बेहतरीन शॉट वहां पर आखिरी मौके पर वहां पर गेंद को रोका गया है, लेकिन देखना पड़ेगा गेंद सीमा रेखा पार कर चुकी है नहीं, लेकिन मेरे ख्याल से 2 रन जरूर अपनी टीम के लिए बचाए हैं वहां पर विनोद ने, जो टीम लॉन्ग एक ही रन दौड़कर पूरे कर चुके हैं. हमें इसका मतलब है कम से कम 3 रन अपने टीम के लिए बचाए है विनोद ने, जो कि वहां पर तैनात है. दौड़कर गेंद को रोका आखिरी मौके पर और उससे पहले ये दोनों बल्लेबाज 1 रन दौड़कर पूरे कर चुके थे उससे पहले. उसी के साथ ओवर की मुकम्मल, लगातार दूसरी ओवर के मुकम्मल के बाद रन संख्या बढ़कर बन चुका है 19 रन, जबकि बिना कोई नुकसान पर अच्छी बेहतरीन शुरुआत यहां पर नाबाद दोनों बल्लेबाज इस समय क्रीज पर खेलते हुए 19 रनों की साझेदारी बन चुकी है सलामी बल्लेबाजों के बीच.
यासिन खरबा को गेंदबाजी की जिम्मेदारी सौंपा है टीम के कप्तान अनीश ने। क्या यासिन खरबा ब्रेक तो दिला पाएंगे अपने टीम के लिए? ये तो फिलहाल वक्त ही बताएगा। बहरहाल हाईवे से तैयार यासिन खरबा, वहां पर पुल कर दिया है मधु, गेंद जो के सीमा रखी गई जाती हुई देखना पड़ेगा। चौका यहां पर मिलता हुआ 4 रनों के लिए, और इन 4 रनों के साथ रन संख्या बढ़कर बन चुका है 23 रन। सिर्फ 10 रन दूर अपने जीत से लायंस किंग की टीम। अब बचे हुए 23 गेंदों पर 10 रनों की दरकार। आसानी के साथ जीत की ओर जाती हुई लायंस किंग की टीम। इस बार लॉन्ग ऑन की दिशा में ड्राइव किया है आसिफ, वहां पर तैनात। पहला झटका यहां पर गिरता हुआ मधु के रूप में। आखिरकार यासिन खरबा ने अपने पहले विकेट को प्राप्त करते हुए 23 रन की कुल योग पर। और इस समय नवाज कक्किंजे इनका आगमन होते हुए, क्या बेहतरीन गेंदबाजी की है अपने टीम के लिए। पहला 5 विकेट का पतन उन्होंने प्राप्त किया है आज। नवाज बिलाल बाएं हाथ के बल्लेबाज इस समय सामना करने के लिए तैयार यासिन खरबा को। पुल किया है और इसे 1 रन के साथ अपना खाता जो के खोलते हुए नवाज बिलाल, और इसे 1 रन के साथ रन संख्या बढ़कर बन चुका है 24 रन, जबकि तीसरी ओवर की चालती पर 1 विकेट का पतन हो चुका है मधु के रूप में। और इस समय रक्षित उल्टे बल्ले से खेलने का प्रयास, लेकिन टिप्पा पड़ने के बाद डिक्लाइज एयर झाड़ लेकर वापस आई है गेंद। देखना पड़ेगा वहां पर रन्स मिलेगा या नहीं। शायद रन नहीं मिलेगा, झाड़ लेकर वापस आया है गेंद, इस वजह से रन्स नहीं मिला है। डॉट गेंद साबित हुई। इस बार रफ्तार भरी गेंद थी, लेकिन लाइन से पटकते हुए यासिन और वाइड का इशारा यहां पर देते हुए निर्णायक एक और अतिरिक्त रन खाते में जुड़ता हुआ। उठा दिया है, काफी बेहतरीन, लाजवाब, उम्दा, खूबसूरत, जो चाहे कहिए इस शॉट को। और इस के साथ रन्स बढ़कर बन चुका है 31 रन यहां पर बन चुका है। अब सिर्फ 2 रन्स मात्र दूर है अपने जीत से। क्या बेहतरीन शॉट लगाया है रक्षित ने अपने बल्ले से यासिन खरबा को, और इस समय रक्षणात्मक रूप से गेंद को खेला है, हल्के से ढकल दिया है कवर की दिशा पर सिर्फ 1 रन के लिए। इस रन के साथ रन्स यहां पर बराबरी हो चुकी है, और इसी के साथ ओवर की मुकम्मल, स्कोर्स यहां पर बराबरी हो चुके हैं, यानी स्कोर्स आर लेवल। इस समय 1 मात्र रन दूर अपने जीत से, बचे हुए 18 गेंदों पर। बॉलर मुबारक खरबा इस बार उठा दिया है, काफी लंबा, काफी बेहतरीन शॉट। इस समय काफी बेहतरीन अंदाज के साथ इस मैच को अंजाम देते हुए रक्षित
और इस मैच को जीतकर मेरे ख्याल से 2 अंक प्राप्त किया है। काफी महत्वपूर्ण 2 अंक है लायंस के लिए, क्योंकि पिछला मैच वो हार चुके थे और इस समय उनका सख्त जरूरत है 2 अंकों की, और इस समय लीड जो कि बरकरार रहने के लिए इस श्रृंखला में। और इसी के साथ आज का इस दिन का सभी मैचें मुकम्मल हो चुकी है और मैन ऑफ द मैच पुरस्कार जाता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो गेंदबाजी से काफी जो कि मैदान जो कि होश हुआ, इसके बल्लेबाजों को तिरछा उड़ाया था, जो है गेंदबाज नवाज। यहां पर आइए, अपना मैन ऑफ द मैच पुरस्कार आपके लिए यासिन। यासिन जी, नवाज को मैन ऑफ द मैच पुरस्कार भेंट करिए प्लीज। नवाज प्लीज कमेटी बॉक्स पर संपर्क करें, अपना मैन ऑफ द मैच पुरस्कार प्राप्त कीजिए। यासिन जी मैन ऑफ द मैच पुरस्कार भेंट करते हुए नवाज के लिए, क्या बेहतरीन गेंदबाजी का प्रदर्शन दिया है अपने टीम के लिए। और सभी दर्शकों को एक बात बताना चाहता हूं कि कल यानी 18 तारीख इतवार के दिन दूसरे दिन का पहला मैच खेला जाएगा। टीम यक्कुर बाबा बनाम मैदान फ्रेंड्स के बीच। इन दोनों कप्तानों से गुजारिश करता हूं कि सुबह ठीक 8:30 बजे आपकी मैच शुरू होगी, कृपया उससे पहले 8 बजे यहां पर सभी खिलाड़ियों को यहां पर बुलाया जाए प्लीज। और इसी के साथ इस दिन का मैच जो कि खत्म हो चुका है, और इसी के साथ मैं जाकिर और आपको सभी से अलविदा लेता हूं। और मेरे साथी स्कोरर, जो मेरे साथी दोस्त जाकिर इजवेल और यासिन भाई और मेरे साथी कमेंटेटर, मैं उनको धन्यवाद देता हूं, सतीश। और इसी के साथ सभी दर्शकों का भी धन्यवाद देता हूं। गुड इवनिंग।
அது அவன் அடிச்சதுக்கு ஹோஸ் வரல ரெக்கார்டு இங்கே வரணும் ஃபர்ஸ்ட் டைம் இன் Yekkur history